BS Falcons Pandar ಹಾಗೂ ಕುದ್ರೋಳಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ BS Falcons Pandar and ಕುದ್ರೋಳಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ to please report to the stage immediately for toss procedure. So Kudrali young boys, after won the toss, they elected to field first against BS Falcons Pandar.
And the match starts with the shot. Well, I request all the players of Kudroli Young Boys and BS Falcons Bandar to please start the match immediately. The match of 6 overs to be played, 6 overs per side to be played. Players, please note. And I request all the players once again to please start the match immediately. Thank you. Thank you. So good morning cricket lovers and welcome to the second day of Yuvaratna Trophy 2023 which is proudly organized by Team Fortune Mangalore. The first match of the second day is now going to start between Kudroli Young Boys versus FS Falcons Bandar, and in this match Kudroli Young Boys, after won the toss, they elected to field first, and because of that their fielders are now spreading out on the field. The openers for BS Falcons are Mubba and Taslim are the openers at the crease. In fact, the match starts now, and the bowler brought into the attack from the commentator box, and so 6 overs per side to be played, 6 overs match, and we are just waiting for the first ball of the match. 2 overs of power play, and first over of the power play is now going to start in their innings.
So 8 matches to be played on today. One match pending of yesterday, and this is the first match is now going to start. And after this match, the second match will be played between Friends Thalapadi versus Team Metrics. After that, the third match, MSC Chumbugute will take over Marigudi Friends, and the last match of the first round of today will be played between Friends Kuttar versus NFC Urva. One more good match is now coming up. The match number 4 of the day. Friends Kuttar will take over NFC Urva, and now just we are waiting for the first ball of the match. The first ball of the rings is now coming up. पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. इम्तियाज the bowler is now brought into the attack, और बाएं हाथ के बल्लेबाज तस्लील इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. तो बिल्कुल प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है. सुबह के 9:15 यहाँ पर बज चुके हैं, और बेद्रा मीडिया द्वारा एक बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट इस वक्त शुरू हो चुका है, और इंतजार है अब आज के इस पहले गेंद का. दर्शक कुछ ज़्यादा इस मैदान पर दिखाई नहीं देते, लेकिन हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा दर्शकों की संख्या में भी यहाँ पर वृद्धि होती जाएगी. बिल्कुल प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है, और इस बढ़ते वक्त के साथ साथ धूप की तीव्रता भी यहाँ पर बढ़ती दिखाई देते हुए. और जहाँ तक सवाल है, अंपायर ने अपनी घड़ी देखी, 9:15 यहाँ पर बज चुके हैं, और उनकी पारी की पहली गेंद लेकर तैयार. 30 मिनट दिए गए हैं निर्धारित 6 ओवर पूर्ण करने में, और ओवर की पहली गेंद ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया. मिड विकेट पर गेंद पहुंची, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था कोई रन न प्राप्त नहीं करने का, तो 0 पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है. और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया. गेंद पहुंची शॉर्ट मिड विकेट पर, 1 रन मिलेगा, और 1 रन के साथ BS फॉल्कॉन्स का खाता यहाँ पर खुल चुका है. इट्स 1 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर फॉर BS फॉल्कॉन्स. और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इम्तियाज, और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए मुब्बा, और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर चलती हुई. दाहिने हाथों पर द विकेट इम्तियाज की ओर की अगली गेंद दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए. ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को पुश कर दिया. बैकफुट पर आने के बाद जस्ट वेटिंग टू द बॉल टू कम आउट. इज बैट एट द लास्ट वन, ट्राई दैट वन, गेटिंग बैट एंड लेग क्लोज टुगेदर डाउन टू एक्स्ट्रा कवर, एंड ही गेट्स एन सिग्नल फॉर दैट स्ट्रोक. और इस 1 रन के साथ 2 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है बिना किसी नुकसान के. जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर, और गेंदबाज की ओर की अगली गेंद दाहिने हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहता, बल्ले का भीतरी किनारे शॉर्ट फाइनल की दिशा में गेंद पहुंची. सीधा थ्रो पहुंचा इस वक्त, लेकिन वहां पर निशाना चूकता हुआ और गेंद को बैकअप किया जाता, जब तक स्लिम डाउन पर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन न प्राप्त करने का. 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 3 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. एक बेहतर लेग दौरान के साथ इम्तियाज इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, और अपनी अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया. गेंदबाज की दाईं ओर से मिड ऑन पर गेंद पहुंची, तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े, और 1 रन यशस्वीतम यहाँ पर पूर्ण करते हुए 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 4 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. निस्संदेह जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है BS फॉल्कॉन्स के लिए, तो एक बेहतर शुरुआत की उन्हें सख्त जरूरत है. ये गेंद इस बार खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला, एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा की ओर गेंद बढ़ती हुई, और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए. और second just rocked to the back foot and punched it away through the offside, and he finds the gap very well from the bat of Tasleel, and with that boundary the scoreboard moving up to 8 without loss after the completion of first over. A pretty good start for BS Falcons after being losing the toss and put it to bat by Kutrodi Young Boys in the match number 1 of the day. They made a pretty good start. In fact, 8 runs they managed to score after completion of first over. तो 6 ओवर प्रति पारी खेले जाएंगे, 6 ओवर्स पर साइड टू बी प्ले, और दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ. कुछ हद तक बातचीत करने के बाद हमसे दूर वाले छोर से, यानी साई शक्ति एंड की ओर से इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, और फील्डर धीरे धीरे मैदान पर छाते हुए दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ. और कुल मिलाकर गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए साई शक्ति एंड की ओर से, और अभिषेक का गेंदबाजी जो कि इस वक्त शुरू करते हुए, जबकि सामना करने के लिए दाहिने हाथ के बल्लेबाज
मुबारिश और पहली गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहता है स्टंप्स को कवर करने के बाद और ठीक तरह से गेंद को बल्ले पर नहीं ले पाए और गेंद पैरों पर टकराकर वहीं पर गिर गई। रन से स्पीड बल्लेबाज को नहीं मिला। 8 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है। दूसरा ओवर प्रारंभ हो चुका है और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए सेकेंड ओवर इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। तो फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाईं हाथ राउंड द विकेट ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर एक बेहतर शुरुआत देने की कोशिश करते हुए इस वक्त बल्लेबाज दोनों सलामी बल्लेबाज BS फॉल्कॉन्स के अगली गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया नॉट क्वाइट मिडली गेट एट द लास्ट मोमेंट और गेंद लगभग जमीन के सहारे आई थी बैक टू द बॉलर की दिशा में पहुंची जहां पर गेंद को स्वयं गेंदबाज ने फील्ड कर लिया और इस बीच बल्लेबाज को रन यहां पर नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 9 रन बिना किसी नुकसान के। अगली गेंद स्वीप किया इस वक्त टॉप एज लेकिन गेंद इनफील्ड क्लियर करते हुए पहुंच चुकी है बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। तो 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 2 अंकों पर 11 रन बिना किसी नुकसान के। जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर इस बार खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में और गेंद इस वक्त सीमा रेखा के अंदर जब तक रोक ली जाए बल्लेबाज के पास इस वक्त मौका था तीसरा रन प्राप्त करने का। खूबसूरती के साथ गेंद को इस वक्त स्कूप किया था और आखिरकार 3 रन बल्लेबाज प्राप्त करते हुए बेहतर स्ट्रोक बल्लेबाज के बल्ले से लगता हुआ इन 3 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 14 रन बिना किसी नुकसान के। और उनकी पारी का दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर और अपने अगली गेंद लेकर गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए अभिषेक और बाएं हाथ के बल्लेबाज तस्लील इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। पावर प्ले अभी भी जारी और कुल मिलाकर 3 खिलाड़ी डिस्कस के दायरे के बाहर इस वक्त तैनात बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये गेंद इस बार खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला इनटू द गैप एज वेल ही गेट्स एटलीस्ट सिंगल फॉर दैट इनफैक्ट दे लुकिंग फॉर द सेकंड लेकिन दूसरा रन यहां पर नहीं मिलेगा और आखिरकार दोनों बल्लेबाज 1 रन के साथ संतुष्ट हो चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 15 रनों पर। जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर निस्संदेह लगभग बेहतर शुरुआत ये दोनों बल्लेबाज अब तक दे चुके हैं और देखना यह है कि इस सफलता के सिलसिले को वो आने वाले कितने ओवर में बरकरार रख पाते हैं। ये गेंद इस बार उछाला मिड ऑफ पर मिसफील्ड और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। गेंद तक पहुंच गए थे लेकिन अंतिम क्षण में थोड़ा सा मिस जजमेंट और गेंद उनके हाथों को बीट करती हुई इस वक्त निकल गई। देखिए किस तरीके से हुआ था लुक एट दिस इन द रिप्ले और गेंद फील्डर के बाईं ओर से होती हुई सीधा लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। तो इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 19 रन 2 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुका है। 2 overs completed 19 runs on the board and still in overall calculation it's going to be 4 overs remaining in the innings. And just talking about the next match, friends, Talapadi will take over team metrics in the next match, and because of that I request all the players of these 2 teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. और इस वक्त 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं। पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर धीरे धीरे इस वक्त मैदान पर छाते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। दाहिने हाथ के गेंदबाज कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से 06 नंबर की जर्सी पहने हुए इम्तियाज अपना दूसरा ओवर प्रारंभ करते हुए और पहले ओवर में उन्होंने 8 रन प्रदान किए थे और अपना दूसरा ओवर लेकर इस वक्त तैयार। फील्डर से इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज तस्लीर के लिए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग इस वक्त मौजूद ठीक सीमा रेखा के पास डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ डीप एक्स्ट्रा कवर इस वक्त तैनात और इस बीच गेंदबाज इम्तियाज गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए तस्लील के लिए 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद इस श्रृंखला के इस टूर्नामेंट के नियमानुसार और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट ये गेंद रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला इनटू द गैप एज वेल ही गेट्स इन अ सिंगल फॉर दैट इनफैक्ट दे लुकिंग फॉर द सेकंड एंड दे कम बैक फॉर द सेकंड रन परफेक्टली प्लेड विद अ ट्विस्टेड बैट एट द लास्ट मोमेंट ही हैज गॉट अ कपल रन फॉर दैट स्ट्रोक और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 21 रनों पर बिना किसी नुकसान के 21 विदाउट लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर इनफैक्ट। और फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर
गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट एब्सोल्युटली परफेक्ट दिस टाइम एंड ही फाइंड्स द गैप एज वेल ही गॉट अ बाउंड्री फॉर दैट और गेंद को रिवर्स शॉट के जरिए इस वक्त खेला था ऐसा कहना पड़ेगा पोजीशन एक्सक्विजिट और गेंद को इस वक्त खेला था देखिए किस तरीके से यहाँ पर खेला था मॉनिटर पर दिखाया जा रहा है डीप बैक थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद थे लेकिन काफी तेज रफ्तार के साथ गेंद की दाईं ओर से निकली डीप बैक थर्ड मैन सीमा रेखा के सीढ़ियों पर टकराते हुए 4 रन जुड़ते हुए 25 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के और यहाँ तक का सवाल है बीएस फॉल्कॉन्स का तो एक बेहतर प्रगति हो करता हुआ इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहता गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा टकराने के बाद फाइनल की दिशा में निकल चुके नजदीकी मामला हो सकता है लेकिन इससे पहले कि थ्रो पहुंचे बल्लेबाज के पास समय था कि 2 रनों के साथ वो अपने छोड़ में वापस आ सके और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 27 रनों पर तीसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस इट्स 27 विदाउट लॉस और फिर से एक बार गेंदबाज की गेंद इस बार चिप किया इनफील्ड डिक्लेयर करते हुए लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद और इस बार फील्डर ने कोई गलती नहीं की तो लॉन्ग ऑफ पर इस कैच को लपक लिया गया तो इसी के साथ तस्लील की पारी समाप्त हो चुकी है और 27 रनों की आरंभिक साझेदारी के बाद यह साझेदारी यहां पर टूट चुकी है और पहला विकेट खो चुका है यहां पर बीएस फॉल्कॉन 27 रनों के ऊपर इट्स 27 for 1 2.4 overs gone in their innings and still 3.2 overs have to come. Safan, the number 3 batsman, is now coming out to the middle for BS Falcons. और जहाँ तक BS Falcon का सवाल है टॉस हारने के बाद कुदरोली यंग बॉयज के खिलाफ पहले बल्लेबाजी पर उतराता हुआ एक 27 रन जोड़ चुका है एक बेहतर शुरुआत दोनों आरंभिक बल्लेबाज दे चुके हैं हालांकि पिछले गेंद पर विकेट जरूर गिर चुका तस्लील का लेकिन 27 रन आरंभिक साझेदारी निभाने के बाद तस्लील आउट होकर पेविलियन वापस लौट चुके हैं सफान नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर मौजूद सामना करने के लिए तैयार इम्तियाज की ओवर की अगली गेंद का तो फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर चलते हुए और गेंदबाज इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद अच्छी गेंद थी अंदर की ओर आते हुए गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट इस वक्त ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ कवर पॉइंट पर जब तक गेंद फील्ड हो 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है 28 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 1 विकेट के नुकसान पर 28 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस गुड गोइंग ऑन हियर फॉर बीएस फॉल्कॉन्स एक्सेप्ट दे लॉस्ट देयर 1 विकेट और इस ओवर में अंतिम बार ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा कलाई के साथ स्टंप्स को कवर करने के बाद डीप मिड विकेट पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका 3 ओवर की समाप्ति 29 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट with a run rate of exactly 9.67 runs scored by BS Falcons. Good going on here for them, except they lost their 1 wicket. They managed to score 29 runs on the board for losing 1 wicket. 3 ओवर का खेल पूर्ण हो चुका 3 ओवर का खेल बाकी है और देखते हैं इन बचे हुए 3 ओवर में उनके पारी में क्या क्या होता है और इससे पहले कि चौथा ओवर प्रारंभ हो माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आज पहली बार मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश को आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए आइए सतीश धन्यवाद थैंक यू Thank you, Mr. Gopi. Good morning, everyone, and welcome back for the day number 2 of this prestigious Yuvaratna Trophy 2023 Season 2, which is proudly organized by Team Fortune. And first match of the day number 2, BS Falcon Bandar versus Kudroli Young Boys. After winning the toss, captain of Kudroli Young Boys elected to field first, so that it's a very good start, terrific start here for BS Falcon Bandars. They got 29 valuable runs, they're scoring the run rate at exactly 9.33 runs per over by losing only 1 wicket. First ball, right arm over the wicket bowls and batsman quite right behind the line of the delivery off the back foot and place it down to deep long on region for an easy single. With the single score Namuzan to 30 on the board for the loss of 1 wicket here in over number 3 in progress. Batsman Tasleil as well as this time, what a fantastic piece of fielding there by the fielder. Outstanding, terrific piece of fielding. Even when he is diving, he is not really bothered about that dog which is very near to him, and because of his effort, even dog is got afraid, and it's an outstanding piece of fielding there by the fielder at short mid wicket. Absolutely good stop. But batsman anyhow completed a single for that outside the run of off time, going for the drive, missing it completely. But umpire Mohan Iyadi not missing the opportunity to signal the wide, and with that wide score Namuzan to 32
2 on the board for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. Again, outside the run of leg stump, it's going to be a one more dotted delivery. It's really going to be a good over compared to the last 2 overs bowled by the bowlers. And Taslim is the man is back into pavilion. The Barish is on strike now. This time nicely swept that one down to deep backward square leg. And before that, fielder run in front and collects the ball. Ample time for the batter to collect the single. With that single, score was under 33 for the loss of 1 wicket in the over number 4 in progress. Again, balls again outside the line of black stump. Very within the reach of the batter, isn't it? Ball almost coming around the legs of the batter. And the batter tried to flick that one off his legs. Missed it completely. Then wicketkeeper behind the stump did the rest back to bowler. Sahal. Right arm over the wicket. Balls big wide. Absolutely big wide. And this time it's going to be the Spectra White with the Texas scoreboard numbers on 34 for the loss of 1 wicket. Very bright and sunny morning out here in the most beautiful UCT cricket ground. And you're watching this prestigious cricket tournament in the name of Yuvaratna Trophy. And again, absolutely indisciplined bowling performance here from Sahal continues. After getting a very good start from the ball, he's not really given an opportunity for the batter to give any kind of big stroke. But the problem here is that he's bowling wide deliveries. 35 for the loss of 1 wicket. Sahal. Right arm over the wicket balls. Going for the blind stroke. Safwan missing it completely. Then wicketkeeper little bit fumble, but no question of any run. Good over actually. It's a very good over. Just 6 runs came from that over. He bowled 2 wide deliveries. 3 wide deliveries, but still he managed to contain the runs from the bat of the batters. 4 completed. It's 35 for the loss of 1 wicket. Fifth over going to start from the commentary box end. 6 over match, and it's going to be a 4th over and half of the innings which is completed, and a very good score on the board. The bowler has been introduced from the commentary box end. Zabir will going to bowl right arm over the wicket to the right-hander batter Mubarish. Mubarish so far is playing very good innings for his team, scoring some valuable runs. He's batting on 14 with the help of 1 boundary and facing the first delivery of the over number 4. Zabir balls. Went for the sweep shot, half-hearted shot for leg before wicket. At the same time, ball is just got inside edge of the bat, and while trying to sweep the ball, and the ball is just hitting his bottom of the bat, and wicketkeeper behind the stump collects the ball, but meantime batter able to complete the single. 36 for the loss of 1 wicket in the over number 4 is in progress. Zabir balls. Batsman drives that one, tried to put some extra power in that stroke, but by doing that he missed timing the ball. Ball went towards the deep long on position with that single. Score numbers on to 37 for the loss of 1 wicket in the over number 5 in progress. So both the batters of course playing very well as per the condition required. Right arm over the wicket balls. This time tries that one happily, but quite safely down to deep long on the fielder. Then the deep long on there. There's going to be a chance of run out, but throw which is not up to the mark. The fielder which is little bit wide, almost in a wideish long on region. The batsman hits the ball almost in a straight version, straight deep long on region, before the fielder from the wideish long on to collect the ball towards a straight long on. Ample time for the batter to complete the couple of runs. 39 for the loss of 1 wicket. Zabir balls across the line, swings that one. Mubarish is really connecting the ball very well. Almost he drags the ball from outside the line of off time, but he's very confident by hitting that stroke across the line, swinging that one. They picked up a single. 40 for the loss of 1 wicket in the over number 5 in progress. Safwan is on strike. Zabir balls. Safwan drives. Ooh, that might be the opportunity for that short mid wicket fielder, but this ball is running down to deep mid wicket boundary for 4 runs. It's not a deep mid wicket, it is a wideish long on in fact. The fielder in the short mid on, a little bit they got opportunity to take the catch, but it's a very hard chance, and the ball is hit pretty hard by the batter.
Safwan. And the ball went like a tracer bullet. Even the whitish long on fielder couldn't manage to stop that boundary. And after a long time, the boundary which is coming up for Bandar. One more Falcon Bandar looking in a good position now. 44 for the loss of 1 wicket. One more over completed after completion of over number 5. And it's a 44 for the loss of 1 wicket. Bandar Falcon against Kudroli boys. And wait and see how well these two batters will go to get some runs in the last and final over. For the latecomer, you're watching the match number first of the day, number 2 of this prestigious cricket tournament, Yuvaratna Trophy 2023, which is proudly organized by Team Fortune under the great and loving memory and sweet memory of power star late Punit Rajkumar. Yesterday, it's the tournament which is inaugurated early in the morning with some dignitaries like Umesh Kotian and Ganesh Kulal, the corporator. At the same time, Rohan Montero, the witnessing for this cricket tournament. And here is a last over going to start from the far end, from the Sai Shakti end. He will go into ball last over of their innings. So, outstanding job from the organizer Kiran, Naveen, Sai Kishore, all the 3 fielders of this cricket tournament done a great job for the success of this cricket tournament. One more delivery, which is ball is in the air for the while. Batsman looking for the on drive, got a top edge, and but ball landed safely, and there is a possibility of a single there. 45 for the loss of 1 wicket. Safwan back on strike, and bowler Abhishek. This time he lofted. It's a mighty one. It's a maximum and a huge one. Safwan is a tremendous striker of the ball, isn't it? The way that hit the ball, it's been outstanding. One can hear the instrumental sound from the bat of Safwan. The 50 comes up for Bandar Falcon. Again he repeats. This is a little bit not that much of higher on the little bit in the flatter version, and ball just traveling out of the park. It's a consecutive 2 sixes coming from the blade of Safwan. What a fantastic striking here from Safwan. Absolutely terrific piece of explosive batting. Back-to-back 2 sixes. Will it going to be a second hat-trick 6 of this tournament? Already Rashid Baba yesterday hits the 3 sixes in a row, and here is a Safwan. He's got opportunity. This time he did it. He did it. He did it in a style. Hat-trick 6s there from Safwan. Just breaking the record, and of course not the breaking the record, equaling the record. In fact, 3 consecutive 6s. Now he got an opportunity to break the record. If he able to get 1 more 6, he will go to break the record of Rashid Baba of Zaman Boys Kalladka. Score climbed into 63 for the loss of 1 wicket. This time ball is in there, opportunity of catch there, and Safwan's entertainment innings comes to an end. He's got some entertainment with some enterprising cricketing stroke in the last over, hitting 3 massive 6s in a row, and try to hit the 1 more. Is back into pavilion. Outstanding batting display there from Safwan. 63 for the loss of 2 wicket. New batsman in is Shahrukh, is a left-hand batter. The bowler has been punished quite badly. Abhishek. The last delivery of their innings of Falcon Bandar. Right arm. Balls. It's going to be a wide. Going for the quick single. And 1 + 1, 2. The wides, and with that 2 extra runs scoreboard moves on to 65 for the loss of 2 wicket. The last ball remaining of their innings. The batsman Mubarish will going to take the strike. Drives that one right in the gap towards the wideish long on. They can come back for the second, and they really makes that a couple of runs quite easily. In the end,
2 runs in the final delivery of their innings. 67 total score of Bandar Falcons, and they set a target of 68 to win this match. It's a huge total, and constructed by the batters of Bandar Falcons, and it's going to be a huge one, the monumental runs they wanted to chase here. And wait and see how well Kudroli boys will going to get this. Kudroli young boys, of course, they got some good batting department, but chasing a 67 in a 6 overs is always going to be a big ask, but not impossible. And for that, some explosive, destructive batting which is required for Kudroli young boys to win this match. Meanwhile, the next match will be played between Friends Talapadi versus Team Matrix, so that I request all the players of both the teams, kindly request you to complete the formalities of signatures as soon as possible, and please get ready for the next match. Friends Talapadi versus Team Matrix going to be a next match. So, good morning for everyone, those who are watching live telecast of this cricket tournament through Bedra Media. Of course, every time Bedra Media having some innovative thinking. Now we can watch the highlights of meetings of PS Falcon Bandar, and one of the best things we can see that Yuvaratna, the owner of Bedra Media, having some good thinking, innovative thinking. And let's fight with just like in international cricket, after the innings, there is opportunity for the cricket lovers to watch the highlights of the innings of Bandar Falcons in front of you. Thank you very much. Way to go, high scoring game, and so far in the yesterday's match, all the matches won by fielding first team, the chasing team won the match. But here is a big question raising: will it go into the possibility of Kudroli boys to win this match against PS Falcons? We'll take a short break. After short break, my friend Mr. Gopi will go to take over the microphone in our national language, Hindi. It's over to Gopi. Welcome, Gopi. धन्यवाद सतीश। तो इस वक्त 68 रनों का लक्ष्य है कुदरोली यंग बॉयज के सामने, और जहां तक सवाल है इस वक्त उनकी पारी का, तो उनकी पारी की शुरुआत यहां पर होती हुई पहले गेंद लेकर तैयार दाइना तो बढ़ता विकेट नेक्स्ट पर आती हुई गेंद, और इस गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर स्विंग करना चाहता है, चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में रन्स बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर गेंदबाजी शुरू कर चुके हैं नौची, और वो इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद बॉल्ड आउट, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, मच स्ट्रेट लाइन, एक्स्ट्रा क्विक वन, ही जस्ट गॉट द रीड ऑफ द बैट्समैन, और इसी के साथ पहला विकेट यहां पर गिर चुका है।
बाएं हाथ के बल्लेबाज देखिए गेंद को ऑनसाइड पर उछलना चाहते थे, लेकिन गेंद काफी तेज रफ्तार के साथ सीधी लाइन के साथ आई और बल्लेबाज को वंचित करते हुए सीधे मिड ऑफ स्टंप पर जा टकराए और इसी के साथ ये पहला विकेट गिर चुका है 0 पर। इट्स नॉट फॉर 1 इन द फर्स्ट ओवर फॉर कुद्रोली यंग बॉयज। और जहां तक 68 रनों के विशाल से लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, बीएस फॉल्कॉन्स बंदर ने जो लक्ष्य इस वक्त तय किया है उस लक्ष्य तक अगर पहुंचना है तो कुद्रोली यंग बॉयज के बल्लेबाजों को यहाँ पर विस्फोटक बल्लेबाजी यहाँ पर करनी होगी, एक्सप्लोसिव बैटिंग जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। और यहाँ पर 0 पर पहला विकेट खो जाने के बाद कुछ हद तक दबाव इस वक्त उनके ऊपर दिखाई देता, वरना बल्लेबाज का आगमन हो चुका है इस वक्त और विजय आउट होकर पेविलियन वापस लौट चुके हैं। नए बल्लेबाज इस वक्त मैदान पर उतर चुके हैं और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार नौची की गेंदों का। तो नौची एक विकेट पिछले गेंद पर प्राप्त करने के बाद यहाँ पर अपनी अगली गेंद लेकर तैयार था। इन्हें हाथों पर विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद पहुंची शॉर्ट मिड विकेट पर तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े और 1 रन के साथ अपना छोर यहाँ पर बदल चुके और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 1 रनों पर। ऐसा कहना पड़ेगा, रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर फिर से एक बार गेंदबाज नौची गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए स्ट्राइक इस वक्त मुजम्मिल के पास और इस बीच ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेला, शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद पहुंची जहाँ पर गेंद को फील्ड कर लिया गया, रन से नहीं मिलेगा। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ नौची इस वक्त गेंदबाजी करते हुए फलस्वरूप बल्लेबाजों के लिए समस्याएं इस वक्त खड़ी होती हुई और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, मिसिंग 2 for Sadio Stumpf, in fact a wide declared by umpire and a single run added to the total in the face of extras और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 2 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि उनकी पारी का पहला ओवर यहाँ पर प्रगति पर। दाहिने हाथों पर विकेट ये गेंद इस बार ऑन साइड पर खूबसूरती के साथ गेंद को उछाला है, मिड विकेट पर फीडर गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे और गेंद उनके सिर के ऊपर से होती हुई सीधे डीप मिड विकेट सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। बेहतर स्ट्रोक इस वक्त गेंद को देखिए किस तरीके से पुल किया था, इस वक्त डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद थे लेकिन आखिरकार गेंद तक पहुंचने में सफल और चौका इस वक्त जुड़ता हुआ बल्लेबाज के खाते में और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 6 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 6 for the loss of 1 wicket in the over number first in progress। नौची अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, ये गेंद बेहतर गेंद थी, परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद, अपील इस वक्त जारी है लेकिन यहाँ पर अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं और जहां तक इस बार आउट घोषित करते हैं स्वयं बल्लेबाज इस वक्त जाते हुए पेविलियन की ओर यहाँ पर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हैं और सारे खिलाड़ियों ने बीएस फॉल्कॉन्स का उनका अभिवादन किया स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाने के लिए और इसी के साथ ये दूसरा विकेट यहाँ पर गिर चुका है 6 रनों के ऊपर। 6 for the loss of 2 wickets। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड, 6 for the loss of 2 wicket and 62 more runs now they have to score for victory in remaining 5 overs and the required run rate is now gone up to exactly 12.40 runs per over। तो पहला मैच आज का इस मेगा श्रृंखला के अंतर्गत यहाँ पर खेला जाता है फ्रेंड्स तलपाड़ी और टीम मैट्रिक्स के बीच अगला मैच यहाँ पर खेला जाएगा। तो इसलिए मैं दरख्वास्त निवेदन रिक्वेस्ट करता हूँ इन दोनों टीमों के सदस्यों से एक बार फिर से कि कृपया स्टेज पर संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर साइन दर्ज करने के लिए। नए बल्लेबाज इस वक्त मैदान पर उतरते हुए आवेज जो कि इस वक्त क्रीज पर मौजूद है, जबकि मुजम्मिल तो मुजम्मिल इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में और आवेज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार गेंदबाज की ओवर की पहले गेंद का और गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर चलते हुए और 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर इस वक्त तैनात और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए शाहरुख दाहिने हाथों पर था विकेट। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, गेंद को इस वक्त खेलना चाहता चूंकि गेंद उनके हाथों पर टकराने के बाद जब तक दोबारा खुद उनके ही हाथों से फील्ड हो बल्लेबाज के बाद रन इस बीच नहीं मिला। 6 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है 2 विकेट के नुकसान पर।
जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर 6 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद गेंदबाज शाहरुख का गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार चिप किया इनफील्ड क्लियर करते हुए, लेकिन क्लियर नहीं कर पाए और एक्स्ट्रा कवर पर इस कैच को लपक लिया गया। Not quite get that one right from the middle of the bat in the last moment और 20 गज के दायरे के कुछ बाहर जाते हुए इस कैच को इस वक्त फील्डर ने रपका और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है। कुदरोली यंग बॉयज की स्थिति इस वक्त काफी नाजुक सी दिखाई देती हुई 6 रनों पर अपने 3 चोटी के बल्लेबाजों को खो चुका है, जबकि उनकी पारी का दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर और एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर जारी रखते हुए गेंदबाज बीएस फॉल्कॉन्स के। युवरत्ना ट्रॉफी 2023 जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया टीम फॉर्च्यून मैंगलोर ने और इस श्रृंखला का दूसरे दिन का पहला मैच यहाँ पर प्रगति पर बीएस फॉल्कॉन्स बंदर और कुदरोली यंग बॉयज के बीच में। इस मैच के बाद फ्रेंड्स तलपाड़ी का मुकाबला होगा टीम मैट्रिक्स के साथ और यहाँ पर एक बार फिर से मैं निवेदन करता हूँ सर्व सदस्यों से दोनों टीमों के कि कृपया स्टेज पर संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर साइन दर्ज करने के लिए। और इस बीच गेंदबाज अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद पहुंची, रन्स बल्लेबाज को नहीं मिलेंगे। 6 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है, 6 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। This is the second over in progress. Good piece of bowling performance continuing here from BS Falcons. ये गेंद इस बार एक बार फिर से मिड विकेट फील्डर के हाथों में, रन से नहीं मिलेगा, खाली क्षेत्र ढूंढने में सफल और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 6 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर, 6 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस शाहरुख गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए लेग स्टंप से बाहर और वाइड के इस रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 7 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी एक लंबा सफर तय करना बाकी कुदरोली यंग बॉयज को। और शाहरुख की गेंद उछाला इनफील्ड के लिए क्लियर करते हुए डीप मिड विकेट सीमा रेखा की ओर गेंद जा चुकी है 4 रनों के लिए और गेंद को उछाला था इस वक्त मिड विकेट इनफील्ड क्लियर करते हुए इस वक्त खूबसूरती के साथ और चौका इस वक्त प्राप्त करते हुए बल्लेबाज। और अब ऐसा कहना पड़ेगा सिर्फ चौके या छक्के ही इस मैच में कुदरोली यंग बॉयज को वापस ला सकते हैं और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर। अभिषेक के बल्ले से चौका लग चुका है, अपनी अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। बेहतर गेंद थी इस वक्त, अपील कुछ हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, लेग बाई का इशारा और लेग बाई के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है। 2 overs completed and after 2 overs Kudroli young boys, the batsmen of Kudroli young boys still searching for the right track. They managed to score only 12 runs on the board for losing 3 wicket. 68 the target for them. 56 more runs now they have to score for victory in remaining 4 overs in fact, and the required run rate is now gone up to exactly 14 now per over for Kudroli young boys. और ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त BS Falcons looking right on top. कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज नौची अपना दूसरा ओवर दाहिने हाथ ओवर द विकेट ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छाते हुए और फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए नौची अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ओवर की पहली गेंद। ये गेंद रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला इस वक्त बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में गेंद जाती हुई काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद अपने पैर के जरिए जब तक गेंद को रोकते सीमा रेखा के अंदर फील्डर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने के। जस्ट प्ले दैट वन विद अ ट्विस्टेड बैट एट द लास्ट मोमेंट एंड गेट्स अ कपल रन फॉर दैट स्ट्रोक और इन 2 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 14 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर इन फैक्ट। गेंदबाज की ओर की अगली गेंद, ये गेंद उछालना चाहा, पैरों पर टकराई, बैक लेग पर प्लम इन फ्रंट घोषित और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। बल्लेबाज ने गेंद को उछालना चाहा था, गेंद लाइन पर टिप्पा खाई, उनके बैक लेग पर टकराई और अंपायर रोलैंड पिंटो को कोई दिक्कत ही महसूस नहीं हुई यहां पर उन्हें आउट घोषित करने में। एक और विकेट गिर चुका है, विकेट नंबर 4। दे आर लुकिंग डीप इन ट्रबल नाउ। 14 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स।
नौशीर इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए अब तक सफल साबित हो चुके हैं और अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। नए बल्लेबाज का आगमन यहाँ पर हो चुका है और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। नौशीर की गेंदों का दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला इस वक्त बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल और एक रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 15 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस और 53 रन और चाहिए विजय के लिए। 53 मोर रन्स नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा। 16 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। दिस इज द थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स और गेंदबाज अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद लेग से बाहर, अंतिम क्षण में गेंद पर बल्ला अड़ाया और गेंद को सीमा रेखा से बाहर भेजने में सफल। डीप फाइन लेग पर 4 रनों के लिए। अगर छोड़ते तो शायद वाइड हो सकता था, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद पर अपना बल्ला अड़ाते हुए गेंद किस वक्त खेल दिया डीप फाइन लेग से बाहर 4 रनों के लिए। 20 रन 4 विकेट के नुकसान पर। ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಲಪಾಡಿ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಈ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. और इस बीच गेंदबाज नौशीर गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद स्वीप किया इस वक्त। फ्लाइटेड गेंद थी फ्रंट फुट पर जाने के बाद डीप स्क्वायर की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 21 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 21 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस. Still they have a long way to go and 47 more runs now they have to score for victory. और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई, वाइड का इशारा और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि उनकी पारी का तीसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर। फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर और इससे पहले की गेंद को फील्ड करके फील्डर थ्रो करे, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 3 ओवर के समाप्ति 23 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। 23 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट स्कोर्ड बाय Kudroli young boys after completion of 3 overs and 45 more runs. Now they have to score for victory in remaining 3 overs. And the required run rate is now gone up to exactly 15 runs per over. 45 रन बनाने बचे हुए 3 ओवर में, कठिन सा लक्ष्य और देखना है कि Kudroli young boys इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। और इससे पहले कि चौथा ओवर प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर अब अंग्रेजी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सतीश को। आइए सतीश, धन्यवाद, थैंक यू। Thank you very much, Gopi. Meanwhile, I request friends Talapadi as well as the team matrix, all the players to complete their signatures and please get ready for the tossing ceremony for the next match. 23 for the loss of 4 wickets. Still long way to go for Kudroli young boys because they need to climb the mountain of runs and this time outside the run of half time, wicketkeeper behind the stump just asking umpire, the squad umpire for the stump out, but umpire seeing the batsman's back leg is which is safe and so that is not really asking for a third umpire even, and rightly so the batsman is safe here. 23 for the loss of 4 wicket in the over number 4 is in progress. Ansar bowling from the far end, right arm over the wicket, bowls to Zabir shuffled across the line after they're going for the big swing of the bat. Little bit comedy of error in the irrigation there from short mid wicket fielder. He's charging into the ball, but ball is doing something against the fielder and just testing the technique of the fielder by little bit going against his moving body and against his moving body and in a different way, so that bowler fielder missed that completely from the hand. Again, one more delivery batsman going for the big swing of the bat, but didn't got enough bat onto that. The ball is in there for a while, but not really able to
the fielder in the short wine leg region to reach there, but he reached there, but after one or two bounce he collected that one. Meantime, batsman completed a single. 25 for the loss of 4 wicket here in over number 4 is in progress. Catch it is a call. Absolutely, it's going to be a bite. There's no chance at all for the catch it. There's no contact with the bat, and straight away umpire Mohan Ayadi just given warning for the bowler as he was coming right in front of umpire. That is a protected zone. And 26 for the loss of 4 wicket, and over number 4 is in progress. 68 is the target. Another 42 more runs required for the victory. This time going for the big swing of the bat. Again, didn't got enough bat onto that. Forcing the ball, but not getting the timing behind the shot. Just a single for the batter. With that single score was on to 27 for the loss of 4 wicket. Ali friends Telapadi ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ As 4 overs completed, it's 27 for the loss of 4 wicket, and 4 overs which is completed. 2 overs remaining in their innings. Two overs remaining in the innings of Kudroli young boys. They're chasing a big total of 68 to win this match. Very bright and sunny morning today, and in this sunny morning we are having some good matches today. The day number 2 of this prestigious cricket tournament, local pools, and tomorrow the decider day, the final day of this cricket tournament, and we are going to witness some fantastic matches from Manglore pools. Right arm over the wicket, and first ball outside enough off time. Straight away umpire Roland Pinto coming towards now. Ball is inside the line, sir. Inside the line. It's inside the line. Eleven balls remaining, 41 runs required for the victory. Right arm over the wicket, balls. This time, oh no, opportunity of catch there, but wicket behind the stump, quickly realizing that's very difficult to reach the catch. And the ball which is got outside the top edge of the bat. And again, the batter really trying hard to get a big shot, but the bowlers of BS Falcons Bandar not providing the opportunity. Again, oh, that was a wonderful walk. That was a wonderful walk behind the stump by the wicketkeeper, behind the stump. It's not so easy job when the ball passing between the legs of the batter. The wicketkeeper need to be very, very accurate enough to get his 2 hands behind the ball. And done a great job by wicketkeeper behind the stump. One more wicket is back into pavilion. It's a 41, a little correction which is required for the victory, but the total score of the team is 27 for the loss of 5 wickets. Shabir
Right over the wicket, ball of Spectra hits that one very firmly down to deep long off region. Protection has been given in the deep so that the batsman have to settle for the single. With that single, scoreboard was under 28 for the loss of 5 wicket. Another 30 more runs required for the victory. It's definitely going to be a very impossible target in front of the team Kudroli Young Boys. Right arm over the wicket. Balls again going to be a wide. One more extra. With that extra, scoreboard was under 29 for the loss of 5 wickets. It's coming back to that word impossible. I don't want to take back my word because seeing some records of international cricket, even 37 and 42 runs which is scored in the 1 hour, so that the opportunity is still remaining for Kudroli Young Boys to win this match. 29, and that means another 39 more runs required for the victory. Going for the reverse sweep. Missed it completely, and wicketkeeper did the rest. One more wicket is back into pavilion. Last over remaining in the innings. 29 for the loss of 6 wicket. 5 gone. 1 over remaining, and wait and see. In the last over, it's a run required exactly 39. 6 ball, 39 required. If you see in statistics of this 6 over 36. It looks like impossible, even the 6 ball, 6 sixes. But after hitting a 6 sixes, if the bowler ball 1 no ball, then fielding batting team can get that total of 39. We are talking about Ruturaj Gaikwad, one really create the history of hitting 42 runs in an over. 1-6 for the no ball, 7 sixes in an over. The first ball, appeal for leg before wicket, chance of run out in the non-striker's end, but with the fielder missing the stumps and batsman going for the leg by. One more run to the total, 30 on the board. 28 required, 38 required. 5 balls remaining. Just the formalities left in this game. Outside the run off time, going for the drive, they're going for the single, chance of run out, and again by call by umpire. 4 balls, 37 runs required for the victory. It's a huge victory for BS Falcons Bandar. Definitely that will going to give a lot of confidence for the team when they're going to play their second match. The victory like this, the big victory like this. But bowler, I don't know why he is bowling the wide balls, because he's depending a huge run. So we need to complete the formalities. For the next match, Team Matrix captain won the toss and they elected to field first against Friends Talapadi. And it's going to be a very good match. Two teams absolutely they got well balanced. And seeing these two teams looks like it's going to be the good match in front of the spectators out here in the UCG cricket ground. 33 for the loss of 6 wicket. 3 balls remaining. Now last 2 balls remaining in their innings. And Kudroli Young Boys need to see the mistakes what they did. Especially there is no mistake because one over the batsman really dominated. The Safan of BS Falcon is hitting 3 massive sixes. They are the things which is really changing the complexion of the match. If it is scored around 45 to 50, it was chaseable. Once the batsman hitting a 3-6 in an over, then very difficult for the chasing team. And again he's bowling a wide. I don't know why. He's bowling wasting the time. And the 34 for the loss of 6 wicket. Organizer is in a very tense. Why the bowler is not bowling a fair deliveries? Oh my goodness. One more wide. It's a 35 for the loss of 6 wicket. Shabir is struggling to get his line and length. Oh my goodness. One more wide. .36 for the loss of 6 wicket. And I'm sure that Shabir will not going to get the over for the next match. The way he's bowling here. Answer little correction. Answer will not going to get the over for the next match. Even seeing that he's bowling so many wide deliveries. 36 for the loss of 6 wicket. That's it. Comprehensive victory
for BS Falcons defeating their neighboring team, Kudroli Young Boys, with a margin of 31 runs, and they are through to the next round of this cricket tournament. And congratulations for the winner, and hard luck, Kudroli Young Boys. Better luck for the next time. And we'll take a short break here, and after the short break, Friends Salapadi will go to take Team Matrix in their the first match between these two second match of the day number 2. And now it's the time to announce the man of the match. The man of the match goes to, it's undoubtedly one who hitting hat-trick sixes, massive 3 sixes. Looks like it's a Safwan is a one. He scored hat-trick sixes and scored 25 runs. Now it's a time for the viewers. The viewers, those who are watching a live telecast of this cricket tournament in the Bedra Media, they will going to get the highlights of the innings of Kudroli Young Boys. We will not get any big shots here, but you will get some wickets falling in this particular highlights. Thank you. Boys captain, please come here to collect your memento for the representation. Now it's the time for the presentation of the man of the match, and one of the organizers, Naveen, presenting his man of the match award to Mr. Safwan for his explosive batting performance. Absolutely, he hitting the hat-trick sixes, and one of the best batting history there from Safwan, hitting a 3 sixes and scored 28 valuable runs, and he won the man of the match award. I request Kudroli Young Boys captain, Kudroli Young Boys captain, please come here and collect your memento as well as a flower pot for your representation for this cricket tournament. Thank you very much for representation for the season 2 of the Yuvaratna Trophy 2023. It is proudly organized by Team Fortune, Lemade Kudroli Young Boys ನಾಯಕ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಭೂದಾನಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಕರಾದ ನವೀನ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಯವಿಟ್ಟು captain collecting the memento and for the representation ಭೂದಾನಿಯೊಂದಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಇವರು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Congratulations. Thank you very much for your cooperation for the success of this cricket tournament. Now it's a time for a change in community box as well. It's over to Gopi for the further explanation of the match in our national language. Thank you.
धन्यवाद सतीश। तो दूसरा मैच यहाँ पर शुरू होता है और टीम मैट्रिक्स और फ्रेंड्स तलपाड़े के बीच में। टीम मैट्रिक्स ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय जो कि उन्होंने लिया है, फलस्वरूप फ्रेंड्स तलपाड़ी के दोनों आरंभिक बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद और तस्लीम इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए। जहाँ तक तस्लीम का सवाल है, काफी अनुभवी गेंदबाज अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार बैकफुट पर गए, गेंद को खेलना चाहा, नॉट क्वाइट मिडल गेट एट द लास्ट मोमेंट, गेंद पहुंची बैक टू द बॉलर की दिशा में और रन्स बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। बेहतरीन गेंदबाजी का एक्शन तस्लीम का और एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए तैयार। अपनी ओर की अगली गेंद दाहिने हाथों पर द विकेट, हमसे दूर वाले छोर से यानी साई शक्ति एंड की ओर से इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार स्ट्राइट इनटू द हैंड्स ऑफ मिड ऑफ फील्डर एंड दैट इज द विकेट नंबर 1। नौशाद ने गेंद को उछाला था जरूर, लेकिन प्लेसमेंट गलत था और मिड ऑफ पर जो फील्डर खड़े हुए थे गेंद सीधे उनके हाथों में पहुंचे। हमें लिखो दिस इन द रीप्ले, किस तरीके से देखिए गेंद को उछाला था और गेंद सीधे पहुंची मिड ऑफ फील्डर के हाथों में और इसी के साथ पहला विकेट यहां पर गिर चुका है नौशाद के रूप में। 0 पर पहला विकेट खो चुका है फ्रेंड्स तलपाड़ी। नॉन स्ट्राइक रेट पर दूसरे आरंभिक बल्लेबाज के तौर पर जाबिर इस वक्त मौजूद और इस वक्त इंतजार है नंबर 3 बल्लेबाज का। सुबह का वक्त, काफी प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है, 10:15 यहाँ पर बचते हुए और धूप धीरे धीरे अपनी तीव्रता को यहाँ पर बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ बढ़ाता हुआ भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी यहाँ पर करते हुए और इस भीषण गर्मी तले यहाँ पर मुकाबला शुरू हो चुका है और तस्लीम गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए नए बल्लेबाज का आगमन यहाँ पर होता हुआ स्ट्राइकर एंड पर वो अपना कदम बढ़ाते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। ओवर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए और केवल 2 मात्र खिलाड़ी 20 गज के दायरे के बाहर तैनात, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन और तस्लीम अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद और अपनी अगली गेंद लेकर तस्लीम गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार ड्राइव किया लेकिन नॉट क्वाइट मिड विकेट एट द लास्ट मोमेंट, ही हैज गॉट अ सिंगल फॉर दैट और इससे पहले कि कवर पॉइंट पर थोड़ा सा दौड़ लगाते हुए पीछे की ओर जाकर जब तक गेंद को फील्ड करे फील्डर बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का और इस 1 रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि पहला ओवर उनके पारी का यहाँ पर प्रगति पर और तस्लीम गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए जाबिर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, तस्लीम की गेंद जाबिर के लिए अंदर की ओर आती हुई गेंद जगह बनाकर गेंद को खेलना चाहा, थोड़ी सी मिस फील्ड वहां पर लेकिन बल्लेबाज को रन नहीं मिलेगा। हालांकि 2 कदम आगे जरूर बढ़ाए थे बल्लेबाज ने लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को खींच लिया। देखा कि दोबारा अपने दूसरे प्रयत्न में गेंद को फील्ड की जा चुकी है, वहां पर सिरे मिड ऑफ पर रन बल्लेबाज को नहीं मिला। 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर अपनी अगली गेंद लेकर तस्लीम इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद एक्स्ट्रा क्विकर थी, ऑफ स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रही थी, गेंद का पीछा करना चाहा, जस्ट वांटेड टू फॉलो दैट वन एट द लास्ट मोमेंट बाय द बैट्समैन, लेकिन गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए, बीट हो गए और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और एक बेहतरीन ओवर इस वक्त प्रगति पर तस्लीम द्वारा। अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, शॉट थर्ड मैन पर रन के लिए दौड़ पड़े लेकिन निशाना यहाँ पर ठीक तरह से कलेक्ट नहीं कर पाया विकेट कीपर और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। अगर निशाना स्टंप्सों पर टकराता या फिर विकेट कीपर गेंद को ठीक तरह से गैदर कर लेते तो निस्संदेह यहाँ पर खतरा पैदा हो सकता था बल्लेबाज के लिए, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद विकेट कीपर के हाथों से छूटती हुई और इस बीच बल्लेबाज इस गेंद पर बच चुके हैं। 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर फ्रेंड्स तलपाड़ी एक धीमी शुरुआत यहाँ पर कर चुका है। स्लो स्टार्ट फॉर फ्रेंड्स तलपाड़ी आफ्टर बीइंग लूजिंग द टॉस एंड पुट टू बैट बाय टीम मैट्रिक्स इन द डे नंबर 2 ऑफ मैच नंबर 2 ऑफ द डे नंबर 2 ऑफ Yuvaratna Trophy 2023 which proudly organized by Team Fortune Mangalore. They made a mixed start, slower start in fact और कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से दूसरा ओवर
शुरू होता हुआ निजाम इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। और 7 खिलाड़ी अभी भी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात पावर प्ले के अंतर्गत। ओवर की पहली गेंद दाहिना हाथ ओवर द विकेट, रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल। और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 3 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 3 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर इन फैक्ट। और बल्लेबाज श्रवण इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं, निजाम की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। निजाम दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद अच्छी गेंद, एक्स्ट्रा क्विकर मत स्ट्राइटर, गेंद को उछालना चाहता, चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए टीम मैट्रिक्स की गेंदबाज अपनी क्षमता अपनी एबिलिटी के अनुसार इस वक्त तो गेंदबाजी करते हुए और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, एक और डॉट गेंद और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है सिर्फ 3 रनों पर, जबकि उनकी पारी का दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर। और निस्संदेह ऐसा कहना पड़ेगा बल्लेबाज फ्रेंड्स तलपाड़ी के इस वक्त सही राह को तलाशते हुए, जस्ट सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक। अगली गेंद, यह गेंद ड्राइव किया, गेंद पहुंची लॉन्ग ऑफ की दिशा में, लेकिन नॉट मोर देन अ सिंगल। और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 4 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर, जस्ट सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस, इट्स 4 for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. अगली गेंद, ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, not quite indicated at the last moment, गेंद पहुंची वाइडिश लॉन्ग ऑन पर, not more than a single। और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 5 for the loss of 1 wicket। रन्स अभी भी सिंगल्स पे बनते हुए और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज निजाम गेंदबाजी करते हुए ड्राइव करना चाहा, बल्ले का भीतरी किनारा पैरों पर गेंद टकराए, स्लिप पॉइंट क्षेत्र पर गेंद पहुंची, जहां पर गेंद को फील्ड कर ले गया स्वयं गेंदबाज द्वारा। एक और सफल ओवर की समाप्ति। पहले ओवर में 2 रन बने, जबकि दूसरे ओवर में 3 रन बने और 1 विकेट खोने के बाद द फ्रेंड्स तलपाड़ी 2 ओवर के बाद 5 रन जोड़ चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। एक धीमी प्रगति यहाँ पर करता हुआ। 5 रन स्कोर्ड बाय फ्रेंड्स तलपाड़ी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 overs for losing 1 wicket। Slower progressing here for them। And still in overall calculation it's going to be 4 overs remaining in their innings। 4 ओवर का खेल अभी भी बाकी उनकी पारी में। और गेंदबाजी के लिए इस वक्त गेंदबाज उतरते हुए फील्डिंग में जमावट यहाँ पर करते हुए 27 नंबर की जर्सी पहने हुए गेंदबाज इस वक्त फील्डिंग में जमावट करते हुए 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध यहाँ पर हट चुके हैं। पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर धीरे धीरे छाते हुए। कुल मिलाकर काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र अक्षर हमें यहाँ पर दिखाई देता है। लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट, डीप बैकवर्ड स्क्वायर मौजूद, लॉन्ग ऑफ डीप कवर पॉइंट इस वक्त तैनात। और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर पहली गेंद लेकर गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए तस्लीम अपनी दूसरी ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए। कुल मिलाकर 5 ओवर का खेल अभी भी बाकी उनकी पारी में और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेला, शॉर्ट स्क्वायर लेग पर एक बार फिर से जगह नहीं बना पाए और खाली क्षेत्र ढूंढने में भी असफल और उसको स्कोर इस वक्त रुक चुका है 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर यहाँ पर शुरू हो चुका है। ऐसा कहना पड़ेगा फ्रेंड्स तलपाड़ी के बल्लेबाज अभी भी अपनी सही राह को तलाशते हुए, जस्ट सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए। ये गेंद बेहतर गेंद थी, गेंद स्टंप्सों पर टकरा चुकी है और इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है। इस बार गेंद को खेलना चाहता लेकिन अंतिम क्षण में गेंद उनके बल्ले और पैर को चीरती हुई सीधे लेग स्टंप पर जाकर टकराई। देखिए किस तरीके से हुआ था, बेल्ट से डिस्टर्ब हुए थे और इसी के साथ दूसरा विकेट यहाँ पर गिर चुका है। और ऐसा कहना पड़ेगा फ्रेंड्स तलपाड़ी इस वक्त काफी संकट की स्थिति में नजर आता। वो अपने 2 चोटी के बल्लेबाजों को हो चुका सिर्फ 5 रन बनाने में और कुल मिलाकर उनकी पारी का तीसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर। जस्ट अ थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस, 5 runs they managed to score only on the board for losing 2 top orders wicket। They are looking in trouble फ्रेंड्स तलपाड़ी
और नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। इरशाद नए बल्लेबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद गेंदबाज अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। तस्लीम एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। नए बल्लेबाज इरशाद इस वक्त सामना करते हुए। रिवर्स शॉट इस वक्त खेला गेंद को, नॉट क्वाइट मिड विकेट द लास्ट मोमेंट, लेकिन एक रन उन्हें जरूर मिला और एक रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 6 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 6 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है, इस वक्त फ्रेंड्स तलपाड़ी को चाहिए एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप, एक बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर होने के लिए। और फिर से एक बार गेंदबाज अपनी गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए। तस्लीम दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद। इस बार गेंद को उछाला, शॉट स्क्वायर लेग पर, थोड़ा सा मिस जजमेंट और गेंद इस वक्त जब तक स्क्वायर लेग पर फील्ड हो, बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का। गेंद टिप्पा खाने के बाद स्पिन होती हुई घुमाव लेती हुई और इस घुमाव को शॉट स्क्वायर लेग के फील्डर समझ नहीं पाए और गेंद की दाईं ओर से निकलती हुई इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का। 7 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज तस्लीम इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए। ये गेंद ऑन साइड पर स्विंग करना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। तो बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहाँ पर जारी रखते हुए गेंदबाज टीम मैट्रिक्स के फलस्वरूप इस वक्त रनों के लिए कड़ा संघर्ष करते हुए इस वक्त बल्लेबाज फ्रेंड्स तलपाड़ी के। और तस्लीम इस ओवर में अंतिम बार तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला, लेकिन डीप बैक पर थर्ड मैन पर रक्षण प्रोटेक्शन मौजूद है और इस बीच सिर्फ और सिर्फ एक रन उनको मिलेंगे और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका। 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 overs completed. Still the batsmen of Friends Talapadi are now searching for the right track. They managed to score only 8 runs to the board after completion of 3 overs for losing 2 wicket. और देखते हैं बचे हुए 3 ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। तो चौथा ओवर इससे पहले के शुरू हो, माइक्रोफोन पर अब मैं अंग्रेजी में आमंत्रित करना चाहूँगा सतीश को आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। So thank you very much, Gopi, and what a slow start here for team Talapadi and against Friends Talapadi against the team Matrix. Disciplined bowling performance, especially that Taslim has been looking very outstanding in his 2 overs. 2 overs, no made and 5 runs and picked up 2 valuable wickets. And then Nizam bowls 1 more good over. So altogether, it's a disciplined bowling performance continues here from team Matrix against Friends Talapadi. From the commentary box, and it looks like going to be a bowling change. No bowling change. Nizam to continue. First ball outside and off time. Wicketkeeper behind the stump. Missed it completely. Frustration for the bowler, and rightly so, because that ball is definitely going to be a dotted delivery if the wicketkeeper able to collect the ball neatly. And one more single is added total in the form of extra. 9 for the loss of 2 wicket in the over number 4 is in progress. Team Friends Talapadi is really searching for the right track, struggling in the middle. Right up over the wicket is batsman going for the drive, expansive drive on the offside region, but not getting that kind of timing which is looking for. And Naushad is the man. He picked up a single. 10 for the loss of 2 wicket. It's a hard fought 10 runs in over number 4 is in progress. Right arm over the wicket. This time, lovely shot, driven, but protection has been given in the deep backward point region, so that batsman have to settle for the single. Nice looking reverse stroke, but very good placement, field placement by the captain of Team Matrix, seeing that Ishad can be the very effective in the
reverse stroke, and that's why they kept one fielder in the deep backward point region, so that he has to settle for the single. 11 for the loss of 2 wicket in the over number 4 is in progress. Right arm is a bounce. This time helicopter shot, and helicopter shot which is not really getting that enough timing and the placement right. Once it looks like a fielder is really misjudging that one. He's not really standing in the boundary line. Just a couple of yards inside the boundary. Just look at that one. Looks like once he's struggling to get the catch, but at last he managed to keep the eye on the ball till the last moment. And wicket number 3 which is back into pavilion. It's 11 for the loss of 3 wicket. Sometime in tennis ball cricket, underarm cricket, it's very hard to get the distance when you're playing a wristy stroke, helicopter shot. But you can get the distance when you're playing a season ball cricket, the cricket ball we are talking about. And you can get the distance, especially the one, the first which is invited, that helicopter shot. It's Mohammad Azharuddin, one of the very risky player, one who got ability of playing even a ball outside the line of off stump. Is very risky. Is converting that ball into the mid wicket and square leg quite easily. And of course now they're talking that Mahendra Singh Dhoni one was invented helicopter shot, but I want to say is Mohammad Azharuddin. Mohammad Azharuddin is one of the best risky player, one who got invented that helicopter shot, risky walk. And one more single. It's a 12 for the loss of 3 wicket, and over number 4 is in progress. The not two actually, 3 days back he celebrated his birthday, Mohammad Azharuddin, his 60th birthday. One of the class player, very classical player, risky player. You won't get anybody as strong risky as Mohammad Azharuddin has got. Right, Mohammad wicket bounce this time, nicely driven down to deep backward square leg region for 4 runs. Magnificently struck. Nothing wrong with the line of the delivery. That stroke will go into frustrate the bowler, isn't it? When the ball is coming into the bat very sharply, the batsman plays that very across the line of the delivery, swings it down to deep backward square leg for 4 runs. So with that boundary score jumps into 16 now for the loss of 3 wicket. Over number 4 which is completed. (16) for the loss of 3 wicket in the over number 4 which is completed. Now run rate is coming exactly 4 runs per over. The 16 for the loss of 3 wicket. A change in bowling. Mustafa brought into attack, keeping one fielder a deep long off. The one fielder in the deep long on, and Oidish long on in fact, and deep cow point, deep mid wicket, deep backward square leg. Short mid wicket, short fine leg, short third man, backward point. Long, huge this gap in the offside region. Again the batsman drags that one from outside the line of half time to pick the single down to short mid wicket. With their singles covered moves on to 17 for the loss of 3 wicket in the over number 4 is in progress. Altogether very slow cricket is progressing here. The over number 5 is in progress, and so far in this particular tournament, the first team, the batting second team lost the match. That is first match of the day, number 2. Driven that one down to deep long off region. But all the matches yesterday, the batting second team won the match, and today the first match batting first team won the batting yes, first team which is on the match. That's only because of the Safwan of BS Falcon hitting that massive 3 sixes in an over and getting a huge total. This time straight to the hands of fielder, chance of run out in the non-striker's end, but throw which is not really up to the mark. Instead of hitting the stumps, hitting the ground pretty hard, and it's not so easy when you are trying to get the ball. At the same time you need to see the stumps in on action, you need to release the ball. It's not so easy for the fielder.
The only good fielder can do that job. 19 for the loss of 3 wicket. Over number 5 is in progress. Mustafa bowling with the short run up. Pass umpire Sriraj. Balls beautifully bowled, angling round the wicket, so that is a good line to ball. When the ball pitching on the middle stump and going away from the right batter, and Irshad completely missed out delivery, and dotted delivery comes up. So Talapadi has got some good players from Kasaragod district, but unfortunately couldn't manage to perform, especially the Zabir. A lot of expectation from Zabir. Is a very good striker of the ball. This time he lofted that one down to deep long on one bounce collected by the fielder in the deep, and the batsman have to settle for a single for that. With that single, score numbers on to 20 for the loss of 3 wicket. So far only single boundary, and coming here the bat of the batter Irshad. Otherwise, a disappointment performance which continues. Devi Kiran is on strike. Mustafa the bowler outside line of off stump, and going to be a one more dotted delivery, and leg by call by umpire, led the correction. And with that leg by, score numbers on to 21 for the loss of 3 wicket. 5 gone. 21 for the loss of 3 wicket. Last over remaining in the innings. Not a huge total. We can see here from Talapadi. Because just seeing the nature of the ball which is used for this particular tournament, the Dunlop ball which is used for this tournament, it's pretty hard in the nature, and it's very difficult for the survival for the bowlers. But in this particular match, team matrix bowlers once again saying that you can restrict the opposition if you bowl well, good line and length. Taslim is the one bowled magnificently. The 2 overs starts with this outstanding bowler. Whenever is in action, always the kind of player who wanted to give 100%. Ajay is the new bowler been introduced by the captain of Team Matrix. Devi Kiran got a well-built personality. Wait and see how well you're going to use that personality to get some big shot in the last and final over. They didn't got enough runs on the board. Need to get some good score. Mid wicket is there. Deep long on is there. Long off is there. Deep cow point is there. Altogether 5 fielders in the onside region and 4 in the off. Ajay bowling with a short run up. Right arm over the wicket past umpire Mohan Ayadi. The first ball, lofted at one, just like I mentioned about, he's got a well-built personality, just muscles that one down to deep mid-wicket boundary for a 6. Almost the ball is in the midline leg stump, and batsman hitting the ball right from the middle of the bat, and ball travels down to deep wide-ish mid-wicket boundary for 6. Just like I mentioned earlier, the ball which is used for this tournament pretty hard in the nature. You can't depend a small total in this particular tournament. At least a 40 plus runs which is badly required. Now 5 balls remaining, and will Devi Kiran going to get another 2-3 big shots in this over. Ajay under pressure after that boundary out of that 6. The one more fielder is added to mid-wicket region. The one fielder from the deep cow point region coming inside the ring. One more protection has been given. The 4 fielders in the deep in the onside region, seeing the stroke of Devi Kiran. Ajay right arm over the wicket. Just like I mentioned, the bowler is under pressure. Whenever the batter hitting a 6, it's not so easy for the bowler to handle the pressure. The result of the pressure is that wide ball. 7 runs came in just 1 ball. 28 for the loss of 3 wickets. Ajay balls to Devi. Devi this time again going for the big swing of the bat. Luckily that ball has got a little bit bat the last moment. Otherwise that ball definitely going to hit the midland leg stump of the batter. One more single is added to total. With that single, score was under 29 for the loss of 3 wicket. Now Irshad back on strike. So far is a one who batted very confidently so far.
Ishad facing Ajay. This time wide outside and off stamp. Second wide of this over. And with that wide, scoreboard moves on to 30 for the loss of 3 wicket. Ajay. Right arm over the wicket bounce. This time tries that one straight down the ground, down to deep long on region. Protection is there in the deep, so batsman have to settle for the single. That is a good line to bowl when you're bowling the last over. If the line of a mid-land off stamp is so good to restrict the batsman for the big shot. 31 for the loss of 3 wicket. Devik run back on strike. This time inside edge of the bat. Good bowling there from Ajay. Good comeback. One more single. With that single, scored was under 32 for the loss of 3 wicket. Now Ajay have to survive from the last 2 deliveries of the final over. Ajay, right arm over the wicket. Bowls to Ishad. Ishad drives and he lost the bat from his hand. And it might be that wetness of the hands and bright and hot sunny morning, because if ever some players having quick wetness of the hands, so that very difficult to grip the handle of the bat by putting a lot of effort to hit the ball. That's what happening, and soft grip which is lost the bat. It's a 33 for the loss of 2 wicket. Last ball of their innings is coming up. Outside and off stamp, going to be a dotted delivery. That's it. Wicket number 4, which is back into pavilion. Team Matrix bowled well. Just one boundary and a single in this innings. And it's friends Talapadi only managed to get 33 runs and they set a target of 34 to win the match for Team Matrix. And we'll take a short break here. We'll take a short break. Just look at the summary of Friends Talapadi, the batting summary. And it's a really disappointment batting performance in the top orders. But in the end, 11 runs as well as 10 runs simultaneously scored by Irshad as well as Devi Kiran. And they got that much of runs here. So time to change in commentary box. It's over to Gopi for the further explanation of the match over national language Hindi. Thank you. I request the openers of Team Matrix, please go for bat.
immediately. धन्यवाद सतीश। तो 34 रनों का लक्ष्य इस वक्त टीम मैट्रिक्स के सामने इस वक्त रखा है। और जहां तक सवाल है फ्रेंड्स तलपाड़ी का, तो इस वक्त फ्रेंड्स तलपाड़ी में पहले बल्लेबाजी करते हुए 33 रनों का स्कोर उन्होंने खड़ा किया। 34 रनों का लक्ष्य उन्होंने इस वक्त प्रदान किया है टीम मैट्रिक्स को। और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, उनकी पारी की पहली गेंद कहना पड़ेगा। और इस वक्त रमीज जो कि स्ट्राइक लेते हुए, जबकि गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए 42 नंबर की जर्सी यहाँ पर पहने हुए। और अजीज इस वक्त सामना करना गेंदबाजी करने के लिए तैयार। और रमीज सामना करते हुए उनकी पारी की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार अच्छी बॉल्ड आउट। एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट डिलीवरी इन द फर्स्ट डिलीवरी, ही जस्ट गॉट द रेडी ऑफ द बैट्समैन। एक्स्ट्रा क्विक वन। और गेंद को इस वक्त उछालना चाहता, चूंकि गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए, गलत लाइन पर घेर गया, लेग स्टंप उखड़ कर गिरता हुआ। और पहली गेंद पर रमीज की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है गोल्डन डक के रूप में। 0 पर पहला विकेट गिर चुका है यहां पर टीम मैट्रिक्स। और रमीज आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए अपनी पहली गेंद पर। इट्स नॉट फॉर वन इन द फर्स्ट ओवर। इन अ फैंटास्टिक स्टार्ट फॉर द बॉलर अजीज। तो जहां तक अगले मैच का सवाल है, एमएससी चंबूगुड्डे का मुकाबला होगा मारीगुड़ी फ्रेंड्स के साथ अगले मैच में। तो इसलिए मैं दरख्वास्त निवेदन करता हूं कि दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया स्टेज पर संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर सही दर्ज करने के लिए। तो एक बेहतरीन गेंद के जरिए यहां पर विकेट प्राप्त कर चुके अजीज। और गेंदबाज अजीज इस वक्त नए बल्लेबाज इस्माइल को इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहां पर गुजरता हुआ। और इस बीच अजीज गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए 7 खिलाड़ी पेशकश के दायरे के अंदर तैनात। और ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी करते हुए गेंद ऑफ स्टंप पर आते हुए पल्ले का बाहरी किनारा टकराने के बाद गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट थर्ड मैन पर, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। और 1 रन का इजाफा इस वक्त हो चुका है। और 1 रन के इजाफे के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है टीम मैट्रिक्स के लिए। 1 रन बिना किसी नुकसान के। तो सामना इस वक्त करने के लिए तैयार मोहसिन। और फील्डिंग का मुआयना इस वक्त करते हुए पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। और अजीज गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए मोहसिन सामना करने के लिए तैयार। अपनी अगली गेंद, ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया, गेंद पहुंची मिड विकेट पर, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। रन से स्पीड बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज अजीज। और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए तैयार। ये गेंद इस बार उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिडले गेट, गेंद हवे में थी जरूर लेकिन फील्डर गली के जो खड़े हुए थे थोड़े से पीछे। और इस बीच रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बेहतरीन ओवर साबित होता हुआ फ्रेंड्स तलपाड़ी के पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण से देखा जाए इस वक्त जो अजीज इस वक्त फेंक रहे हैं। और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार मोहसिन सामना इस वक्त करते हुए अजीज की गेंदों का 7 से 8 कदम उनका रन अप दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, ड्राइव किया गेंद को इस वक्त, नॉट क्वाइट मिडले गेट, गेंद पहुंची लॉन्ग ऑन की दिशा में। जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि उनकी पारी का पहला ओवर यहाँ पर प्रगति पर। फर्स्ट ओवर ऑफ द इनिंग्स इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर, द मैच नंबर 2 ऑफ The day 2 of Yuvaratna trophy is now progressing here. इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद निकल चुकी है शॉर्ट थर्ड मैन पर।
स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को इस वक्त पंच करना चाहता लेकिन अंतिम क्षण में बल्ले का बाहरी किनारा टकराने के बाद गेंद शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्ड हो, 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। बेहतरीन ओवर अजीज का समाप्त हो चुका है जिसमें सिर्फ 3 रन उन्होंने प्रदान किया और पहले ओवर के समाप्ति के बाद टीम मैट्रिक्स 34 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मिक्स स्टार्ट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कर चुका है। इस वक्त 3 रन जोड़ चुका है 1 विकेट के नुकसान पर, 3 for the loss of 1 wicket after completion of first over. And still in overall calculation, it's going to be 31 more runs. Now they have to score for victory in remaining 5 overs with a required run rate of exactly 6.20 runs per over. Messi Chumbugude will take over Marigudi friends in the next match. The match number 3 of the day 2 of Yuvaratna Trophy 2023 is now coming up, which proudly presented by Team Fortune Mangalore. And because of that, I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए अपने हमसे दूर वाली छोर से गेंदबाज जाबिर, और वो इस वक्त गेंदबाजी करने के दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस्माइल के लिए, और दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर चलती हुई। मिड ऑन मिड ऑफ इस वक्त तैनात, पॉइंट शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग, स्क्वायर लेग, शॉर्ट मिड विकेट और मिड ऑन इस वक्त मौजूद। और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार वार्म अप इस वक्त करते हुए। सुबह का वक्त, दिन धीरे धीरे दोपहर की ओर इस वक्त बढ़ता हुआ। सुबह के 10:50 यहाँ पर बज चुके हैं और धूप की तीव्रता इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ यहाँ पर बढ़ते हुए अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज जाबी इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए। ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। रन से बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू हो चुका है। सेकंड ओवर स्टार्टेड जस्ट शॉट वाले गो इन द इनिंग्स, 3 for the loss of 1 विकेट। गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। इस बीच रन से एक बार फिर से बल्लेबाज को नहीं मिला, एक और बेहतर ओवर साबित होता हुआ। और यहाँ पर अंपायर श्रीरज कुछ हद तक कहते हुए गेंदबाज को कि डेंजर जोन में वो प्रवेश इस वक्त ना करें, क्योंकि वहाँ पर ठीक अंपायर के आड़े इस वक्त आते हुए गेंदबाजी करने के बाद गेंदबाज तो इस वक्त चेतावनी दी गई है गेंदबाज को। अगली गेंद, ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त जगह बनाते हुए, गेंद पहुंची लॉन्ग ऑफ पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 4 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। बराबर का संघर्ष जारी, द इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर। और अपने द्वितीयार्ध के 3 ओवर में बेहतर बल्लेबाजी करते हुए फ्रेंड्स तलपाड़ी ने एक बेहतर स्कोर यहाँ पर खड़ा करने में सफल रहे थे। 25 रन अपने द्वितीयार्ध में उन्होंने बटोरे थे। पहले 3 ओवर में सिर्फ 8 रन बटोरे थे, और लेकिन उसके बाद दूसरे 3 ओवर में 25 रन वो बटोरने में सफल। लेग स्टंप से बाहर बेहतर कलेक्शन विकेट कीपर द्वारा, और इस बीच वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी इस वक्त करते हुए। ये गेंद इस बार उछाला, लेकिन गेंद हवे में और सिली मिड ऑफ फील्डर ने आखिरकार कोई गलती नहीं की। Not quite middling it at the last moment. The ball got his topper off the bat. And have a look at this in the replay. किस तरीके से हुआ था देखिए, गेंद टॉपेज पर टकराई थी और आखिरकार सिली मिड ऑफ पर फील्डर ने कोई गलती नहीं की। 5 रनों पर दूसरा विकेट गिर चुका है, जबकि उनकी पारी का दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर संकट की स्थिति में नजर आता हुआ टीम मैट्रिक्स यहाँ पर। So number 4 batsman is now comes out to the middle for team metrics, और वो इस वक्त स्ट्राइक रन पर मौजूद, और गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए जाबी
अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दूसरा पावर प्ले इस वक्त जारी और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर जा भी तैयार। दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद हल्के से गेंद को पुश किया, शॉट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, रन नहीं मिलेगा। एक बार फिर से रन के लिए दौड़ पड़े, वहां पर गेंद को ठीक तरह से रिसीव नहीं कर पाए थे और तीनों स्टंप इस वक्त गिरा दिए गेंदबाज ने और फलस्वरूप यहाँ पर ओवर थ्रो के रूप में 1 रन बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 6 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। और कुल मिलाकर दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर निस्संदेह जहां तक 34 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, इस वक्त एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप की सख्त जरूरत है टीम मैट्रिक्स को। और यहाँ पर एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अपनी अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला, कवर पॉइंट सीमा रेखा की ओर गेंद बढ़ती हुई और गेंद इस वक्त कवर पॉइंट सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। थोड़ी सी विड्थ थी इस वक्त और यहाँ पर देखिए किस तरीके से गेंद को खेला था, खूबसूरती के साथ स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को पंच किया। पॉइंट फील्डर की दाईं ओर से गेंद निकली इस वक्त और फाइन निकलती हुई डीप कवर पॉइंट सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए और इस चौके के साथ 2 अंकों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि 2 ओवर का खेल यहाँ पर पूर्ण हो चुका है। 2 overs completed, 10 runs on the board, pretty good one in team metrics point of view came to an end. Pretty good one over. In fact, it's 7 runs scored in this over और खासकर वो जो चौका पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर लग चुका था, वो चौका इस वक्त काफी हद तक टीम मैट्रिक्स को इस मैच में वापस ला चुका है। 10 रन बन चुके 2 विकेट के नुकसान पर, 24 रन और चाहिए, गेंदे बाकी है 24 यानी 4 ओवर। और जहां तक मैच के विजय का सवाल है, मैच अभी भी बराबरी पर रुक चुका है। गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए कार्तिक इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और तीसरा ओवर शुरू होता हुआ इस वक्त टीम मैट्रिक्स की पारी में इस बार वार्म अप करते हुए 24 गेंदें बाकी हैं और 24 रन चाहिए विजय के लिए। 24 रन टू गेट फ्रॉम 24 डिलीवरीज, बराबर का टक्कर, बराबर का संघर्ष यहाँ पर जारी। और कार्तिक इस वक्त गेंदबाजी करेंगे, दाहिने हाथ के बल्लेबाज निजाम जो कि इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर मौजूद था। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर चलते हुए, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ इस वक्त मौजूद, डीप एक्स्ट्रा कवर, फील्डर पीछे की ओर जाते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार कार्तिक। गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए अपनी ओर की पहली गेंद लेकर के आना पड़ेगा तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद ऑन साइड पर, जस्ट गॉन फॉर अ वाइड स्विंग एट द लास्ट मोमेंट, मिसिंग द लाइन कंप्लीटली और विकेट कीपर भी चूक किया और इससे पहले की गेंद को शॉर्ट फाइन लेग पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर, जबकि तीसरा ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू हो चुका है। एक बेहतर गेंद थी कार्तिक की इस वक्त, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहता बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं और विकेट कीपर की चूक की वजह से बल्लेबाज 1 रन यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं 22 के रूप में। फिर से एक बार कार्तिक का गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए परिवर्तन के तौर पर लेग कटर गेंद इस वक्त फेंकना चाहता, लेकिन दिशाहीन गेंद इस वक्त फेंकी और 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 12 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। कार्तिक अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद ऑफ कटर गेंद, इस बार कॉटन बोल्ड, लेकिन चूक चुका है रनआउट का मौका, लेकिन रनआउट का मौका भी इस वक्त गंवा चुके हैं। That wasn't a sharp chance on the follow through for the bowler the last moment, लेकिन यहाँ पर गेंद को वो लपक नहीं पाए और रनआउट का मौका था, लेकिन दोबारा गेंद को ठीक तरह से फील्ड करने में वो असफल। बल्लेबाज जीवदान के साथ साथ 1 रन इस गेंद पर प्राप्त करते हुए और कार्तिक का एक बार फिर से तैयार, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 14 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। अपने सही लेंथ और लाइन को इस वक्त तराशते हुए कार्तिक 2 वाइड अब तक इस ओवर में फेंक चुके हैं। इस बार दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर, गेंद पर बल्ला आया, शॉट फाइन लेग की दिशा में, थ्रो पहुंचा विकेट कीपर के हाथों में, विकेट कीपर ने विकेट भी चटकाया, लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित
अपने क्रीज पर मौजूद 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 15 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर और कुल मिलाकर तीसरा ओवर उनकी पारी का प्रगति पर 19 और रन चाहिए विजय के लिए कुल मिलाकर, जबकि इस ओवर में गेंदें बाकी हैं 3, यानी कुल मिलाकर उनकी पारी में 21 और गेंदें बाकी है। 19 और रन चाहिए विजय के लिए। 19 more runs now they have to score for victory in remaining 21 deliveries। और फिर से एक बार कार्तिक का गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को चिप किया हल्के से, अंतिम क्षण में अपने स्ट्रोक्स को चेक कर लिया था जब तक गेंद को वहां पर लग ऑफ पर फीड किया जाता। 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 16 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ। 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर इस वक्त तैनात इस श्रृंखला के नियमानुसार। और कार्तिक अपनी ओर की अगली गेंद, यह गेंद ऑन साइड पर स्विंग करना चाहा, नॉट क्वाइट मिडली गेंद पहुंची शॉर्ट स्क्वायर की दिशा में। 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर। रन्स इस वक्त सिंगल्स के रूप में बढ़ रहे हैं, लेकिन खुशी की बात यह है टीम मैट्रिक्स के लिए कि रन्स बढ़ रहे हैं हर गेंद पर। और कार्तिक का इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, फुल ऑन गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई स्टीयर करना चाहा, बैकफुट पर जाने के बाद गेंद को कट करना चाहा था, चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। 3 ओवर की समाप्ति, 17 रन बन चुके 2 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर का खेल बाकी, 17 रन और चाहिए विजय के लिए। 17 रन स्कोर्ड इन द 3 overs for losing 2 wickets for Team Matrix. 17 runs more. Still they have to score for victory in remaining 3 overs. Still they got 8 wickets kept intact. और देखते हैं इन बचे हुए 3 ओवर में क्या टीम मैट्रिक्स के बल्लेबाज अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं या नहीं। और चौथा ओवर यहाँ पर शुरू होता है और इससे पहले कि चौथा ओवर प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर अब मैं आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए अंग्रेजी में सतीश को आमंत्रित करना चाहूँगा। आइए सतीश, धन्यवाद, थैंक यू। Uh, 17 for the loss of 2 wicket in the over number 3, which is completed now. 3 overs remaining, and wait and see how well. Half of the job which is completed, and half of the job yet to be completed. And really the battle is on here from Talapadi. This time, Flum, absolutely Flum in front of wicket. The batsman little bit shuffled across the line of the delivery, finding himself on the midland leg stump. Absolutely Flum. Just look at it on the replay. The batsman shuffled. That's a big problem for the batters, isn't it? When you are shuffling across the line of the delivery, you are coming right in front of middle stump. And no doubt at all, it's a Flum in front of wicket. And the wicket number 3, which is back into pavilion, pitched in a line, shuffled across the line of the delivery, missed it completely from the bat, and he's back finding himself right in front of a stump. So 17 for the loss of 3 wicket in the over number 4 is in progress. Team Matrix chasing the, not a huge total, just 34 to win the match, but lot of effort we have from friends Talapadi bowlers to win this match, especially this man, Aziz, is bowled brilliantly in the first over from the commentary box end, and from the far end is bowling so good in this match from the far end, Aziz. Right, Amavadi gets Spectra wide. Absolutely little margin for error. He's just looking for extra pace. By doing that, he just lost his concentration over the line. Ball went far away outside the line of leg stump. It's 18 for the loss of 3 wicket in the over number 4 is in progress. Again, the bowler bowls. This time lofted. Going to be a chance here for the long off field. One more wicket there for Aziz. What a fantastic job there from Aziz. He's kept the hope of winning this match alive for his team. The batsman going for the expansive drive.
And lofted but not really getting the distance. There is elevation but fails to get the distance. One of the difficult part of the ground in the morning to get the distance in the long off. You can get the distance in a deep long on deep mid wicket, but in the morning it's very difficult to get the distance in the offside long off region. And the short selection is going to be a key here for the team, the Matrix, but they fails to get the distance, the batter. 18 for the loss of 4 wicket, and Tasleen is the man, is walking towards the middle. The experienced campaigner, very good all-rounder, bowled very well for his team. Now he came in to bat here to get some responsible innings for his team. Tasleen takes the guard from fresh guard from umpire. Aziz bowling with a short run off. Picked up 2 wickets in this over, and altogether he picked up 3 valuable wickets. Aziz, oh, beautifully bowled that one. Absolutely perfect delivery for the fresh leg, right on the block hold of the batter. Tasleen managed very well to get bat right time behind the line of the ball. Otherwise that ball is almost looks like came in a extra pace, extra quicker. And batsman negotiated very well to survive from that delivery. Aziz again from the far end, right arm over the wicket balls. Went for the reverse. A ball is in there, but safely landed. There is no back point fielder. There is a deep third man fielder, and Zabir the fielder then the deep third man region collects the ball. And in the meantime Tasleen got his first run. Taslim got a first run of his bat. 19 for the loss of 4 wicket. Another 15 more runs required for the victory. Ismail came as a number 3 batter for the side. Batted well so far. Is batting on 9. Now get ready to face the next delivery. Tries that one. Good piece of fielding. Chance of run out. And little bit, I think, that throw which is not good enough. And of course they're very good enough, but the batsman really run well, Taslim. Otherwise a certain opportunity of run out which is created. After that ball went straight to the hands of Cow Point. Excellent piece of fielding and a throw from the fielder. But Taslim is so quick in dedication to react to that run, quick single. It's a 20 for the loss of 4 wicket. 14 more runs required for the victory. Taslim bowling Liperson facing the next delivery of Aziz, seaming in from the far end. Balls again, ball is just passing between the legs, and opportunity of run out which is created, and by call by umpire. Frustration for Talapadi. 21 for the loss of 4 wicket. Outstanding bowling spell is which is comes in end of Aziz. Really good one. This ball magnificently. 2 overs, no maiden. Conceded 6 runs and picked up 3 valuable wickets. Now it's an equation. 13 to get from 12 balls. What a match. Watching the first time that low scoring game. Because whenever that batting first team getting a low score, the chasing team gets that one very easily. But in this particular match, not given up, which is the slogan which is implemented by friends Talapadi. And so far they're fighting hard for the victory. Even Team Matrix, even they lost, even they're chasing a small turtle, but they're struggling against the bowling of Talapadi. From the far end, it's going to be a bowling change. So Zabir fails to contribute from the bat, and wait and see can he able to get some
good bowling here for his team because 13 to get from 12 balls. Zabir will going to bowl his first over and the fifth over of the innings of Team Matrix. 13 ball, 12 runs required for the victory. Taslim is on strike. He will going to face first delivery of the over number 5. Nicely driven right in the gap down to deep cover point region. They're running hard. They're going for the second. Even they're turning out for the third. Taslim is so good in the between the wicket. Even his partner is so good. Ismail to complete the 3 valuable runs. Absolutely fantastic placement there from Taslim. Just like I mentioned earlier, Taslim is a very experienced campaigner and who loves to play under pressure. It's not a easy condition when he came into bat, but the way that in the first ball of the over, getting a placement is so good and releasing the pressure from his partner. 10 to get from 11 balls. Again, frustration and the pressure. Zabir bowls big wide outside the leg stump. Now 9 to get from 11 balls. Equation now really coming very easy for Team Matrix. 9 to get from 11 balls. Zabir badly required 1 or 2 very good deliveries. Balls chipped at one. Ball is in there, but safely landed out of the reach of that mid-on fielder. And before the mid-on fielder to run towards his right to field the ball. Ample time for the batter to complete the single. With that single, Skopan was on to 26 for the loss of 4 wicket. And that brings Taslim into strike now. 8 runs required, 10 balls remaining. Leg spin ball and the batsman went for the reverse sweep. A chance of run out in the non-seconds and again, oh my goodness, overthrow. And again they're going for the run. The fielding is not up to the mark. Fielding which is not up to the mark. The opportunity of run out twice in this situation. They missed it twice occasion. One is Taslil is not interested for this run. At the same time, second opportunity in the non-strikers end. But again the bowler fails to hit the stump and Taslil got a couple of runs. 6 required from 9 balls. Taslim looks like he's a tired man here. Taslim they wanted maybe some relaxation here after running hard between the wicket. It's happening when you run very quickly and try to get quick runs. Body which is not reacted for that. Taslim is a regular player. He's not that is out of the regular matches. He's playing regularly. It's a 28 for the loss of 4 wicket. Zabir will go into ball. 6 runs required from 9 balls. Zabir again, right arm over the wicket balls. To Taslim. Taslim went for the reverse sweep. They're going for the single. Oh, what? They're going for towards a deep third man boundary for 4 runs. The fielder is in a fine leg region. Ball went towards a third man region. Looks like once it's going to be the fine leg fielder will going to get there. But he's just watching, isn't it? Just look at that one. No effort at all from the fielder. And it is the shortest part of the ground. Even UCG ground, outfield is so quick. And no chance at all for the fielder. And they completed 32 for the loss of 4 wicket. Now, umpire Shiraj asking you to go and take a rest. Don't take any risk. Rightly so. Because it was really, I think, taking a risk. If you are having a pain in your chest, you need not do that. You don't give extra pressure for your body. And that's why umpire Shiraj rightly so quickly sending Taslim the back. Go and take the rest. Because just a couple of runs required from 8 balls. And the next match, and that's going to be a third match of the day, number 2. MSC Chambugude versus Marigudi Friends.
After winning the toss, MSC Chumbugude elected to field first. Please get ready. 30 minutes, 27 minutes being given for you to complete your 6 overs quota. Please note the captain of the fielding team. 2 to get. 8 balls remaining. This time catch it is a call and is gone. I don't know why the batsman doing that silly thing when just a couple of runs required for the victory. He wanted to hit the big shot and back into his pavilion. We can get so many examples actually in a cricket that the players are collapsed in the ground. That's what umpire Siraj did a great job and the right job that sending Taslim. This time it's going to be a victory stroke and they got a boundary for that. Congratulations Team Matrix. They're winning this match at last in the final, in the 5th over. And Zabir, one who really expecting more from his bowling, but a disappointment. They didn't bowl well, even didn't bat well. And team Friends Salapadi, they fought hard for the victory, but still they're finding themselves the 10 to 15 runs short what they really wanted to get in the 6 overs. Congratulations Team Matrix. We're talking a short break here, and before that, just look at that summaries here. 33, which is a target, and Team Matrix got that one quite easily in a 5 overs. The innings which came from Ismail remains unbeaten, played a good innings. At the same time, Taslim has played a small cameo before he's gone retired. He scored a 9 valuable runs. Now it's the time for to watch the highlights of this match between Team Matrix versus Friends Talapadi from Bedra Media. Those who are watching live telecast of this cricket tournament, here you go, the highlights of the match. To please report to the stage here now for receiving the momentum from the organizers. Friends Talapadi ತಂಡದ ನಾಯಕ ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಸಂಘಟಕರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿ ಪುರಸ್ಕೃತಗೊಂಡಂತಹ ತಸ್ಲೀಂ ಇವರು ಟೀಮ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ತಸ್ಲೀಂ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಂಘಟಕರಿಂದ. ದಯವಿಟ್ಟು
मारी को डिफरेंस आता है। तो इस बीच पहली गेंद थी, इस वक्त गेंद को कुछ कर दिया तंजीम और अपना बॉल पाड़ी अरबिक बल्लेबाज लेगबाई का इशारा अंपायर का। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त स्ट्राइक का, तो अल्ताफ बॉल पाड़ी इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और जहाँ तक अल्ताफ बॉल पाड़ी का सवाल है, बेहतरीन डिस्ट्रक्टिव बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। एक बार अपना रिदम लाइन प्राप्त कर ले तो गेंदबाजों पर भारी पड़ने की क्षमता रखते हैं। और देखते हैं इस मैच में वो किस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर अपनाते हैं। तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दृष्टि हसन अगली गेंद बाहर की ओर निकलते हुए बल्लेबाज को नहीं नुकसान के जबकि तो इस वक्त के साथ स्कोर की तरफ पहुंच चुका है। 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के 2 विदाउट लॉस ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। तो दृष्टि हसन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। अल्ताफ वालपाड़ी इस वक्त सामना करते हुए दृष्टि हसन की गेंदों का पहला पावर प्ले ओवर उनके पारी का यहाँ पर पकड़ी पर गेंदबाज दृष्टि हसन दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए अल्ताफ के लिए नेक्स्ट से बाहर की ओर गेंद निकलते हुए एक बार फिर से वाइड का इशारा दिशाहीन गेंद थी और गेंद को इस वक्त फील्ड कर दिया गया शॉर्ट पॉइंट पर। स्कोर रुक चुका है 3 रन बिना किसी नुकसान के। जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर दृष्टि हसन अपनी सही लिंक तो लाइन को यहाँ पर तलाशते हुए 2 गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज अल्ताफ इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार लेग से बाहर खूबसूरती के साथ गेंद को इस वक्त स्विंग कर दिया है। डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। ऐसा कहना पड़ेगा जितनी तेज रफ्तार के साथ गेंद आई थी। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। देखिए कितनी तेज रफ्तार के साथ गेंद आई थी और उतनी तेज रफ्तार के साथ बेहतरीन फुटवर्क के साथ गेंद को इस वक्त मोड़ दिया। खूबसूरती के साथ गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के दरमियान 4 रनों के लिए अल्ताफ वालपाड़ी ने। और इस चौके के साथ स्कोर अब बढ़कर यहाँ पर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 7 रन बिना किसी नुकसान के। जबकि पहला ओवर यहाँ पर प्रगति पर उनके पारी का गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए कुछ हद तक दबाव इस वक्त फील करते हुए महसूस करते हुए दृष्टि हसन पिछले गेंद पर चौका प्रदान करने के बाद और देखना यह है कि अपने आने वाले गेंदों में वो किस तरीके की कमबैक यहाँ पर करते हैं। और गेंदबाज इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद चिप किया इस बार अल्ताफ ने और गेंद लॉन्ग ऑफ पर इस वक्त पहुंच चुकी है और लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के अंदर लपक ली गई है। ऐसा कहना पड़ेगा काफी उम्दा काफी ऊंचा उछालाता है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर हुआ था अल्ताफ वालपाड़ी का स्ट्रोक, लेकिन गेंद में इतना पर्याप्त दम नहीं कि वो सीमा रेखा को पार कर सके। और लॉन्ग ऑफ फील्डर जो खड़े हुए थे सीमा रेखा के अंदर उन्होंने इस कैच को लपका बाखूबी। और इसी के साथ अल्ताफ वालपाड़ी का विकेट यहाँ पर गिर चुका है। तो जहाँ तक अल्ताफ वालपाड़ी का सवाल है एक चौका प्राप्त करने के बाद आक्रामक बल्लेबाजी की सूचना वो दे चुके थे। अगली ही गेंद पर उनका विकेट गिरा यहाँ पर लॉन्ग ऑफ पर फील्डर द्वारा लपक लिए गए और पहला विकेट खो चुका है 7 रनों के योग पर इस वक्त मारिको डिफरेंस। ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿ ಪುರಸ್ಕೃತಗೊಂಡಂತ ತಸ್ಲೀಂ ಟೀಮ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ತಸ್ಲೀಂ ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಕರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. I request the Taslim of Team Matrix to please report to the stage immediately to receive the man of the match prize from organizer. तो इस वक्त नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है और अशरफ नए बल्लेबाज के रूप में और गेंदबाज दृष्टि हसन इस वक्त गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने तो पर विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद लेकर तैयार। ये गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ एक्स्ट्रा कवर पर, लेकिन खाली क्षेत्र ढूंढने में सफल और एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को रोक लिया गया और अपने दूसरे प्रयत्न में गेंद को फील्ड कर लिया। फील्डर ने रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 7 रनों पर पहला विकेट इस वक्त गिर चुका है और फिर से एक बार दृष्टि हसन गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए अशरफ के लिए ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में गेंद पहुंची, रन के लिए दौड़ पड़े और इस बीच 1 रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं। तो इस बीच बाई का इशारा अंपायर का और 22 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर।
8 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 8 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और दृष्टि हसन एक बार फिर से यहाँ पर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार स्वीप करना चाहा, पैरों पर टकराई गेंद, पहुंची पॉइंट पर, शॉर्ट पॉइंट पर। जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, 1 रन का इजाफा हो चुका है। 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर की समाप्ति के बाद। द फर्स्ट ओवर कंप्लीट है। और यहाँ पर जहां तक सवाल है, तस्लीम जो कि पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच जो कि पुरस्कृत हुए, अपना ट्रॉफी और मैन ऑफ द मैच का खिताब इस वक्त वो प्राप्त करते हुए संगठकों से, किशोर जो कि संगठकों में से एक है, इस वक्त मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी उन्होंने प्रदान की तस्लीम को। और एक बार फिर से उनको बधाई देते हैं और इस श्रृंखला के अगले मैचेस के लिए उनको हम शुभकामनाएं देते हैं। तो यहाँ पर 9 रन बच चुके 1 विकेट के नुकसान पर, पहले और की समाप्ति यहाँ पर हो चुके हैं। 9 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर। गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए हमसे दूर वाली छोर से साई शक्ति एंड की ओर से इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए गेंदबाज और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज तंजीम इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। युवरत्न ट्रॉफी 2023 इस मेगा श्रृंखला के अंतर्गत आज का ये तीसरा मैच यहाँ पर शुरू हो चुका है। इस श्रृंखला का, इस टूर्नामेंट का शानदार तरीके से आयोजन किया टीम फॉर्च्यून मैंगलोर ने। और ये श्रृंखला ये टूर्नामेंट एक शानदार प्रगति यहाँ पर करते हुए, तो गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल, और 4 रन इस वक्त बल्लेबाज तंजीम प्राप्त करते हुए। ऐसा कहना पड़ेगा, जस्ट पिक दैट वन राइट फ्रॉम द स्पॉट एंड लॉफ्टेड दैट वन इन अ स्टाइल ओवर डीप मिड विकेट फेंस। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, किस तरीके से गेंद को स्वीप किया था इस वक्त देखिए, और खूबसूरती के साथ 4 रन प्राप्त करने में सफल। और इस चौके के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 13 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 13 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर। और गेंदबाज मुश्ताक गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर चलती हुई, लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट इस वक्त मौजूद। और इस बीच मुश्ताक अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद स्वीप करना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त शॉट स्क्वायर की दिशा में, रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन मिलेगा। इस बीच निशाना यहाँ पर चूका और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यहाँ पर बदल चुके हैं। 14 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 14 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, मुश्ताक अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए, शॉट फाइन लेग फील्डर के हाथों में गेंद। 1+1 2 रन्स नाउ एडेड टू देयर टोटल इन द फेस ऑफ एक्स्ट्रास। और इन 2 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 16 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। मुश्ताक एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई, विकेट हटते हुए गेंद को खेला खूबसूरती के साथ, एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के दीवार पर गेंद टकरा चुकी है 4 रनों के लिए। इनसाइड आउट क्रिकेट इस वक्त खेलते हुए और गेंद को खूबसूरती के साथ इस वक्त खेल दिया था। स्क्वायर ऑफ द विकेट वाइड लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान चौका इस वक्त बल्लेबाज प्राप्त करते हुए। बेहतर स्ट्रोक इस वक्त लगता हुआ तंजीम के बल्ले से, और दूसरा चौका वो इस वक्त झड़ चुके हैं। स्कोर बोर्ड बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 24 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद बेहतर गेंद थी, कुछ ज्यादा तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी और गेंद को फील्ड कर लिया गया। शॉर्ट फाइन लेग पर रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर एक बेहतरीन प्रगति करता हुआ इस वक्त मारिकुडी फ्रेंड्स। और फिर से एक बार गेंदबाज मुश्ताक गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद जब किया एनफील्ड क्लियर करते हुए 4 रनों के लिए। He just got that one right from the middle of the bat and lofted that one, clearing the infield and finds the gap as well. और पावर प्ले का भरपूर यहाँ पर फायदा उठा चुके हैं। पहले 2 ओवर में 24 रन यहाँ पर बटोर चुके हैं बल्लेबाज और निस्संदेह यहाँ पर एक बेहतरीन प्रगति करते हुए। 2 ओवर अभी भी समाप्त नहीं हुआ है और मुश्ताक एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, चौका नंबर 3
तंजीम इस वक्त जड़ चुके हैं। एक बार फिर से मुश्ताक की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार, और मुश्ताक इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई, तेज तरीके की विकेट कीपिंग, लेकिन अंपायर श्रीरज पर कोई प्रभाव नहीं क्योंकि बल्लेबाज का पिछला पैर क्रीज पर मौजूद है और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 1 रन के साथ 25 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर। तो अंपायर विकेटों को इस वक्त सही करते हुए खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका, और अंपायर रोलैंड पिंटो इस वक्त कुछ कहते हुए विकेट कीपर्स हैं। और तो इस मैच के बाद अगला मैच यहाँ पर खेला जाएगा फ्रेंड्स कुत्तार और एनएफसी उर्वा के बीच में, पहले दौर का अंतिम मैच। और इसलिए मैं दरख्वास्त रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया स्टेज पर संपर्क कर ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर साइन दर्ज करने के लिए। रिक्वेस्ट ऑल द प्लेयर्स ऑफ फ्रेंड्स कुत्तार एंड एनएफसी उर्वा टू प्लीज रिपोर्ट टू द स्टेज इमीडिएटली टू मेक अ साइन इन द ऑफिशियल चार्ट। तो तीसरा ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ, और गेंदबाज इस वक्त माफ कीजिए दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर, और गेंदबाज मुश्ताक इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज तंजीम सामना करते हुए, ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई, वाइड का इशारा, रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। 1+1 2 runs now added to their total, and with a couple run the scoreboard moving up to 27 for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. So this is an absolutely fantastic progressing year now for मारिगुडी फ्रेंड्स। और जहां तक सवाल है अपनी ओवर की अगली गेंद का, तो गेंदबाज ये गेंद स्वीप किया इस वक्त शॉर्ट मिड विकेट पर, गेंद पहुंची मिड विकेट पर, गेंद पहुंची थी, रन सब मिलेंगे बल्लेबाज को एक तेजी के साथ रन चुराते हुए, और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 28 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एंड सेकंड ओवर हैज बीन गेम्स टू एन एंड। So fantastic progressing here now for Marigudi friends after being losing the toss and put it to bat by MSC Chumbugude. They are managed to score 28 runs on the board following just a single wicket with a run rate of exactly 14 runs per over. And this is an absolutely fantastic progressing year for them. काफी लंबी बातचीत यहाँ पर चलते हुए MSC चुम्बुगुड्डे के गेंदबाजों के बीच में, माफ कीजिए फील्डरों के बीच में, कि अगली ओवर कौन से गेंदबाज को इस वक्त सौंपी जाए। और काफ़ी बातचीत के बाद हमसे यहाँ पर कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से गेंदबाजी का जिम्मा इस वक्त सौंपा जा रहा है गेंदबाज जो कि इस वक्त नया ओवर प्रारंभ करते हुए। तो 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध यहाँ पर हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं, और तीसरा ओवर लेकर गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए। स्ट्राइक इस वक्त है अशरफ के पास, और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इमरान गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए। फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलती हुई, 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात इस श्रृंखला के नियमानुसार पावर प्ले के बाद, और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद पहली गेंद उछालना चाहा, आक्रामक स्ट्रोक खेलना चाहा, चूके पूरी तरह गेंद टिप्पा खाने के बाद कुछ हद तक नीचे रहते हुए अपील यहाँ पर हो चुकी है। अंपायर श्रीरज स्क्वायर लेग अंपायर रोलैंड पिंटो की ओर बढ़ते हुए कुछ बातचीत करते हुए कि क्या वहां पर डिफ्लेक्शन हुआ था या नहीं, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, और इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है कट बिहाइंड द विकेट के रूप में। He's got a nick on that at the last moment when he's trying to play that one on the onside area, trying to swing that one on the onside area. और जहाँ तक सवाल है सिरा इस वक्त टकराया था बल्ले का, और आखिरकार बातचीत करने के बाद अंपायर श्रीरज ने आखिरकार अपनी उंगली यहाँ पर उठा दी, और दूसरा विकेट यहाँ पर गिर चुका 28 रनों के ऊपर। It's 28 for 2 at the start of the third over in fact. मंजा नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर मौजूद, और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार इमरान की गेंदों का। 2 विकेट यहाँ पर गिर चुके हैं,
और जहाँ तक सवाल है स्ट्राइक का, तो मंजा के पास स्ट्राइक नॉन स्ट्राइक पर तंजीम और गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, परफेक्ट लेग कटर, गेंद को साइड पर उछालना चाहा, गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए, गेंद ऑफ स्टंप से कुछ दूरी पर निकलते हुए सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 28 रनों पर स्कोर बोर्ड इस वक्त रुक चुका है 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि दूसरा उनकी पारी का तीसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर और इमरान एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए मंजा इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। इमरान की गेंदों का ये गेंद ऑफ कटर उछाला, स्क्वायर ऑफ द विकेट, फील्डर वहां पर मौजूद है शायद और गेंद को लपकने में सफल, और इसी के साथ मंजा की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है। पहली गेंद पर गोल्डन डक के रूप में गेंद को इस वक्त उछाला था, देखिए किस तरीके से हुआ था, स्क्वायर ऑफ द विकेट, लेकिन वाडी लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान जो फील्डर मौजूद थे गेंद सीधे उनके हाथों में पहुंची और आसानी के साथ इस कैच को उन्होंने लपक लिया। मंजा की पारी समाप्त, 28 रनों पर तीसरा विकेट गिर चुका है यहां पर मारीगुडी फ्रेंड्स का। इट्स 28 for 3। So new batsman is now comes out to the middle। सुनील नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर मौजूद, इमरान की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। इमरान अपनी ओवर में चौथी बार दाहिना तो ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद अच्छी गेंद थी, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ था, गेंद को इस वक्त खेलना चाहा, गेंद को खेला तो जरूर लेकिन मिड ऑफ द बैट कनेक्ट नहीं, फॉलो थ्रू में गेंद पहुंची जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और इस बीच रन सब बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 28 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इमरान अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद इस बार गेंद को फुल टॉस खूबसूरती के साथ निकाला लंब ऑन की दिशा में, वहां पर फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करने के बाद लौटाए, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 29 रन 3 विकेट के नुकसान पर एक बेहतरीन ओवर साबित होता हुआ इमरान का। 2 विकेट इस ओवर में प्राप्त कर चुके हैं, जबकि सिर्फ एकमात्र रन पहले 5 गेंदों में वो अब तक प्रदान न कर चुके हैं। अपनी अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद इस बार टॉप एज गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, विकेट कीपर की दाईं ओर से जब तक शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका है। 30 रन, सिर्फ 2 रन इस ओवर में बने। जस्ट 2 रन कंसीडर्ड बाय द बॉलर्स इन दिस ओवर। गुड वन in MSC Chombogood Sport of Campton and the over from Imran and after 3 overs still Marigudi friends are looking in a good situation। 30 रन बन चुके हैं, 30 for the loss of 3 wicket they scored after completion of 3 overs। 3 overs left in overall calculation और देखते हैं इन बचे हुए 3 ओवर में उनकी पारी में क्या क्या होता है। तो इससे पहले कि चौथा ओवर प्रारंभ हो, आगे का आंखों देखाल सुनाने के लिए माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अंग्रेजी में सतीश को। धन्यवाद, थैंक यू। Thank you very much, Gopi. So 30 for the loss of 3 wickets. They're going exactly 10 runs per over. It's a very good run rate maintained. 10 runs per over by Marigudi friends against MSC Chumbugude. From the far end, going to be a change in bowling. Naushad brought it attack. First bowling change from the far end, and first ball it's a single for the batter, and batsman picked up a single. Tanzim is looking so good in the middle. Scoring some runs for his team with the help of 3 boundaries he scored, and he's batting on 14 now. And now the batter Sunil will going to take the strike. He's batting on 1 as an Naushad again bowling from the far end. Right arm over the wicket to the right-hander batter Sunil. Sunil went for the reverse sweep, and this time umpire just coming towards the pitch, saying that bowler coming right in front of umpire, so that warning number 1 has been given to Naushad as scored is 32 for the loss of 3 wicket in the over. Number 4 is in progress. Naushad again just changing the field now, just setting a field, mid-wicket fielder coming a little bit
a little bit finer, and there's a deep long on. Is there deep long off and deep cover point? The fielders are in the deep. Sunil will going to face next delivery. No shot. Right, a moment wicket going for the mighty stroke. Not really getting that much of placement right. The mid wicket fielder so quick in the division. Not really settling the batsman for the couple of runs, but just a single here for the batter. The with the single scoreboard moves on to 33 for the loss of 3 wicket in the over number 4 in progress. Just look at the scoreboard. All we can see the 4 threes. 33 wickets 3, and the number of overs which is completed, which is 3, and 3 3 3 3. And what the scoreboard we having, and in the ball is a 3.3. Altogether it's 6 threes, and quite interesting. 3.3 overs, 33 for the loss of 3 wickets. Ball time, clean him up. Went for the reverse stroke after being such a good in playing orthodox cricketing stroke, and Sunil did a mistake here to get one reverse stroke. By doing that, that ball defeating his bat, hitting the stumps. The wicket number 4, which is back into pavilion. It's 33 for the loss of 4 wicket in the over number 4 is in progress. And Sunil need to see that if when you're having the very good subtle batsman in the other end, your job is to pick the single and give the strike as much as possible to your partner. But here is the right time for MSC Marigudi to bounce back. MSC Chambugudi to bounce back. Maragudi is coming from a long way, from 35 kilometers from Mangalore city. That is 35 kilometers in Mudabidri. They're coming from Mudabidri. Maragudi cricketers, wait and see how well they're going to make an impact in this particular tournament of this Yuvaratna Trophy 2023. Meanwhile, new batter came into middle. Ajit will going to face the bowling of Naushad. Beautifully bowled, perfect one to ball the fresh leg, absolutely right on a target. By call by umpire, nothing much has happened in that ball. Wicketkeeper fear in the stamp fails to collect the ball, but ball is came nipped back into the batsman, isn't it? Ball after fishing a little bit outside the line of off stamp, but that ball nipped back into the batsman. And batsman little bit worried about that delivery, but fortunately that ball missing the stumps. 34 for the loss of 4 wicket. Naushad again from the far end. From Sai Shakti end. Went for the reverse up again. The same thing what Sunilis did. Here is the batsman tried to make a same mistake. Luckily that ball got a little bit bat and pad in the relegation. Otherwise, if we miss that one, going to be a chance of one more wicket here for Naushad. But it's a good over. The kind of over which is badly required for MSC Chumbugude. And Marigudi cricketers, first time seeing that they are not getting that much of runs. Just 4 runs which came from that over. A good over there from Naushad. Now 2 overs remaining in the innings of Marigudi, and wait and see how many runs they will going to score. Marigudi, one of the most reputed team when you're going towards Mudabidri Karkala region. They got a lot of prestigious, by lifting some prestigious titles. And wait and see how well they're going to make an impact in this lots of underarm cricket here in Mangalore, UCG cricket ground of this most prestigious Yuvaratna Trophy, which is proudly organized by Team Fortune under the lovely memory of Punit Rajkumar. Again, this time almost a dangerous stroke play there by the batter. They're going for the second run. Excellent running between the wicket, isn't it? Now we're appealing for the run out, but umpire Roland Pinto is in such a good position to watch that the batsman is completely made it. And no question of asking for the third umpire. Outstanding running between the wicket. Especially the Ajit after striking the ball. It's not so easy, isn't it? Striker always going to be late to react for the second run, because he is after striking, he starts his run. But non-striker is not like that. You're always ready for this run. You're always ready for the second run and the first run. And Ajit is doing a great job, because he's the one is running towards the danger end and run very quickly to complete that couple of runs. 36 for the loss of 4 wicket. 36 for the loss of 4 wicket in the over number 5 in progress.
Ajit will going to take the strike. Drives it on up and over the head of mid-off fielder, but fielder is there in the deep long on, in the wideish long on. He will going to cut it off, but meantime the batsman complete the single. Not really getting that much of timing behind the stroke, isn't it? Looks like he's hitting the ground before hitting the ball, and that's why the timing is not came proper for the batter. But anyhow, the single is there for him and for his team. 37 for the loss of 4 wicket. Far outside and off stump. It's not a problem of the line which is a ball, but the problem is that he slipped out, so that he is not really able to get the line proper. Far outside the line of off stump and wide signal by umpire. 38 for the loss of 4 wicket. The stamps hits that one firmly down deep extra coverage and protection has been given, but still that ball winning the race. That ball really went like the bullet. And just look at that one, inside out cricketing stroke, hits that one pretty firmly. There is a long off, there is extra cover, but still that ball is managed to defeat that two fielder because of that hardness of the ball. And when you are having a very hard ball and hard in the nature, after ball hitting the ground, then very difficult for the fielder in the deep to get that because of extra bounce, which defeats the fielder in the deep. 42 for the loss of 4 wicket. This time, going to be a chance here for the cow point fielder or mid-off fielder, but one of the fielder from the deep extra cover running towards the ball and takes a catch here. Just try to get over the top of that fielder, and Tanzim is a batsman who looks pretty good in the middle, came as opener for the side, but he played a very good innings for his team. Excellent innings there from Tanzim. He comes to an end. He tried to get some acceleration, needed to be after he settled down in the middle. And Imran picked up his 4th wicket, 3rd wicket in fact. Three wickets here for Imran, and what a fantastic bowling performance continues here by Imran. Might be a little bit expensive, but he got some wicket for his team. Aman, the one more very young talented player for the side. Right arm over the wicket. Aman went for the reverse sweep. They went for the single there. Oh, that's going to be very close. That's going to be very close. If it is a direct hit, I think it's all over for Aman. One more single has been taken. Quick single. 43 for the loss of 5 wickets. Imran. Again outside and off stamp. Good line to finish the over by Imran. Now one more over completed. 43 for the loss of 5 wicket. 5 gone. Last over remaining in the innings of Marigudi friends. Wait and see how many runs they will going to score. Coming back to this cricket tournament in the day number 1. The highest run chase, which is a 57, which is chased by Zaman Boys Kaladka against Durga Challengers Konchadi. And they finished too early, and now it's a 43. It's going to be a higher score because that is a 7 hours game yesterday, and now today is a 6 hours game, and 43 is a good score on the board. Another 7 or 10 runs in that over, it's going to be a 50 plus runs on the board. Umpire saying that they are need to keep in the eye on the time, which is given for you to complete your this time single-handed stroke. Magnificent stroke, and look at the effort that from fielder. Outstanding, unbelievable stop there from the mid-wicket fielder. Just I want to see it in the replay. The kind of effort there from the fielder. That was a certain 6. That was a certain 6. It's a phenomenal attempt there from the fielder. All bodies in the air when he was trying to stop that 6. The umpire having a conversation. Umpire having a conversation here. Will it going to be a 6 or not? Umpire now referring for the 3rd umpire. Maybe the umpire want to see that when the fielder having a jump, whether he had his first attempt inside the boundary line or it was outside the boundary line.
If his attempt is outside the boundary line, it's going to be a 6. Because as per the rules and regulation of cricket is concerned, the fielder have to make his first attempt inside the boundary line. Then you can go outside the boundary line. You can take a airborne. But here we have to see that whether the fielder made his first attempt inside the boundary line. If it is inside the boundary line, I think he has saved the runs, because all the body which is floating on the air, when ball is put the ball into the playing area, then his body is in the air, and after that he is gone out of the boundary line. But third umpire Mohan Ayadi will definitely going to get there. But I think it's a screamer that forms the fielder. We are having such kind of savings only in the international cricket, but in a present underarm cricket, we are having some fielders not really lesser than the international cricket fielders. It's a saved, and umpire says it's a perfectly saved, outstanding. Zunaid is a fieldsman there in the mid-wicket, and definitely Zunaid will going to become a viral in the social media so quickly. It's outstanding saving there from Zunaid, isn't it? And just a couple of runs here, the 45 for the loss of 5 wickets. Looking for the improvisation, ball is in there for a while. It will be interesting to see the decision from umpire. It's a bye call by umpire, no contact with the bat, and wicketkeeper behind the stump. Now umpire saying they already crossed the time. They already crossed the time, so that umpire asking one fielder need to come inside the boundary line, inside the circle. It's going to be a penalty. It's going to be a penalty. Only 4 fielders outside the circle. Only the 4 fielders outside the circle. If he continues that late bowling, then once again the penalty will be given. Another fielder will need to bring inside the ring. Again from the far end. Right arm over the wicket. Ball him, clean him up. Batsman looking for the reverse stroke. Ajit misses the line completely. You miss high it, what bowler did in this delivery. Disti Hassan strikes his second wicket, and altogether it's a 46 for the loss of a 6 wicket. Very good friends. As a 46 for the loss of 6 wickets, and one more last 3 deliveries remaining of the innings of very good friends. The new batsman in, Siraj, went for the mighty stroke inside edge of the bat, saving in from the bowled out, because if the ball which is not going to hit the bat, definitely that's going to hit the leg stump of the batter. And luckily the batter has got the inside edge of the bat, and scoreboard numbers on to 47 for the loss of 6 wicket. Last 2 balls remaining of the innings of Marigudi friends. Can they able to get the 50? If they're able to get the 50, it's going to be a psychological advantage for Marigudi friends when they're going to defend their total against MSC. Outside and off time, going for the splash, and they come in for the second, and this is absolutely a good thinking, and the batsman certainly wanted to get the strike there, and rightly so. Aman will be the striker, and because when the bails were uprooted, then I think non-strikers are very close to that non-striker's stump, and as per the rules and regulation of the cricket is concerned, the batsman who close to the stumps, which is bails which is uprooted, that batter will go into be the out, and that's why the batsman walking towards the middle. Aman wanted a strike for the last ball of the over, that's why he's running hard towards the striker's end. 48 is the total score. Now this year Hassan will go into ball the last delivery of the innings of Marigudi friends. Hassan. Ball him, clean him up, exposing his leg stamp.
But Hasan knows that, this Hasan knows that you need to target that leg stump, the stumps which is exposed. Just look at it on replay. How far to across from the line. Beautiful delivery, quicker one. No chance at all for the batter to hit the ball. And the bowler hits the stump, the leg stump of the batter. Aman then, and the wicket number 8 which is back into pavilion. So 48 for the loss of 8 wicket, and they set a target of 49 to win the match. Good comeback and last moment there from MSC Chembugude. One stage it looked like Marigu defense were going to get 55 to 60 runs, but last 2-3 overs it's outstanding comeback here for MSC Chembugude. But just still I think it's a good score to depend. Wait and see how Marigu defense will go to depend this total, and wait and see how MSC Chembugude will going to get this total. It's going to be a very interesting session, and for that I would like to invite Mr. Gopi to take over the microphone in our national language. And till then we're taking a short break here in our commentary box. Thank you. धन्यवाद सतीश। तो यहाँ पर रन्स इस वक्त बनाने 49 रन, 49 the target they have to score for victory in their stipulated 6 overs, and as far as the required run rate is concerned, exactly 8.17 runs per over they have to score for victory, and their innings are going to start. First ball इस बार स्विंग किया है, इस वक्त बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। सादिक के बल्ले से ये छक्का लग चुका है, ऐसा कहना पड़ेगा। गेंद की उछाल को पहचानते हुए देखे किस तरीके से गेंद को इस वक्त स्विंग किया था, और डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर गेंद को भेजने में सफल छक्के के लिए। और इसी तरीके की बल्लेबाजी इस वक्त करनी है, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट जो है 8.17 रन प्रति ओवर, और
खासकर पावर प्ले का फायदा अगर बल्लेबाज उठाते हैं तो निस्संदेह यहाँ पर अपने मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं। तो पहली गेंद पर 6 रन सादिक इस वक्त बटोरते हुए और गेंदबाज रियाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार चिप किया एंड फील्ड क्लियर करते हुए लॉन्ग ऑन पर गेंद जाती हुई, वहां पर शायद फील्डर मौजूद है और जब तक गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के। सादिक ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं, सुलेमान इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और गेंदबाज रियाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए पहला पावर प्ले ओवर यहां पर जारी। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद को खेलने के प्रयास में चूके मत स्ट्रेट लाइन और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। बल्लेबाज को वंचित करने के बाद रन से स्पीड बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए रियाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, गेंद को जाने दिया। इस बीच विकेट कीपर के हाथों में और डॉट गेंद अंपायर द्वारा घोषित स्कोर इस वक्त रुक चुका है 7 रन बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर यहां पर प्रगति पर, दाहिने हाथों पर राउंड द विकेट गेंदबाज की गेंद, रिवर्स शॉट, गेंद अवे में लेकिन फील्डर थोड़े से पीछे मौजूद, शॉर्ट थर्ड मैन पर और जहां तक रनों का सवाल है रन स्पीड मिलेंगे 1 और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 8 रनों पर बिना किसी नुकसान के। इट्स 8 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। सादिक बैक ऑन स्ट्राइक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। गेंदबाज की गेंद इस बार स्विंग किया लेकिन गेंद सीधे पहुंची मिड विकेट फील्डर के हाथों में। करारा प्रहार था लेकिन प्लेसमेंट गलत था और बेहतर तरीके से फ्लैटर वर्जन पर गेंद को इस वक्त लपक लिया गया मिड विकेट 20 गज के दायरे के अंदर। देखिए किस तरीके से बेहतर तरीके से गेंद को लपका था। सादिक एक छक्का लगाने के बाद कुछ हद तक आक्रामक बल्लेबाजी की सूचना दे चुके थे। यहां पर उनका विकेट गिर चुका है इस पहले ओवर में और 8 रनों पर पहला विकेट यहां पर खो चुका है एमएससी चंबुगुड्डे, जबकि उनकी पारी का पहला ओवर समाप्त हो चुका है। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड एंड आफ्टर फर्स्ट ओवर 8 runs scored by the batsmen of MSC Chembugudde, chasing the victory target of 49 set by Marigudi friends और 41 रन और बनाने हैं बचे हुए 5 ओवर में, यानी 8.20 रन प्रति ओवर के औसत से और नए बल्लेबाज का आगमन यहाँ पर होता हुआ हमसे दूर वाले छोर से साई शक्ति एंड की ओर से गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए शॉर्ट फाइन लेग, स्क्वायर लेग का मिड विकेट, एक्स्ट्रा कवर, पॉइंट और शॉर्ट थर्ड मैन इस वक्त मौजूद और दूसरा पावर प्ले ओवर राउंड की पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ। गेंदबाजी में इस वक्त फील्डिंग में इस वक्त जमावट करते हुए और अपनी पहली गेंद लेकर गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हैं। 41 रिक्वायर्ड इन रिबनिंग 30 डिलीवरीज और साई शक्ति एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए। अजित ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 9 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। पहली चेतावनी, फर्स्ट वार्निंग इस वक्त दी गई है गेंदबाज को डेंजर जोन पर प्रवेश करने के लिए अंपायर रोलैंड पिंटो द्वारा। और फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए गेंदबाज दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद ऑफ स्टंप पर आते हुए एक बार फिर से वाइड का इशारा और रन 1 रन के साथ बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 अंकों पर, यानी 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जबकि दूसरा ओवर यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है और अजित 2 लगातार वाइड इस ओवर में फेंक चुके हैं। अपनी ओर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, इस बार भी वाइड, तीसरा लगातार वाइड इस वक्त गेंदबाज अजित फेंक चुके हैं। अब टीम के अन्य खिलाड़ी उनके पास आकर उनको कुछ समझाते हुए कि किस सही लेंथ और लाइन के साथ उन्हें इस वक्त गेंदबाजी करनी चाहिए और एक बार फिर से वो अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर, अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज की अजित तैयार, एक बार फिर से वाइड ऑफ स्टंप से काफी बाहर नजदीकी मामला, लेकिन निशाना चूक चुका है इस बीच। 1+1 2 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 13 रनों पर। अब अजित गेंदबाजी से हट चुके हैं और देखना है कि उनका ओवर यहाँ पर कौन फेंकता है।
तो खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए रुक चुका है। बातचीत इस वक्त खिलाड़ियों के बीच में जारी है कि अगला ओवर किसको दिया जाए। काफी बातचीत के बाद गेंदबाजी का जिम्मा इस वक्त सौंपा जा रहा है गेंदबाजों की नया ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए। तो वही गेंदबाज अजित को इस वक्त रखा गया, उन पर विश्वास रखते हुए ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल, और गेंद जाते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा की ओर काफी लंबा दौड़ लगाते हुए गेंद को इस वक्त फील्ड करे फील्डर। बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन के प्राप्त करने का। ऑफ द बैकफुट गेंद को इस वक्त स्कूप किया था खूबसूरती के साथ स्क्वायर ऑफ द विकेट, और 2 रन बल्लेबाज बटोरने में सफल, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 15 रन दूसरा ओवर प्रगति पर। यह गेंद बिल्कुल जमीन के सहारे खूबसूरती के साथ निकाला एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के अंदर, गेंद को रोकने में असफल। गेंद तक पहुंच गए थे, गेंद पर अपना हाथ भी अड़ाए थे, लेकिन गेंद उनके हाथों पर टकराने के बाद जमीन पर टिप्पा खाकर उनके पैरों पर टकराने के बाद सीधे सीमा रेखा की दीवार पर टकरा चुकी है 4 रनों के लिए। और चौका इस वक्त जुड़ चुका है इस वक्त एमएससी चुंबुगुड्डे के खाते में। बेहतर स्ट्रोक गेंदबाज द्वारा, माफ कीजिए बल्लेबाज द्वारा, और गेंदबाज अजित काफी महंगे इस ओवर में साबित हो चुके। अपनी ओर की अगली गेंद जमीन के सहारे गेंद ड्राइव किया स्ट्राइट ऑफ द ग्राउंड मिड ऑन की दिशा में, 1 रन मिलेगा। 20 रन बच चुके 1 विकेट के नुकसान पर। कल एक लंबा ओवर अजित का यहाँ पर प्रगति पर, और 20 रनों पर स्कोर बोर्ड इस वक्त पहुंच चुका। 12 रन इस ओवर में अब तक अजित प्रदान कर चुके हैं, और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। रिवर्स शॉट इम्प्रोवाइजेशन खूबसूरती के साथ, लेकिन स्ट्रोक्स में ज्यादा रफ्तार नहीं। 1 रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, और दूसरा रन सफलतम यहाँ पर पूर्ण करते हुए इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता। 22 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 22 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस, और 14 रन इस ओवर में प्रदान कर चुके हैं पहले 4 गेंदों में गेंदबाज अजित, और अपनी ओवर की 5वीं गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये गेंद बैकफुट पर गए, गेंद को खेलना चाहा, चूंकि गेंद सीधे लगभग जमीन के सहारे आई थी और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है 22 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेला मिड विकेट पर, 1 रन मिलेगा। 15 रन स्कोर्ड इन दिस ओवर, 15 रन इस ओवर में बने, और इस ओवर की बदौलत ऐसा कहना पड़ेगा एमएससी चिंबुगुड्डे एक बेहतर शुरुआत यहाँ पर कर चुका है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन जोड़ चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। 23 for the loss of 1 wicket, 15 runs scored in this over, and 2 overs completed, 23 for the loss of 1 wicket for MSC Chimbugundde, chasing the victory target of 49 in 6 overs. They made a pretty good start. In fact, it's a terrific start, and 26 more runs now they have to score for victory in remaining 24 deliveries. And straight away, the asking run rate is now coming down to exactly 6.5 runs per over for them. Still, they got 9 wickets kept intact, no wickets सुरक्षित, और इस वक्त बल्लेबाज पानी ग्रहण इस वक्त करते हुए खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। बहुत ही कड़ी धूप मैदान पर इस वक्त छा चुकी है, भीषण गर्मी का एहसास इस वक्त खिलाड़ी करते हुए, और खासकर डिहाइड्रेशन जैसे समस्याएं इस वक्त आमतौर पर खिलाड़ी को होती है इस भीषण गर्मी में। और यहाँ पर पानी पीने के बाद दोनों खिलाड़ी अपने स्थान पर लौटते हुए, दोनों बल्लेबाज, और नया ओवर इस वक्त प्रारंभ होता हुआ कमेंटेटर बॉक्स की ओर से गेंदबाज मंजा जो कि गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए। 26 रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 24 बॉल्स। तो 2 ओवर में 23 रन जोड़ चुका, और कंपैरिजन देखा जाए तो मारीगो डिफरेंस ने भी पहले 2 ओवर में 28 रन उन्होंने बनाए थे, लेकिन उसके बाद एक बेहतरीन वापसी करते हुए एमएससी चिंबुगुंडे के गेंदबाजों ने बल्लेबाज को बांध कर रखा। अगले 20 रन न सिर्फ प्रदान किए बचे हुए 4 ओवर में, और यहाँ पर 23 रन अब बनाने हैं उनके बल्लेबाजों को, जबकि गेंदें बाकी है 24 यानी 4 ओवर। और तीसरे ओवर की पहली गेंद लेकर मंजा इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए। पहली गेंद ऑफ स्टंप पर, ओह दिस इज गॉन फाइन, और गेंद सीमा रेखा के दीवार पर टकरा चुकी है 4 रनों के लिए, और इसका बैट ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट, और गेंद इस वक्त फाइन निकल चुकी थी शॉर्ट थर्ड मैन और शॉर्ट फाइन लेग फीडरों के बीच, और गेंद सीमा रेखा के सीढ़ियों पर इस वक्त टकरा चुकी है 4 रनों के लिए। तो इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 27 रनों पर, और इक्वेशन
इस वक्त और भी आसान इस वक्त बन चुका है। 22 रन और चाहिए विजय के लिए, जबकि उनकी पारी का तीसरा ओवर यहाँ पर शुरू हो चुका है। 22 रन मोर, नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 23 डिलीवरीज। और गेंदबाज मंजा गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, और यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है। टॉप एज पर गेंद टकराई, ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा था, आसानी के साथ विकेट कीपर ने कैच को लपक लिया। देखिए किस तरीके से यहाँ पर हुआ था, और विकेट कीपर ने आखिरकार विकेटों के पीछे कोई गलती नहीं की। दूसरा विकेट गिर चुका है। इट्स 27 for 2 एंड नाउ 22 रन्स दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 22 डिलीवरीज। Still the match is now equally balanced. और बल्लेबाज अशफक का आगमन यहाँ पर होता हुआ, और कप्तान है जो कि एमएससी चौंबे गुड्डे के, और वो इस वक्त सामना करेंगे मंजा की गेंदों का। मंजा इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए काफी दूर दूर तक पहला रक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ। एक्स्ट्रा कवर शॉट, थर्ड मैन शॉट, फाइन लेग, मिड विकेट इस वक्त मौजूद दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद लेकर तैयार। ये गेंद स्वीप किया खूबसूरती के साथ, गेंद पहुंची शॉट स्क्वायर लेग की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 28 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स, नाउ 21 रिक्वायर्ड ऑफ लास्ट 21 डिलीवरीज। और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार डेरिल मंजा की गेंदों का, और मंजा अपनी ओर के अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए डेरिल के लिए पैरों पर टकराई, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, और जब तक स्वयं गेंदबाज अपनी बाईं ओर शॉर्ट कवर पर जाकर जब तक गेंद को फील्ड करे, लेग बाई के रूप में 1 रन दोनों बल्लेबाज पूरा कर चुके थे, और एक लेग बाई के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 20 रन और बनाने हैं बचे हुए 20 गेंदों में, और मंजा इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए अशफक जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद अशफक के लिए स्वीप किया, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट एट द लास्ट मोमेंट, इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट, और इस 1 रन के साथ 30 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है, जबकि एक गेंद अभी भी बाकी है इस ओवर में। 19 रन्स मोर, नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 19 डिलीवरीज। गेंद और रन्स एक साथ इस वक्त चलते हुए पिछले चंद गेंदों से, और मंजा इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आते हुए कुछ ज्यादा तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी। बेहतर गेंद थी, निशाना इस वक्त टकरा चुका है, और यहाँ पर इट्स गोइंग टू बी अ थर्ड अंपायर। तृतीय अंपायर के लिए इस वक्त कॉल दिया गया है, और यहाँ पर देखते हैं तृतीय अंपायर यहाँ पर क्या निर्धार देते हैं। देखने वाली बात यह है कि जब स्टंप्सों पर गेंद टकराई थी, गिल्लियां बिल्स ऑफ हुए थे, तब क्या बल्लेबाज का बल्ला हवे में था या फिर वो क्रीज पर बल्ले को बैट को लैंड कर चुके थे। आउट इज द कॉल एंड द बैट्समैन हैव टू डिपार्ट, और एक विकेट यहां पर गिर चुका है। शायद बल्ला बैट बल्लेबाज का हवे में था जब स्टंप सुखाने गए थे। चतुरता के साथ विकेटों पर निशाना दागा था फील्डर ने। तीसरा विकेट गिर चुका है 30 रनों के ऊपर। 19 रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 3 ओवर्स, दैट मींस इन 18 बॉल्स 7 विकेट्स दे गॉट केप्ट इंटैक्ट। और देखते हैं इन बचे हुए 7 विकेटों की मदद से 18 गेंदों पे 19 रन एमएससी चंबू गुड्डे के बल्लेबाज बटोर पाते हैं नहीं। और चौथा ओवर इससे पहले शुरू हो, माइक्रोफोन पर आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए अंग्रेजी में अब सतीश को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। धन्यवाद।
I request for the next match, I request Prince Kuttar as well as NFC Urva. Two teams captain kindly request you to complete the formalities of signature as well as uh, tossing ceremony for the next match, and it's a equal battle is on. It's 29 more runs required for the victory in the remaining 3 overs. And nicely swept that one down to deep backward square leg region for a single. They're looking for the second, but very difficult to get. And with that single, scoreboard moves on to 31 for the loss of 3 wicket. .31 for the loss of 3 wicket, 3 overs which is complete. The 4th over is in progress and from the far end. Nicely swept that one, very fine indeed. Chase here for the square leg fielder, and before the fielder run across his right to collect that one, returns the ball very well. The opportunity is there for the run out. If it is a direct hit or if it is a wicketkeeper able to collect the ball properly, might be it's going to be one more chance of making a run out there. And just looks like the wicketkeeper fails to collect the throw from the fielder. 33 for the loss of 3 wicket, and in the over number 4 is in progress. Right arm over the wicket, balls pushing and running, and there is the bowler on his follow through quickly turns back and try to hit the stumps, misses the stumps completely, and both the batters completed a single here. 34 for the loss of 3 wicket, and the over number 4 is in progress. Riaz operating from the Sai Shakti end, and nicely driven down to mid-wicket region. Again, that looks like it's going to be a chance of run out here. What the partner is doing here. Naushad, they wanted a second run, and I think it's going to be a bad decision. If he turns for the second run, it's going to be a suicider. A very good return coming from the field in the deep mid-wicket region. 35 for the loss of 3 wicket. Another 24 more runs required for the victory. Again, they're going for the single. Both the batsmen. This time is a direct hit, but I think the batsman definitely going to be a safe or not. Need to see, because umpire Roland Pinto, the field umpire, referring for the third umpire. Now, the third umpire is so busy, Mohani Yadi, in this particular match. So many chances of run out there. Just I want to see it in a replay what really happened in this particular opportunity of run out. The batsman trying for the run, quick single by tapping the ball in front of the bowler. Bowler turns back and hits a stump so quickly, and might be that was a very close call for the third umpire to give the decision. It's a 35 for the loss of 3 wicket. ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಹಾಗೂ NFC ಉರುವ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. It's going to be the last match of the round first of day number 2 of this prestigious Yuvaratna Trophy 2023, which is proudly organized by Team Fortune in the name of Yuvaratna Trophy 2023, the loving memory of late Punita Rajkumar. Batsman is safe, what third umpire is just suggesting about. Even in the naked eye, I'm just observing from the commentary box, just seeing that the body language and bails off, which is a late, and of course the bowler hits the stump, but after hitting the stumps, the bails which is off, but it takes a little bit time. That's what batsman survives. Going for the mighty stroke, missing it completely from the bat. It's going to be one more leg by with that addition of that single. Scoreboard moves on to 37 for the loss of 3 wicket. 49 is going to be target. 22 required from 18 balls. Little correction, 12 balls and 12 runs required for the victory. Little correction, 12 balls and 12 runs required for the victory. The match is evenly poised. The last 2 overs remaining, 12 balls remaining and 12 runs required for the victory. Looks like MSC Chambugude are looking in top, unless Marigood friends have to get one good over. This is a decider over for team Marigood friends. They need to get some wicket, need to get one good over. And the wait and see.
So Manja is brought in director operating from the community box and to ball the second over. His second over. Manja, right arm around the wicket. Balls full toss. Oh my goodness, it's really a bad miss by the batter, because if he tried to play the orthodox cricketing stroke, he can deliver the ball out of the park. But he's trying for the premeditated switch it, reverse stroke. He just misses it completely from the bat. Ashfaq is the batter. Manja the bowler. Dotted delivery. We're talking about one dot delivery in this over. 12 to get from 11 balls. Manja operating from the community box end. Right arm. Round the wicket. It's going to be a chance here for the non-strikers, and the umpire referring for the third umpire. Mohan Ayadi once again is in the picture to get the result of this run out. So much run out opportunities in this match. Again, we need to see that the batsman safe or not. But seeing the body language of the batter, he looks like he's safe. But Mohan Hayadi, he need to be see that whether the batsman is safe or not. It's not that the batsman will go into see, but here is a third umpire. The out twist is a call. The batsman is gone. The batsman just short of his crease, and the very good work actually then by the bowler after getting the throw. Quick work, absolutely quick work. So 12 which is required from 10 balls. Now slowly the match which is turning around. And team Marigudi friends, just like I mentioned, this over is going to be more important for Marigudi to get some good over. So Manja so far bowled two deliveries, two dotted deliveries, and at the same time he got one wicket in the form of run out. And the Ashfaq is a settled batsman, is back into pavilion. Kalandar is a new batter in. Appeal for leg before wicket, but ball pitched outside the line of leg stump, isn't it? Very good shout from Manja, but being the fact that he's bowling round the wicket and the ball is pitching outside the line of leg stump. That's a big problem when you're bowling around the wicket, along the carpet. First impact of the ball, which is hitting the ground, which is outside the line. That's why it's a very rare that when the bowler's operating round the wicket, but bowler can get the leg before wicket if he bowled flighted deliveries, isn't it? The flighted delivery in this sense is pitching the ball in the midland leg stump in the first impact of the line, pitch of the ball. It's a need to be in the line. But when you're bowling round the wicket, it's definitely very difficult. When you're bowling along the carpet especially, it's very difficult to get the result. 11 to get from 9 balls. Went for the sweep shot, bits infield, down to deep fine leg boundary for 4 runs. Absolutely efficiency in that strokes. Clever thinking, isn't it? Just using the face of the ball, just giving the direction, closing the face of the bat. This is what you call, sometime you need to use your mind. The bowler doing a mistake is bowling a little bit around the legs of the batsman, and batsman quickly seeing that the fine leg inside the ring and defeating that fine leg fielder down to deep fine leg region for 4 runs. Delicately played there by the batter. And now equation seems to be much easier. 7 to get from 8 balls. Manja's all the efforts are gone in vain in 1 ball. Right arm round the wicket. Balls once again, he swept that one right in the gap. They're running hard, looking for the second. Definitely they come back for the second, and they made it quite easily. They're going for the third as well. What really going on here for the fielders of Marigudi friends? 45 for the loss of 4 wicket. Kalandar is playing a small cameo for his team in under pressure situation. The 4 and a 3, which is definitely going to be a bonus in this condition for the Marigudi, for MSC Chumbugude. 4 to get from 7. Manja.
Right arm around the wicket. Again he swept that one, but missed it completely. Dotted delivery, but already the damage which is need to be done in this particular over. Colander already did the damage. Now they're going for the third umpire. Maybe for the stump out. Just want to see it in a replay again. Third umpire is going to be ask for the third umpire here, and the Mohan Yadi will go into refer. So far is outstanding umpiring job done by the two officials, Roland Pinto sir, Sri Raj of Goryang boys, Mohan Iyadi. All we can see that is one of the most popular names in cricket as officials. But third umpire is always going to be one of the new invention. Not out, which is a call from umpire, third umpire. The batsman is safe. Now 4 to get from 6 balls. 4 to get from 6 balls. Umpire just watching the time. I think the Marigudi friends are in the time, so that no question of any penalty here. The long off is there. Long on going back. Mid on going back to deep long on. And all we can see the fielders inside the ring. Even though there's not going to affect. You can see that 1, 2, 3, 4, 5, 6 fielders inside the ring. Only 3 fielders outside the ring. All we can see the closing fielder saving the singles. Went for the reverse shape, straight to the answer fielder. The Colander we are talking about, the man who changing the competition of this match, is back into pavilion without completing the job. Now 5 balls, 4 runs required for the victory. That wicket will going to open the gate a little bit for Marigudi friends. Now it's a 4 to get from 5 deliveries, and they got a 5 wickets in hand. If the match will go into ended in a tie, then a fall of wickets comes into play. As a fall of wickets is concerned, the opposition team Chembugude have lost 8 wickets. Little correction, Marigudi have lost 8 wickets, and Chembugude lost only 5. Oh my goodness! Will it be necessary here to ball the wide? Tanzim, after getting a wicket, is just himself release the pressure from the batter. Driven nicely, it's going to be a winning run. It's going to be a winning run, looks like it's going to be a 4 there. No, it's a stopped a little bit. It is stopped by the fielder. Once it looks like the batsman hitting the ball right in the gap. No one there in the deep, but the extra cover fielder given an extra effort to stop the boundary, and just a couple of runs. 48 for the loss of 5 wickets. Scores are level. 1 run required for the victory. 3 balls remaining. The last thing what Prince Mudabidri wanted to do here is that Marigudi bowled him. 2 balls, 1 run required for the victory. The Marigudi friends still have got an opportunity to tie the match and takes the match. But I think the fall of wickets is more interesting. The 2 balls, if they're able to get the 2 wickets, then it's going to be wickets also level. That means hat-trick wicket which is required. You got a 1 wicket, Tanzim. Then you need to pick another 2 wickets in 2 consecutive deliveries if they wanted to tie this match. ಅಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತರಾಗೋ NFC ಉರುವ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. NFC ಉರುವ ತಂಡದ ನಾಯಕ ತಮಗಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So if 2 wickets falls in the 2 deliveries, then toss will go into decide. 2 ball, 1 run required for the victory. Driven and finish the match in a style. And by hitting the boundary,
And the boundary signal by umpire. And at last, a victory for MSC Chambugude and Marigudi friends. Of course, they fought hard for the victory, but not quite enough to defeat their opposition MSC. But unfortunately, Marigudi friends played a very good game of cricket. Thank you very much, Marigudi friends, your appearance for this cricket tournament from long way, from Mudabidre to here in UCG cricket ground. Congratulations for MSC Chambugude. Hard luck for Marigudi friends, and my request, Marigudi friends, captain, please come here and collect your the memento and flower pot for your representation for the tournament from our organizers. Now it's a time to get some highlights of this very good match. Not for the spectators who are watching live in this cricket ground, but only for the viewers who are watching live in Bedra Media. Here is the highlights of this match. For the announcement of the man of the match, which goes to the bowler who really responsible for the restriction of the runs of their opposition by picking up 3 valuable wickets by conceding just 9 runs in 2 overs. It's a Disti Hassan who judged as a man of the match for his outstanding bowling figure of 2 overs, 9 runs and 3 wickets. For the next match, captain of NFC Rua on the toss and elected to field first. We'll take a short break here, and after a short break, my friend Gopi is going to take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you. Now it's a time for the presentation of man of the match, and Dinesh, the manager of Gori Young Boys, presenting this man of the match award for DC Ashan for his wonderful performance from the ball, 2 overs, 9 runs, and picked up 3 valuable wickets, and definitely going to be the match turner, the game changer of this match, and he got a very attractive man of the match trophy. And now it's a time for the captain of Marigudi to please come here to collect your representation memento from our organizers.
ಅಲ್ಲಿ ಮರಿಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖ್ಯಾತ ವೀಕ್ಷಕರು ವಿವರಣೆಗಾರರಾದ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರನಾದಂಥ ಸತೀಶ್ ಅವರಿಗಾಗಲೇ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಭೂದಾನಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾರಿಗುಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. So NFC Urva after one toss they elected to field first, and we are just waiting for the openers of Friends Kuntar. Friends Kuntar ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟ್ಟ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. धन्यवाद सतीश। तो यहाँ पर मैच नंबर 4 आज का शुरू हो चुका। पहले दौर का त्यागराज और निखिल आरंभिक बल्लेबाज रंजीत गेंदबाजी शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेग से बाहर खूबसूरती के साथ गेंद को स्विंग किया। इस वक्त बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के दीवार पर गेंद टकरा चुकी है 4 रनों के लिए। Just smashed that turns it away on the corner. Firmly struck and he's got a boundary for that. And this is an absolutely positive start for त्यागराज। और इस चौके के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका। फ्रेंड्स को तार का 4 रन बिना किसी नुकसान के। और एनएफसी उर्वा ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय जो कि उन्होंने लिया, तो फलस्वरूप दोनों आरंभिक बल्लेबाज फ्रेंड्स गुप्तार की इस वक्त क्रीज पर मौजूद। और गेंदबाज से एक बार फिर से तैयार। रंजीत की गेंद, ये गेंद अच्छी गेंद थी, टेक्निकल गेंद थी अंदर की उड़ाते हुए और गेंद को खेलने के प्रयास में त्यागराज चुके और गेंद सीधे पहुंची शॉट फाइट फील्डर के हाथों में। रन भी बल्लेबाज को नहीं मिलेगा तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 4 रन बिना किसी नुकसान के। फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर कट करना चाहा। बैकफुट पर जाने के बाद गली क्षेत्र पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के। जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर निस्संदेह जहाँ तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है फ्रेंड्स गुप्तार का, तो इस वक्त उन्हें संस्थानी पार्टनरशिप की सख्त जरूरत। पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर गुजरता हुआ और रंजीत गेंदबाजी इस वक्त करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज निखिल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और रंजीत दाहिने हाथ राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार खूबसूरत स्ट्रोक गेंद को खेला इस वक्त बड़ी स्लप ऑफ पर गेंद की लाइन पर आते हुए जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है
4 रनों पर बिना किसी नुकसान के 6 विदाउट लॉस। ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। कुल मिलाकर एक बेहतर शुरुआत की इस वक्त सख्त जरूरत फ्रेंड्स कुत्तार को, जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है उनके लिए। और गेंदबाज रंजीत गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, त्यागराज सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली विकेट, वन नॉन स्ट्राइक। बल्लेबाज काफी आगे निकल आया लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित, और इस वजह से कोई क्षति नहीं उनके लिए। स्कोर रुक चुका है 6 रन बिना किसी नुकसान के, 6 विदाउट लॉस। दिस इज द फर्स्ट ओवर ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर। गेंदबाज रंजीत गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन फ्रॉम द बॉलर, परफेक्ट ऑफ कटर। और यहाँ पर जहाँ तक सवाल है बाउल्ड होने से बाल यहाँ पर बचते हुए, तो यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा गेंद लगभग ऑफ स्टंप से कुछ दूरी पर निकली थी, लेग स्टंप से कुछ दूरी पर निकली थी, और परफेक्ट ऑफ कटर गेंद थी। और इसी के साथ ओवर नंबर 1 की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है। 6 ओवर्स कंप्लीटेड, 6 रन्स ऑन द बोर्ड, फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड एंड स्टेडी स्टार्ट फॉर फ्रेंड्स कुत्तार। And still in overall calculation it's going to be 7 overs remaining in the inning। 7 ओवर का खेल अभी भी बाकी। और गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए हमसे दूर वाले छोर से सतीश गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए, और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार बाएं हाथ के बल्लेबाज निखिल। दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए कप्तान एनएफसी उर्वा के, और अपनी ओर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। सतीश गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, वाइड इज लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ इस वक्त तैनात, और दाहिने हाथ राउंड द विकेट ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के, जबकि दूसरा ओवर यहां पर प्रारंभ हो चुका है। और गेंदबाज की ओवर की अगली गेंद निखिल के लिए। ये गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर रहा, और वाइड का इशारा लगातार दूसरा वाइड। गेंदबाज सतीश द्वारा अपनी सही लेंथ और लाइन को इस वक्त तलाशते हुए 2 लगातार गेंदें लेग स्टंप से बाहर वो फेंक चुके हैं, और 2 रन अतिरिक्त एक्स्ट्रा के रूप में वो यहां पर प्रदान कर चुके हैं। 8 रनों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है बिना किसी नुकसान के, जबकि उनकी पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर यहां पर। और कुछ बातचीत करने के बाद दोनों बल्लेबाज अपने स्वस्थान पर लौटते हुए, और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। बल्लेबाज बाएं हाथ के निखिल इस वक्त सामना करते हुए, गेंदबाज सतीश की ओवर की अगली गेंद का लेग स्टंप पर आती हुई गेंद, एक बार फिर से वाइड का इशारा। 3 लगातार वाइड यहाँ पर फेंक चुके हैं अपने सही लेंथ और लाइन को यहाँ पर तराशते हुए, और निस्संदेह यहाँ पर तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में इस वक्त वो रन से प्रदान करते हुए सामने वाली टीम को। और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर बिना किसी नुकसान के। बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट इस वक्त किया जा रहा है बेद्रा मीडिया द्वारा यूट्यूब पर, इस मेगा श्रृंखला के अंतर्गत युवरत्ना ट्रॉफी 2023, जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है टीम फॉर्च्यून मैंगलोर ने। और ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर, फिर से वाइड शॉट। थर्ड मैन फील्डर ने बहुत ही मुश्किल के साथ गेंद को रोका, लेकिन यहाँ पर एक रन लेने से बल्लेबाज को नहीं रोक पाए। 1+1 2 runs now added to the total, और स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 12 रनों पर। 11 रनों पर बिना किसी नुकसान के, 11 विदाउट लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर। इनफैक्ट तो फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर चलती हुई, और कुछ बातचीत करने के बाद, कुछ सलाह लेने के बाद गेंदबाज सतीश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज त्यागराज इस वक्त सामना करते हुए, और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार।
दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद बेटर, दैट्स बेटर। इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद फेंकी थी इस वक्त, और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं। और ऐसा कहना पड़ेगा बाएं हाथ के गेंद बल्लेबाज निखिल के खिलाफ उन्होंने 4 वाइड लगातार फेंके थे। जैसे ही त्यागराज स्ट्राइक पर आए, बिल्कुल सही लेंथ और लाइन के साथ उन्होंने गेंद फेंकी है। और यहाँ पर ये बात ये दर्शाता है कि बाएं हाथ के बल्लेबाज को गेंदबाजी करने में वो दिक्कतों का इस वक्त सामना कर रहे हैं। एक बार फिर से तैयार, ये गेंद बेहतर थी, बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, लॉन्ग द कार्पेट, धीरे धीरे अपनी सही लेंथ और लाइन को इस वक्त प्राप्त करते हुए बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ उन्होंने गेंद को फेंकी थी, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। बल्लेबाज को रन इस गेंद पर नहीं मिला। अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर, गेंद को बोड़ा, शॉर्ट मिड विकेट पर मिसफील्ड, और गेंद इस वक्त जाती हुई डीप मिड विकेट पर, बैकअप होता हुआ वहां पर। जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। नॉट क्वाइट मिडलिंग इट एट द लास्ट मोमेंट, और जब तक गेंद को बैकअप किया जाता डीप मिड विकेट पर 2 रनों का इजाफा हो चुका है। 14 रन बच चुके हैं बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर, और सतीश गेंदबाज एक बार फिर से अपने अगली गेंद लेकर तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज निखिल इस वक्त सामना करते हुए, ये गेंद इस बार ऑफ से बाहर, खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला इस वक्त दोनों फील्डरों के बीच में से डीप कवर पॉइंट पर। जब तक फील्डर दौड़कर जाकर गेंद को फील्ड करे और थ्रो करे स्ट्राइकर एंड पर, बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। ऑफ स्टंप से बाहर की ओर गेंद निकल रही थी, गेंद पर अंतिम क्षण में बल्ला आया था, स्क्वायर ऑफ द विकेट। 2 रन बल्लेबाज इस दौरान पूर्ण कर चुके हैं, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर। दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर। सतीश एक बार फिर से तैयार निखिल के लिए, दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद चिप किया, इनफील्ड क्लियर करते हुए लंगोन सीमा रेखा की ओर गेंद बढ़ती हुई, और गेंद लंगोन सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। He just got that one right from the middle of the bat and loved that one in a style of Langon fans. देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था। गेंद एक टिप्पे के बाद आफ्टर फर्स्ट बाउंस सीमा रेखा को पार करके 4 रनों के लिए 20 रन बन चुके हैं, और कुल मिलाकर दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर, एक बेहतर प्रगति यहाँ पर करता हुआ फ्रेंड्स कुतार। और सतीश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए। अगली गेंद, ये गेंद ड्राइव किया, नॉट क्वाइट मिडलिंग गेंद, बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। सिली मिड ऑन पर गेंद को जब तक फील्ड किया जाता, 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका 21 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 2 ओवर की समाप्ति, 2 overs completed, 21 runs on the board, and friends Kuttara are now looking in a good situation. Exactly 10.5 runs per over they scored, 21 runs in their first 2 overs, and this is a really good going on here for them. Still in overall calculation it's going to be 4 overs remaining in the innings। 4 ओवर का खेल अभी भी बाकी है, और देखते हैं इन बचे हुए 4 ओवर के खेल में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। रंजीत गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए, और तीसरा ओवर शुरू होता हुआ इस वक्त फ्रेंड्स कुत्तार की पारी में। 21 रन बच चुके हैं पहले 2 ओवर की समाप्ति के बाद। 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध यहाँ पर हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है, और फील्डर इस वक्त धीरे धीरे मैदान पर छाते हुए, और रंजीत नया ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए। निखिल सामना करने के लिए तैयार। ओवर की पहली गेंद, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, स्वीप करना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइनल की दिशा में, रन नहीं मिलेगा। गेंद कुछ ज्यादा तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे, और आखिरकार रन्स बल्लेबाज को इस गेंद पर नहीं मिला। स्कोर बोर्ड रुक चुका है 21 रन बिना किसी नुकसान के। फिर से एक बार गेंदबाज रंजीत गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, निखिल सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार ड्राइव किया, नॉट क्वाइट मिड विकेट, इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक।
शॉर्ट मिड विकेट पर जब तक गेंद को फील्डर फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 22 रनों पर। इट्स 22 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट इन द ओवर नंबर 3rd इन प्रोग्रेस। ये दोनों बल्लेबाज एक बेहतर साझेदारी लगभग निभा चुके हैं आरंभिक विकेट के लिए और धीरे धीरे ये साझेदारी बढ़ती नजर आते हुए फ्रेंड्स कुत्तार के लिए त्यागराज और निखिल के बीच में। इस बीच गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद ड्राइव किया त्यागराज ने, खूबसूरत स्ट्रोक वाइड लॉन्ग ऑन पर, लेकिन नॉट मोर देन अ सिंगल। फील्डर वहां पर पहुंचते हुए और इससे पहले बल्लेबाज 1 रन दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। 23 रन 23 विदाउट लॉस, 3rd ओवर इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज रंजीत अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज निखिल के लिए। रन अप पे कुछ हद तक बाधा और एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 23 रनों पर बिना किसी नुकसान के। रंजीत अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद लेग से बाहर डिफेक्ट किया खूबसूरती के साथ, फाइन लेग सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। फुल टॉस गेंद पर अंतिम क्षण में बल्ला उड़ाया था और गेंद इस वक्त फाइन निकलती हुई शॉर्ट फाइन लेग फील्डर की दाईं ओर से निकल गई। देखिए किस तरीके से गेंद को इस वक्त गेंद पर बल्ला उड़ाया था और चौका यहां पर बल्लेबाज प्राप्त करते हुए और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 27 रनों पर। एक बेहतरीन प्रगति यहां पर करता हुआ फ्रेंड्स कुत्तार और निखिल एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार। रंजीत की गेंदों का दाहिना तो ओवर द विकेट, फुल टॉस, स्क्वायर ऑफ द विकेट, स्कूप किया गेंद को खूबसूरती के साथ। इज जस्ट लीनिंग फॉर दैट एट द लास्ट मोमेंट और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 28 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। तो जहां तक सवाल है इस ओवर का, तो इस ओवर में सिर्फ 1 गेंद अब बाकी और रंजीत अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। त्यागराज सामना करते हुए और 3 से 4 कदम उनका रनअप, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार त्यागराज के लिए नॉट क्वाइट मिड विकेट, गेंद को जगह बनाते हुए ऑफ साइड पर खेलना चाहते थे। बल्ले का अंदरूनी किनारा टकराने के बाद ऑन साइड पर स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद पहुंची, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया, फील्डर आगे की ओर आते हुए और इसी के साथ तीसरा ओवर यहां पर समाप्त हो चुका है। 3 overs completed, 29 on the board. They are looking in a good situation. Exactly. The present run rate 9.67 runs progressing here for them. Still they got all 10 wickets kept intact. और देखते हैं इन बचे हुए 3 ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। तो इससे पहले कि चौथा ओवर प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अंग्रेजी में सतीश को आगे का खुदे काल सुनाने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। Thank you very much, Gopi. And 29 is a very good score on the board for team Friends Kutar. And 29 without loss of any wicket after completion of three overs. The Tyagaraja and Nikhil, the left and right combination, really getting some damages, early damages from the bat of the bowlers of NFC. This time Tyagaraja tries that one firmly into the deep long on, boundary for 4 runs. When Tyagaraja hits the ball, hits it very firmly, and he was one of the clean striker of the ball. Again, that's nothing much wrong with that line. The batsman picking that quite right from the middle of the bat. There is a deep long on, there is a deep long off, but still batsman bowlers still that ball is traveling between that 2 fielders, because he hits that one straight down the ground, down to deeper, straight long on boundary for 4 runs. Both the fielders, just a spectator watching the ball going into the boundary line. 33 on the board. This time Tyagaraja going for the drive. This time a much better line there from the bowler Kiran. Just quickly learning from the mistake, and you know exactly what Tyagaraja will going to do here. And he need not to bowl to the slot. If he bowls to the slot, the Tyagaraja will going to hit the ball. And that's why he's just shortening the length and bowling a little bit outside the run of leg stump. This time Tyagaraja drives that one, lovely shot off the back foot this time. Tyagaraja is a very good striker of the ball, especially off the back foot. Using his all the muscles power what he has got, Tyagaraja.
and getting some extra timing and extra power because of his the well-built personalities. 34 without loss of any wicket in the over number 4 in progress. Kiran balls. Tickle. It's going to be one more opportunity, which is definitely going to be the missed out. It's not so easy because wicketkeeper and the bowler both are running towards a catch. Just I want to see it in a replay that Nikhil wanted to go for the mighty stroke, got a leading edge of the bat, and again bowler thought wicketkeeper will going to take the catch, and wicketkeeper thought it's going to be a bowler's catch. And by doing that, ball is landed safely between that two fielder. 35 without loss of any wicket. Kiran again. Right arm over the wicket bounce to Tyagaraja. Misjudgment of the line. It's definitely going to be well within the reach of that line. The Tyagaraja, once seeing that ball is outside the run of off stump, he thought it might be a wide. But the Kiran did a great job to ball that line. Just like I mentioned about, exactly after got the boundary in the first ball, the kind of line. This time inside out cricketing stroke. Glorious shot. Oh, that was a magnificent struck there from Tyagaraja off the back foot. That was a phenomenal cricketing stroke, isn't it? Just look at that one off the replay. Off the back, which is not so easy. Especially when you're playing in underarm cricket. That kind of cricketing stroke is so difficult. Because you never understand how the ball is coming to your bat. The uneven bounce is one of the difficult job for the batter to hit that kind of cricketing stroke. And Tyagaraja, once he get going, is absolutely unstoppable. Terrific cricketing stroke. Absolutely fabulous. And scoreboard now moves on to 39 for without loss of any wicket. Opening batters of Franz Kutar, all that making the damages here. The Tyagaraja started slowly, but Nikhil is the one who has started early. Some damages by hitting the ball. And then Tyagaraja joining the party. Of course, Tyagaraja hits first boundary, but after that, Nikhil hitting some boundaries. And the previous over, 2 boundaries, which just came from the bat of Tyagaraja. Both the batters are really anticipating very well in this particular partnership with a very good partnership, 39 runs for the first wicket. Bowler Prajit brought into attack, left arm round the wicket, starts with the wicket taking delivery. Nikhil too far across the line of the delivery, tried to swing that one. Maybe Nikhil is thinking about, of course, the wind which is passing in the direction of onside region. So he wanted to get that one towards the mid-wicket and square leg region. By doing that, he missing the line completely. And bowler not missing the opportunity here. Prajit to pick the big wicket. The partnership of 39 valuable runs at last comes to an end. There's a new batsman in. There's a batsman walking towards the middle, experienced campaigner for the side. Mahesh with the jersey number 04. Prajit is a successful bowler. (39) for the loss of 1 wicket. Working for the improvisation, but ball is really not came from the middle of the batter, off the batter Mahesh, but he able to get the single to rotate the strike. You know exactly Mahesh having Tyagaraja in the other end. His job is to pick the single and wanted to give the strike as much as possible to Tyagaraja. 40 for the loss of 1 wicket in the over number 5 in progress. Lot of changes in the field. There is deep backward square leg. There is a deep mid wicket. There is a deep long on. Deep long off is the deep cover point. The fielder for Tyagaraja. Prajit left arm. Round the wicket. Far outside and off time. This is what you call the pressure. When you're bowling to the batter like Tyagaraja, it's not so easy for the bowler to handle the pressure. 41 on the board. Prajit bows to Tyagaraja. Tyagaraja this time not really getting that from the middle of the bat, almost hitting the bat hard into the ground before ball coming to his bat, so that he didn't got enough timing in that stroke. Just a single. With the single score moves on to 42 for the loss of 1 wicket. Prajit bowls within the reach of the batter, little bit outside the line of leg stump, slight leg cutter, ball just coming around the legs of the batter Mahesh, and there is no chance at all for any run. Prajit
Oh, this time got behind chance, which missed out by the wicketkeeper. Harshit behind the stump. He's got a hand onto that. But after touching his hand, ball is just falling short of him, in front of him. And it might be the reason that he's not a regular wicketkeeper. And again, nicely balled, well capped. And Harshit is asking for square leg umpire for the result stump out. And umpire Mohan Eddy says not out. Rightly so, fantastic over. It's a very good over there from Prajvit. The first better over on behalf of NFC Urva, bowled by Prajvit. And we can see that. And in a present cricket, so many WhatsApp group operating the WhatsApp group, especially some groups are really doing a fantastic job. And first one I would like to say that Dakshina Kannada Underarm Balaga having all the updates of this cricket tournament. And thanks to the admin of this Underarm, Dakshina Kannada Underarm Balaga, Nasir Perla did a great job having 250 plus participants in that the group, getting all the updates and for the cricket lovers, and so many groups operating in social media. And one more group which is talking about Underarm cricket group, and in that also you can get some updates of the cricket tournaments, and especially the cricket lovers from the overseas countries, they're getting some information from that group where the venues of the cricket tournament and the tournaments, of course, so far in this season, everywhere there is plenty of cricket going on and a lot of golden opportunity for the players. This time inside out cricketing stroke, but set to the hands of deep cow point region. Tyagara's entertainment innings comes to an end. This time, after seeing the stroke of Tyagara in the previous over, the captain of NFC Urva keeping one fielder in the deep cow point region, the right position, and he's just tempting the boy batsman to go for the big shot. Lovely thinking there by the Kiran Ingane. Slight flighted delivered outside the line of off stump batsman, just getting the invitation from the bowler, lofted that one down to deep cow point region and not really getting the distance. The 42 for the loss of 2 wickets. We are talking about the group, some of the groups, DK Underarm cricket group, which is operated by Charan of JD Boys. This is also one of the very active groups, but more especially the one group which is made in the last LCC Cup, which is organized, and Shaukat Ali is doing a fantastic job in that Legends group and getting some former cricketers in that group, and outstanding some healthy chattings in this cricket, in that group about the olden days cricket, having some legend players in that group. Again, nicely swept that one down to square leg region for a single. With that single scope, and moves on to 43 for the loss of 2 wickets. Not only in the WhatsApp group, but even in the Facebook, we are finding some lot of Underarm cricket groups activated. But altogether, we need to see there's some healthy chatting. The admin of the every group need to be very careful, because he is the one who is controlling the group. And here is coming back for the second opportunity of run out. Mahesh looks like he is struggling, but that's why umpire Roland Pinto wanted to get the help from the third umpire to get the result. The Mahesh looks like when going to take the second run, he's almost struggling, but I want to see the wicketkeeper behind the stump, and he really did a great job. The Mahesh is out. He's out of a crease. The out, which is a call from third umpire Sri Raj. The wickets are tumbling here for Friends Kuttar. NFC Urva strongly back in this game. Some tidy overs, especially Prajvit bowled one tidy over.
And after getting the inspiration from Prajvit, Kiran also bowled, now bowling a good over. Just 2 runs conceded in 4 balls and 2 wickets fallen in this over. .44 for the loss of 3 wicket in the last over is in progress. Kiran, right arm over the wicket balls. This time drives that one down to long off region. They're looking for the second. In comes the throw from the deep. What excellent throw there from the fielder. Absolutely excellent throw. And now I think the batsman knows might be a short of a crease. Now it's going to be another run out. But that umpire referred for the third umpire again. The Sriraj will going to get the result. It's a 45 for the loss of 3 wickets. Now it's going to be very interesting. Naveen, can he able to survive from the throw? Very good pick up and throw from the field in the deep long off. The batsman Naveen running hard for the second run. But wait and see, well, he will going to be safe or not when the wheels are uprooted. Whether his bat is in the air or it is in the line. No, it's a bat is in the air. It's just short of his crease. Out call from umpire, third umpire. .45 for the loss of 4 wickets. Last delivery of their innings is coming up. A very good comeback here by NFC. Last ball. Dhanush is on strike. Pradeep is on strike. Rise that one. Going for the single. They will definitely come back for the second. No, they're not going for the second. And that's it. The over number 6 which is completed. And Franz Kuttar, the man has to score 46 for the loss of 4 wicket. Altogether, I want to say NFC, they're back strongly in this game by restricting the runs in the last final 2 overs. Prajit bowls well. Kiran also bowled the last over. The very good over, last good over. And altogether is the contribution which is came from Tyagaraja and opening batsman Nikhil. 18 and 17 runs which is scored by opening batters. And after the fall of wickets, Nikhil and Tyagaraja, the downfall starts. But still, it's a good score. I'm not saying that is the score which is underestimated, because you cannot underestimate the bowling department of Franz Kuttar. They got some variety of bowling there in their bowling department. The variety of the bowling departments in that, if in the sense they got some wicket taking overs, they got some over they can restrict the runs, so that I think NFC they need to work hard if they wanted to get 47 the winning runs, if they wanted to win this match in a stipulated 6 overs. 36 ball, 47 runs to win this match. The difference between run and ball exactly the 11. And if they wanted to reduce that difference, I want to say that the first over of the power play is going to be more important. .46 for the loss of 4 wicket. The over number 46 for the loss of 4 wicket after 6 overs. So 47 going to be target. Now time for Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you very much.
धन्यवाद सतीश। तो 47 रनों का लक्ष्य इस वक्त एनएफसी उरुवा के सामने फ्रेंच कुत्ता ने रखा है और एनएफसी उरुवा के दोनों आरंभिक बल्लेबाज मौजूद दर्शन और हर्षित, जबकि गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए धर्मा और उनकी पारी की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। 47 they have to score for victory in the stipulated 6 overs and their innings now going to start. First ball of their innings is now coming up. पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट, यह गेंद स्टीयर किया बैकफुट पर जाने के बाद शॉट थर्ड पान की दिशा में रन के लिए दौड़ पड़े, निशाना इस वक्त चूक चुका है और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका एक रन प्राप्त करने का। स्टीयर किया था ऑफ द बैकफुट अंतिम क्षण में और एक रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है एनएफसी उरुवा के लिए। एक रन 90 रन से नुकसान के निस्संदेह जहाँ तक 47 रनों के लंबे से लक्ष्य तक पहुँचने का सवाल है, इस वक्त उन्हें चाहिए एक बेहतर शुरुआत और खासकर अरबिक बल्लेबाजों को इस वक्त एक बेहतर साझेदारी यहाँ पर निभानी होगी दर्शन और हर्षित को। और इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को स्वीप किया, शॉट स्क्वायर की दिशा में गेंद पहुंची, वहां पर गेंद को फील्ड कर दिया गया, लेकिन इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का। तो एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के। धर्मा गेंदबाजी यहाँ पर शुरू कर चुके, अपने पहले 2 गेंदों में 2 रन वो प्रदान कर चुके हैं और अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार। दर्शन इस वक्त सामना करते हुए धर्मा गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए यह गेंद ऑन साइड पर खूबसूरती के साथ स्कूप किया है ऑफ द टोस, बैकवर्ड स्कोर लेग सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। लेग स्टंप पर आती हुई गेंद ऑफ द टॉस गेंद को स्कूप किया था इस वक्त खूबसूरती के साथ। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, किस तरीके से देखिए गेंद को उछाला था और बेहतर स्ट्रोक यहाँ पर, कोई प्रोटेक्शन रक्षणा मौजूद नहीं। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 4 रन इस वक्त हर्षित और टीम के खाते में स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 6 रनों पर। बीएस फॉल्कॉन बंदर ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ। ಬಿಎಸ್ ಫಾಲ್ಕಾನ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಡಳಿತ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಎಸ್ ಫಾಲ್ಕಾನ್ ಬಂದ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು। इस बार गेंद को उछाला ऑफ द बैक फुट 6 रनों के लिए। This is an absolutely effortlessly played by the batsman। मैं देखना चाहूंगा किस तरीके से यहाँ पर स्ट्रोक को उछाला था। देखिए यहाँ पर बैकफुट पर गए थे, खूबसूरती के साथ गेंद को उछाला स्क्वायर ऑफ द विकेट और वहां पर फील्डर मौजूद थे, लेकिन गेंद को लपकने में असफल। एफर्टलेसली इस गेंद को खेला था, कुछ ज्यादा ताकत उन्होंने नहीं लगाया था, टाइमिंग्स के साथ इस स्ट्रोक को उन्होंने उछाला था और छक्का इस वक्त प्राप्त करते हुए और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर। जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। धर्मा एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव करना चाहा, गेंद पहुंची शॉट स्क्वायर की दिशा में, रन के लिए दौड़ पड़े। 1 रन इस बीच बल्लेबाज को मिलेगा। जोखिम भरा रन यहाँ पर यशस्वीतम पूर्ण करते हुए हर्षित और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 13 रनों पर। जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। धर्मा एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार। पावर प्ले ओवर इस वक्त जारी, ये गेंद स्वीप करना चाहा, शॉट फाइन लेके दिशा में, रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित और यहाँ पर 13 रन बन चुके हैं। दूसरी चेतावनी, सेकंड वार्निंग गिवन टू द बॉलर टू एंटरिंग इनटू द डेंजर जोन और यहाँ पर दूसरी वार्निंग यानी चेतावनी दी गई अंपायर रोलैंड पिंटो द्वारा गेंदबाज को। तो पहले ओवर की समाप्ति आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर 13 विदाउट लॉस, they managed to score pretty good start for them after completion of first over। 34 more runs now they have to score for victory in remaining 5 overs and the required run rate is now coming down to exactly 6.80 runs per over at this situation। 34 रन चाहिए निर्धारित, माफ कीजिए बचे हुए 5 ओवर में विजय के लिए। और इस बीच गेंदबाजी शुरू करते हुए हमसे दूर वाले छोर से साई शक्ति एंड की ओर से गेंदबाज अश्वत गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। सामना इस वक्त करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज हर्षित और दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। अश्वत
ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, खूबसूरती के साथ गेंद को स्कूप किया इस वक्त 4 रनों के लिए, और गेंद को ऑफ द बैक फुट इस वक्त स्कूप किया था, स्क्वायर ऑफ द विकेट। खाली चलते चुनते हुए, खासकर ऐसा कहना पड़ेगा पावर प्ले का फायदा उठाते हुए, देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था, और गेंद इस वक्त कवर पॉइंट सीमा रेखा से बाहर हो चुकी है 4 रनों के लिए। तो इसी तरीके की बल्लेबाजी की इस वक्त जरूरत एनएफसी उर्वा को, अगर उन्हें 47 रनों के लक्ष्य तक अगर पहुंचना है तो 17 रन बन चुके हैं, अब 30 रन चाहिए, गेंदें बाकी हैं 29। 30 रन रिक्वायर्ड इन रिमाइनिंग 29 डिलीवरीज, और रिक्वायर्ड रन रेट 6 से कुछ ऊपर इस वक्त आकर रुक चुका है। और गेंदबाज अश्वत्थ गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद स्वीप करना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई और गेंद लगभग वहां पर रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। स्कोर रुक चुका है 17 रनों पर बिना किसी नुकसान के, 17 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। This is really a good going on here for NFC Urva, and once again here they comes, right arm over the wicket bowls। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार, this is a bigger one, it's a huge one, 6 runs into the account of the batsman, और इस छक्के के साथ अपने इरादों को और बुलंद कर चुके इस वक्त बल्लेबाज हर्षित। देखिए किस तरीके से गेंद को इस वक्त उछाला था, जस्ट गॉट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एंड लफ्ट दैट वन इन स्टाइल ऑफ अ लॉन्ग ऑन फेंस फॉर अ ह्यूज वन। द स्कोरबोर्ड इज नाउ राइजिंग अप टू 23 नाउ विद दैट 6, और एनएफसी उर्वा इस वक्त बुलंदियों पर नजर आता हुआ, दे आर लुकिंग राइट ऑन टॉप एट दिस सिचुएशन। और इस वक्त हर्षित लुकिंग ऑन फायर, ही इज बैटिंग ऑन 22 इंक्लूडिंग 2 सिक्सेस एंड 2 बाउंड्रीज, और 22 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर वो इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। अश्वत्थ गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, हर्षित इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और अश्वत्थ अपनी ओर की अगली गेंद दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद अच्छी गेंद थी, बेहतर ऑफ स्टंप से कुछ ज़्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रही थी, लगभग ज़मीन के सहारे, और गेंद को फील्ड कर लिया विकेट कीपर ने, विकेटों के पीछे रन्स इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 23 रनों पर, 23 विदाउट लॉस। द स्कोर स्टेज एट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस इन द इनिंग्स। अश्वत्थ हर्षित के लिए अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, यह गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद पहुंची वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, और इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 24 रन बिना किसी नुकसान के, 24 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर, बल्लेबाज इस वक्त दर्शन अंपायर से गार्ड लेने के बाद सामना करने के लिए तैयार। अश्वत्थ की ओवर की अगली गेंद का फील्डिंग का मुआयना इस वक्त करने के बाद सामना करते हुए इस वक्त अश्वत्थ गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, एक हाथ से गेंद को खेला रिवर्स शॉट के जरिए, लेकिन फील्डर को प्राप्त करते हुए गली पर, लेकिन एक रन लेने का मौका जरूर था बल्लेबाज के पास, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर, 25 विदाउट लॉस। After completion of 2 overs, they are looking in a commanding situation. 22 runs more. Now they have to score for victory in remaining 24 deliveries. With a required rate of exactly 5.5 runs per over at this situation, the equation seems to be much easier for them. और काफ़ी लंबी बातचीत यहाँ पर चलते हुए फील्डरों के बीच में फ्रेंड्स को तार के कि अगला ओवर किसको दिया जाए, और एक बेहतर स्कोर उनके बल्लेबाज बनाने के बावजूद उनके गेंदबाज पहले 2 ओवर में 25 रन देने के बाद सहज रूप से इस वक्त दबाव उनके गेंदबाजों के ऊपर दिखाई देता है। बातचीत इस वक्त जारी है, और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। काफ़ी लंबी बातचीत के बाद इस वक्त गेंदबाजी की जिम्मेदारी किसके हाथों में सौंपी जाएगी देखना पड़ेगा। आज शनिवार वर्किंग डे होने के बावजूद दर्शकों से लगभग मैदान यहाँ पर भर चुका है, और भरनी भी चाहिए, क्योंकि एक बेहतरीन प्रतिष्ठित प्रेस्टीजियस क्रिकेट श्रृंखला युवरत्ना ट्रॉफी 2023 की शानदार प्रगति यहाँ पर होती हुई, जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया टीम फॉर्च्यून मैंगलोर में,
दिवंगत पावर स्टार पुनीत राजकुमार इनकी मधुर याद में दूसरे साल इस श्रृंखला का शानदार तरीके से आयोजन किया गया है टीम फॉर्च्यून मैंगलोर द्वारा। और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा ये श्रृंखला, ये टूर्नामेंट एक शानदार प्रगति यहाँ पर करते हुए। गेंदबाज नितिन, द बॉलर इज नाउ ब्रॉट इनटू द अटैक। और 2 ओवर के खेल के बाद फील्डिंग के प्रतिबंध यहाँ पर हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है, फील्डर इस वक्त मैदान पर छाते हुए। और गेंदबाज नितिन गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। दर्शन सामना करने के लिए तैयार। दाहिना हाथ ओवर द विकेट, पहली गेंद। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, बल्ले का भीतरी किनारा टकराई, गेंद शॉर्ट फाइनल की दिशा में पहुंची, 1 रन का इजाफा। He's got an inside edge on that at the last moment और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर, 26 विदाउट लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द 3rd ओवर इन फैक्ट। और इस बीच हर्षित स्ट्राइक पर आ चुके हैं, 22 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर वो बल्लेबाजी करते हुए निस्संदेह काफी आक्रामक रवैया वो यहाँ पर अपनाए हुए हैं। और देखना यह है कि नितिन के गेंदबाजी के खिलाफ वो किस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर अपनाते हैं। और नितिन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद हर्षित के लिए उछालना चाहा, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद लगभग जमीन के सहारे, गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में पहुंची और स्कोर रुक चुका है 26 रनों पर। BS ಫಾಲ್ಕಾನ್ ಬಂದರ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಟೀಮ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು BS ಫಾಲ್ಕಾನ್ ಬಂದರ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ये गेंद रिवर्स शॉट, फाइन, गेंद को खेला इस वक्त 3rd मैन पर, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, डीप 3rd मैन सीमा रेखा के अंदर गेंद को फील्ड किया जाता, रनआउट का खतरा, लेकिन यहां पर रनआउट का मौका गंवाते हुए विकेट कीपर अंतिम क्षण में गेंद को गैदर करने में सफल और 2 रन यहां पर जुड़ता हुआ उनके खाते में। और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 28 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 3रा ओवर यहां पर प्रगति पर रन आसानी के साथ इस वक्त बनते हुए कुल मिलाकर 21 गेंदे अब उनकी पारी में बाकी, 19 रन और चाहिए विजय के लिए। 19 more runs now they have to score for victory in remaining 21 deliveries. गेंदबाज की गेंद इस बार उछाला गेंद को, not quite middling it at the last moment, but he got a single for that. Slight fumble there. In fact, the batsman looking for the second, but won't get it. दोबारा तेजी के साथ संभलते हुए जब तक गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर अब पहुंच चुका है 29 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 29 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस, 18 टू गेट नाउ फ्रॉम रिमेनिंग 20 बॉल्स। और फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ खेला, लेकिन फील्डर डीप बैकवर्ड 3rd मैन पर मौजूद, सिर्फ 1 रन उनको मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 30 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 3रा ओवर यहाँ पर प्रगति पर, अभी भी 1 गेंद बाकी, इस ओवर में 17 रन चाहिए, 19 गेंदे बाकी। लक्ष्य कुछ हद तक आसान इस वक्त नजर आता हुआ NFC उर्वा के लिए। गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद, ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती है, स्टंप्स को कवर किया, गेंद को इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग फील्डर के हाथों से मिस फील्ड और इस बीच 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 22 का इशारा, 3 overs completed, so after 3 overs they are looking in a commanding situation. 31 runs scored by NFC Urva after the completion of 3 overs. 16 to get now in remaining 3 overs, that means in 18 balls with a required run rate of exactly 5.34 runs per over। और देखते हैं इन बचे हुए 3 ओवर में किस तरीके की गेंदबाजी अपनाते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स कुत्तार के गेंदबाज कम बैक करने के लिए। तो इससे पहले कि अगला ओवर प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित तक करना चाहूँगा आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए अंग्रेजी में सतीश को। धन्यवाद, थैंक यू। So thank you very much, Gopi, and what an outstanding reply coming from the opening batters of team NFC Urva, and they're playing with the home condition, but Arshit is dominating, isn't it? Outstanding batting display,
and one of the best innings so far in this tournament. And from Ashit, he will go into face, but job which is not yet over. Still they have to get another 16 runs in remaining 18 balls. And the bowler from the far end going to be a Jagadish, I think so. Is a bat bowler brought into attack from the far end. The needed 1 wicket here if Prince Kuttar wanted to back into this game. The needed 1 wicket. Otherwise, it's very difficult for NFC Urua to back into this game. So 31 without loss of any wicket here in over number 4th in progress. Right arm over the wicket, rise that one, not really getting that much of timing behind the stroke. Just a single here for Ashit, 32 for the loss of without loss of any wicket. Pradeep is a bowler, little bit correction in the name. It's not Jagadish, it's a Pradeep. The Jagadish, little bit correction. So Jagadish is a bowler. Right arm over the wicket. We are going for the safe shot, improvising cricketing stroke what Darshan wanted to do. But just look at the Darshan's score. He got only 4 runs out of the 32 runs. But all the domination from Ashit. Hitting 2 massive sixes, 2 boundaries. An outstanding batting performance from Ashit. But Pradeep, Jagadish is the one who can be the very effective. Lovely delivery indeed. This is what kind of overs badly required for Prince Kuttar. Now slowly the bowler started to get some rhythm. Jagadish from the far end has been introduced by the captain of the side. Maybe the captain of Prince Kuttar is not interested to bring the bowler who can give the flight in the delivery because of the nature of the ball, which is very hard in the nature. So that I think the bowler likes Pradeep Jagadish to introduce is always going to be asking for trouble. If he bowls the short pitch delivery, batter will going to get the big shots. But here is the captain playing the gamble and bringing Jagadish to come and ball and get some the wickets for his team. This time again, one more dotted delivery. Very good comeback here by the bowler. Now something is going in the mind and even in the stomach of the batter Darshan. After playing 3 dotted deliveries, now even they played a dotted delivery, but asking run, that's first time that has cost 7 runs per over. The 32, which is the total score, 15 more runs required for the victory. Last ball remaining in this over. That means remaining 13 balls, they have to get another 15 runs to win this match. The first time, it looks like it's the ball winning the race, run winning the race against the ball. Jagadish so far looking so good. Bowling right arm over the wicket. Bowls to Darshan. Darshan went for the big shot. Drives that one straight to the answer field. A chance of run out, but Mahesh missing the stumps. Batsman survive. And very good over is comes in India from Jagadish. Outstanding over under pressure. The scenario is the same. I want to tell you, the same thing is happened for Prince Kuttar when they're going very well with some very good hittings from Nikhil as well as the opening batsman Tyagiraj. And the last 2 overs, NFC were really back strongly. And here also, after getting a very good start, now Prince Kuttar wanted to bounce back in this over. 33 on the board and 15 more runs required for the victory. Correction, yes, 14 more runs required for the victory in 12 balls. And most interesting thing to see here is that the Ashit is out of the strike. Ashit is out of the strike and Darshan is on strike. If in this particular over, if Prince Kuttar bowls another good over, then it's going to be a very interesting match. A lot of spectators watching this fantastic game of cricket. It's a very good contest between the NFC Urva, the local teams playing with their home condition and in front of their home crowds. Even Prince Kuttar also got some very good supporters behind them.
One of the biggest of all is watching here is that Ganesh Pujari down at behind the wicket keeper. The Ganesh Pujari is one of the big supporter of Friends Kuttar, who is watching very interestingly. The 34 on the board, 13 more runs required for the victory in just 11 balls. Along with Ganesh, you are observing some face. Hari, one more, the supporter of cricket, Hari Prasad, and Pachu, Prashant of Young Friends. This time he lofted and said, today is unstoppable. You can't stop this man from the big hits. What a huge stroke. One of the biggest sixers of this tournament. My goodness, look at that one in the replay. High and handsome, and ball travels out of the park. Maybe the ball just missing to enter into the Hari Prasad Hotel behind the commentary box. What a magnificent strike. Absolutely magnificent, isn't it? I'm just talking about this man, Arshit. The man who is very good in performing both in underarm and overarm cricket. The very difficult ball for this man, and the bowler has been punished. Nitin, right arm over the wicket, bowls this time, swings it hard down to square leg region, and good fielding there by the fielder. That six will really release the pressure, a relief here for the batter. 41, 6 to get. 6 to get from 9 balls. Nitin, right arm over the wicket, bowls to Darshan. Darshan was sweeping the ball nicely, but the protection has been given in the deep, so that batsmen have to settle for the single. Jagadish, the fieldsman there in the deep, long on, and Jagadish just thinking about if the bowlers restrict the runs, I can bowl last over. If it is a 4 runs and 5 runs required for the victory, of course now it's a 5 required for the victory. If the bowler bowled 2-3 dotted deliveries, I can get the match into the favour of Friends Kuttar. But here he is, going for the run. And oh my goodness, what the wicketkeeper is doing there, Santosh. Absolutely absence of mind from Santosh. This is what you call, you can't do this, wicketkeeper, because he started to blame the fielder, isn't it? He's just going for the blame. He's only concentrating about the blaming the Nikhil. Why you're throwing like that? But you're not watching that field. The batsman is still out of the crease. Still a lot of time. The 5 to 7 seconds is wasted by blaming that fielder. And that time the batsman Darshan back to his crease. Absolutely absence of mind there from Santosh. There's 4 runs required for the victory. 7 balls remaining. Looking for the improvisation. This time he's going for the run. Again, this time Santosh. This time Santosh is not blaming the bowler here, but he's just blaming himself. Why I did that one? The previous throw, run out chances. But I think that the Russian is not doing a good job here. His job is to just get a single, a simple single here. But he's just pushing the ball into the hands of the bowler and going for the run. And now this match is going to be very interesting here. 4 runs required. Last over remaining. Arshit back on strike, so that is going to be a good news here for the NFC Uruva. Ranjit is a new batsman and is walking towards the middle. One more fantastic all-rounder, Ranjit. He loves to handle the pressure. But here is going to be a good contest. But we really wait and see. So Jagadish, the magician, absolutely bowled fantastic over the previous over. Can he will going to do the magic? In the previous over, he restricted the batsmen for just 2 runs of the opposition. Now he's depending on 4. But he's not bowling to Darshan, but he's bowling to Arshit. And that's what's the main problem here, is the bowling to Arshit, the man who really have a lot of damage from the bat for the opposition. 4 to get.
This time improvising nicely down to deep backward square leg region for a single, almost in the final leg region in fact. And Ashit is off the strike. Ranjit back on strike. 5 balls remaining. 3 runs required for the victory. And umpire asking Ashit to go back because of the shortage of time. They're not having enough time. Now I want to see the field set. The closing fielder Tyagaraj is coming close to the batsman. Silly mid off. Short cover point, unorthodox. Short third man, unorthodox. Short fine leg. Short mid wicket. Deep long on, deep mid wicket. This time went for the safe shot. Half-hearted shot for the leg before wicket. Umpire says it's from the bat, not from the leg. And with that, singles cover was on to 45. 2 runs required. 4 balls remaining. 2 very good deliveries badly required. The wicket-taking delivery definitely going to take this match more interesting. Ashit, after doing such a good job, he doesn't want to miss the opportunity to get the winning runs for his team. 2 to get. 4 to go. Went for the big shot. Missed it completely. Now, pressure. Even Ashit got a lot of runs from his bat. But now he's just started to feel the pressure because he's facing a different bowler. The cutter bowler. 3 to get from 2. 2 will go into 2 to get from 3. And 1 will go to make the tie. And that I think going to be quite enough. The 1 runs. Again, now opportunity, but Naveen and the wicketkeeper behind the stump misses it completely. No signal from the umpire. That means ball got outside edge of the bat of Ashit. Scores are level. If the match will go into tie, and NFC Roa will go into win this match because of the fall of wickets. This comes into play. Going for the sweep shot, they're going for the run, and that's a winning run here for the team. And the ball definitely going to miss the leg stump because of the turn of the delivery. And Jagadish still arguing, but I think it's not enough because if the wickets are fallen, might be it's a ball that Friends Kutar definitely no chance to winning this match because of the fall of wickets. And they lost 4 wickets and 5 wickets in fact, but they lost only 1 wicket. And fantastic chasing here from NFC Urua. Very good matches. A match which is comes to an end. Thank you very much each and everyone. Special thanks to the very good spectators out here in this UCG cricket ground enjoying the game of cricket. The man of the match is undoubtedly that one-man army. Ashit played his innings of his life, and the cricket lovers and NFC Urua and himself, he will going to remember this match for a long time. It's been outstanding innings. One of the highest individual score of this tournament, and Ashit has got 37 valuable runs. Now you can see the highlights of that match in the live telecast, and most probably the second inning is going to be more entertainment because of the batting performance of Ashit. We'll take a short break. Thank you very much. After a short break, we're back right in front of you along with my friend Mr. Gopi. Thank you very much.
So man of the match of this match, the award goes to the batsman who batted brilliantly, scored unbeaten 37 runs. And because of his help, NFC Urva reached the target with just 2 balls to spare for his fantastic knock of 37, no doubt. Harshit of NFC Urva backed the man of the match award. I request Mr. Roland Pinto to please hand over the trophy to Mr. Harshit for his wonderful batting performance of 37 not out for NFC Urva, and because of his help NFC Urva registered a thrilling victory against Friends Kuttar. So congratulations for Harshit and best of luck for the rest of the tournament. And now I request the captain of Friends Kuttar, please come on to the stage and receive the memento from the organizer. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಂಘಟಕರಿಂದ ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಯುತ ರೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋ ಇವರಿಂದ ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಹೂದಾನಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಮಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ತಮಗೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 5 ಆಫ್ ಟುಡೇ. So team matrix after won the toss, they elected to field first against BS Falcon Bandar, and the match is now coming up live and exclusively right in front of you within just a short while, and I request all the players of these two teams to please start the match immediately.
BS ಫಾಲ್ಕಾನ್ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ದಯವಿಟ್ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ 12th player extra player of BS ಫಾಲ್ಕಾನ್ ಬಂದರ್ to please report to the stage immediately to tell the player's name. धन्यवाद सतीश. So the match number 5 of the day 2 of Yuvaratna Trophy 2023 is now coming up between BS Falcons Bandar versus Team Matrix. The first match of the second round of this pool, and Team Matrix have won the toss. They elected to field first, and because of that their fielders are now spreading out on the field, spread out on the field, and the openers for Falcon are Tasleel and Safwan, the openers. Meantime the bowler is Tasleem. And the first ball of the fresh over is now coming up. और पहले गेंद लेकर तस्लील के लिए गेंदबाजी शुरू करते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए तस्लीम दाहिने हाथ ऊपर द विकेट. ये गेंद बैकफुट पर गए, गेंद को खेला इस वक्त शॉट कवर पर, नॉन स्ट्राइक रन पर खतरा. इस बार के रन आउट हुआ या नहीं देखना पड़ेगा. और तस्लीम के हाथों से गेंद चूक चुकी थी, लेकिन अंतिम क्षण में उन्होंने शायद विकेट चटकाए अपने हाथ से, तो गेंद को गैदर करने में वो असफल, और अपने दूसरे प्रयत्न में गेंद को गैदर करते हुए विकेटों पर लगाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए. अपने हाथों से विकेट गिराए और इस बीच बल्लेबाज अपने क्रीज पर वापस लौट चुके हैं. तो अपनी पहली ही गेंद पर बल्लेबाज यहाँ पर बच चुके हैं और स्कोर है इस वक्त 0 पर. रन्स रुक चुका है. पहला ओवर इस वक्त शुरू हो चुका है और तस्लीम, जहाँ तक तस्लीम का सवाल है, पिछले मैच में उन्होंने मैन ऑफ द मैच का खिताब अर्जित किया था बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाजी के लिए. और यहाँ पर
गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, plumb absolutely plumb in front, there is no doubt about that. The ball hitting to his back leg at the last moment, and umpire Siraj have no hesitation to rule him absolutely plumb in front. The ball pitched on the line, concentrated to the middle stump, और आखिरकार सीरज को कोई दिक्कत यहाँ पर महसूस नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में। तो इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है और तस्लीम के खाते में पहला विकेट जाता है। 0 पर पहला विकेट खो चुका है इस वक्त बीएस फॉल्कॉन्स। 0 पर 1 विकेट। इट्स नॉट फॉर 1 इन द फर्स्ट ओवर। तो तस्लील का विकेट यहां पर गिर चुका है और उनका स्थान ग्रहण करते हुए नंबर 3 बैट्समैन इमरान इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और वो इस वक्त स्ट्राइकर एंड की ओर कदम बढ़ाते हुए और सामना करने के लिए तैयार तस्लीम की ओर की अगली गेंद का। तस्लीम फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहां पर करते हुए लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ बिल्कुल सीधा इस वक्त तैनात दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, जबकि 7 खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद और ओवर की अगली गेंद लेकर तस्लीम इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए लॉन्ग ऑफ थोड़ा सा वाइडर इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज इमरान के लिए, जबकि लॉन्ग ऑन कुछ हद तक सीधा स्ट्राइटर इस वक्त मौजूद ठीक सीमा रेखा के पास। तस्लीम अपनी ओर के अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाह चुके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर ने आगे की ओर आकर गेंद को फील्ड कर लिया। रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 1 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू हो चुका है और एक बेहतर रन लेंथ और लाइन के साथ तस्लीम में इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, इस वक्त जगह बनाते हुए गेंद को खेला, सीढ़ी मिडाउन पर गेंद पहुंची और इससे पहले की गेंद को थोड़ी सी मिसफील्ड के बाद दोबारा फील्डर फील्ड करे। बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। इमरान और बीएस फॉल्कॉन का खाता इस 1 रन के साथ खुल चुका है। 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर और जहाँ तक सवाल है इस वक्त फील्डिंग में कुछ हद तक तब्दीली करते हुए स्ट्राइक पर इस वक्त आ चुके हैं सफवान जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और तस्लीम अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, अंदर की ओर आती हुई गेंद को इस वक्त खेला शॉर्ट मिड विकेट पर। स्वयं गेंदबाज गेंद तक पहुंचे लेकिन 1 रन बल्लेबाज को लेने से नहीं रोक पाए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। निस्संदेह एक बेहतरीन शुरुआत की इस वक्त सख्त ज़रूरत बीएस फॉल्कॉन्स को, अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है तो तस्लीम गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए अब तक उनका ये बेहतर ओवर साबित हो चुका है। अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को चिप किया, गेंद पहुंची लॉन्ग ऑन की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल और इस 1 रन के साथ कुल स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका 3 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 3 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट और एक बेहतरीन ओवर यहां पर तस्लीम का समाप्त हो चुका है। सो आफ्टर फर्स्ट ओवर आफ्टर बीइंग लूजिंग द टॉस एंड पुट इट टू बैट बाय बीएस put it to bat by team metrics. BS Falcon made a mixed start, in fact slower start for them. 3 for the loss of 1 wicket after completion of first over they scored and still in overall calculation it's going to be 5 overs remaining in their innings। 5 ओवर का खेल अभी भी बाकी और देखते हैं इन बचे हुए 5 ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। गेंदबाज कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से गेंदबाजी शुरू करते हुए यहाँ पर निजाम इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार इमरान। दूसरा पावर प्ले ऊपर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ और गेंदबाज निजाम फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। राइट हैंडेड बैट्समैन इज नाउ गोइंग टू फेस इमरान और
गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद, ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, गेंद पहुंची शॉट फाइन लेग की दिशा में, थोड़ी सी मिसफील्ड, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 22 का इशारा अंपायर का और 22 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। Runs are hard to come by at this situation for the batsmen of BS Falcons, और एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए गेंदबाज टीम मैट्रिक्स के, और इस बार इमरान ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं। सफान सामना करने के लिए तैयार निजाम की गेंदों का, दाहिने हाथों पर विकेट निजाम इस वक्त गेंदबाजी करते हुए सफान के लिए, ये गेंद ड्राइव किया सफान ने, लेकिन पॉइंट पर गेंद पहुंची, रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। इससे पहले कि पॉइंट फील्डर गेंद को फील्ड करने के बाद लौटाए विकेट कीपर के हाथों में गेंद को। हालांकि जैसे ही स्ट्रोक सफान ने खेला था, नॉन स्ट्रोक हैंड से बल्लेबाज इमरान दौड़ पड़े थे, फलस्वरूप उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं हुई आखिरकार 1 रन पूर्ण करने में, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर, फिर से एक बार निजाम गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, गेंद पहुंची वाइड लॉन्ग ऑफ पर, और जब तक फिर से गेंद को वहां पर फील्ड करे फील्डर, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। तो रन इस वक्त सिंगल्स के रूप में बनते हुए, और निस्संदेह यहाँ पर एक बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन जारी रखता है टीम मैट्रिक्स की गेंदबाज, तो अपनी अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिना तो बढ़ता विकेट, ये गेंद चिप किया स्क्वायर ऑफ द विकेट, गैप चुनते हुए गेंद जाती हुई एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा की ओर, और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त लग चुका है सफवान के बल्ले से, थोड़ी सी विड्थ थी, देखिए किस तरीके से इस वक्त खेला था, और इस विड्थ को कबूल करते हुए गेंद को इनफील्ड क्लियर करते हुए उछाल दिया खूबसूरती के साथ, डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के सीढ़ियों पर जाकर गेंद टकराती हुई 4 रनों के लिए। तो इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 10 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 10 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। निजाम पहली बार इस ओवर में कुछ हद तक ढीली गेंद फेंक चुके हैं, पिछली गेंद पर चौका वो प्रदान कर चुके अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद टिप किया इनफील्ड क्लियर करते हुए लंगोन सीमा रेखा की ओर गेंद बढ़ती हुई, और गेंद लंगोन सीमा रेखा को पार कर चुकी है 6 रनों के लिए। थोड़ी सी उछाल एक्स्ट्रा बाउंस जिसे कहते हैं अंतिम क्षण में गेंदबाज ने प्राप्त की, लेकिन बल्लेबाज इस उछाल को उन्होंने पहले ही पहचान लिया था, गेंद को उछाला था काफी उम्दा काफी ऊंचा, और गेंद में इतना पर्याप्त दम था कि गेंद सीमा रेखा को पार कर सके छक्के के लिए। तो इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 16 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 16 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। गुड प्रोग्रेसिंग हियर आफ्टर बीइंग अ स्लोवर स्टार्ट फॉर बीएस फॉल्कॉन बंदर। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो निजाम इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो बढ़ता विकेट, ये गेंद ड्राइव किया नॉट क्वाइट मिड विकेट, 1 रन मिलेगा। शॉर्ट मिड विकेट पर फील्डर गेंद तक पहुंचे, लेकिन 1 रन बल्लेबाज को लेने से नहीं रोक पाए, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक बेहतर ओवर अगर बीएस फॉल्कॉन बंदर के पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण से देखा जाए, जो कि समाप्त हो चुका है, जिसमें 14 रन बने, 14 रन स्कोर्ड इन दिस ओवर। आफ्टर 2 ओवर दे आर लुकिंग इन अ कमांडिंग सिचुएशन। 17 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर्स फॉर बीएस फॉल्कॉन्स बंदर। तस्लीम starts the fresh proceedings from that side end, और साई शक्ति एंड की ओर से इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए तीसरा ओवर शुरू होता हुआ बीएस फॉल्कॉन्स बंदर की पारी में, और पहली गेंद लेकर तैयार। स्ट्राइक किस वक्त लेते हुए सफान 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। नई ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए तस्लीम, ये गेंद इस बार पहले गेंद बैकफुट पर जाने के बाद गेंद को इस वक्त खूबसूरती के साथ खेल दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 18 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 3rd ओवर फॉर बीएस फॉल्कॉन्स बंदर। और फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए
तस्लीम दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, गेंदबाजी करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद स्वीप किया खूबसूरती के साथ, स्टंप्स को कवर करने के बाद घुटनों के बल बैठते हुए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में और एक रन प्राप्त करने में सफल। और एक रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर, एक विकेट के नुकसान पर। 19 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। एक बेहतर प्रगति यहां पर करता हुआ बीएस फॉल्कॉन्स एक धीमी शुरुआत के बाद खासकर पिछला ओवर उनके लिए बेहतर रहा जिसमें 14 रन बने और उस ओवर की बदौलत वो इस मैच में वापस आ चुके हैं। ये गेंद इस बार गेंद से ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, नॉट क्वाइट इंडिकेटेड द लास्ट मोमेंट, लेग बाई का इशारा अंपायर द्वारा और लेग बाई की रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर, एक विकेट के नुकसान पर। 20 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और तस्लीम अपनी ओर के अगली गेंद फेंकने के लिए इस वक्त तैयार। इमरान स्ट्राइक लेते हुए इस वक्त दाहिने हाथ ओवर द विकेट, यह गेंद चिप किया इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए और इसी के साथ यहां पर इमरान की पारी समाप्त हो चुकी है। गेंद को उछाला था जरूर लेकिन प्लेसमेंट कुछ खास सही नहीं और गेंद इस वक्त लपक ली गई लॉन्ग ऑफ फील्डर के आते हुए। देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था इस वक्त, हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, और लॉन्ग ऑफ पर इस कैच को लपक लिया गया बेहतर तरीके से फील्डर द्वारा। तो दूसरा विकेट गिर चुका है बीएस फॉल्कॉन्स का, जबकि स्कोर है इस वक्त 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 20 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। So Mubarish, the number 3 batsman is now comes out to the middle और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार तस्लीम की गेंदों का। 2 विकेटें अब तक तस्लीम प्राप्त कर चुके हैं। एक सफल गेंदबाज इस वक्त अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद पहुंची इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 21 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर यहां पर प्रगति पर, 3rd ओवर इन प्रोग्रेस एंड 21 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट फॉर बीएस फॉल्कॉन्स। बंदर जोड़ चुका है और गेंदबाज फिर से एक बार गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए तस्लीम दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया बैकफुट पर जाने के बाद, नॉट क्वाइट इंडिकेटेड द लास्ट मोमेंट। ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 21 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट स्कोर्ड बाय द बैट्समैन ऑफ बीएस फॉल्कॉन्स बंदर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स एंड 4 रन्स कंसीडर्ड बाय तस्लीम। और एक बेहतर स्पेल उनका समाप्त हो चुका है जिसमें 2 ओवर में सिर्फ 7 रन उन्होंने प्रदान किए और 2 महत्वपूर्ण सफलताओं को अर्जित तक करने में सफल। तो 3 ओवर का खेल अब बाकी है उनकी पारी में और देखते हैं इन बचे हुए 3 ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। तो इस वक्त गेंदबाजी संभालते हुए गेंदबाज रऊफ इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और जहां तक सवाल है 4था ओवर उनके पारी का यहां पर शुरू होता है। 21 for 2 आफ्टर 3 ओवर्स और इससे पहले कि 4था ओवर पर माइक्रोफोन पर आगे का आंखों देकर सुनाने के लिए अंग्रेजी में आइए सतीश। धन्यवाद। So thank you very much, Gopi. So lofted that one, not quite getting hold of that one properly, and he's just finding the fielder in the deep wideish long off. One more wicket is back, first wicket, the 3rd wicket is back into pavilion. 21 for the loss of 3 wicket, and Rauf got his first wicket in his deliver number 1. So important breakthrough here for Team Matrix, and the team definitely wanted to get the breakthrough here. They wanted to restrict the flow of the runs. The match between BS Falcons Bandar versus Team Matrix, and so far Bandar getting the runs, but at the same time they're losing a wicket. So 21 for the loss of 3 wicket, but
the hero of the previous match, Safwan, still there in the middle and just continuing his performance. What is left in the previous match is also continuing in this match as well. Scored valuable 14 runs with the help of one boundary and a 6. And we will see how long we will go to carry this business. Of course, if BS Falcons Bandars wanted to get some good score, I think Safwan at least have to stay in the middle for 5th or 6th over. And Rauf got a breakthrough, is a successful bowler, bowling right arm over the wicket. Shabir. Shabir this time pushing the ball. Intelligent cricket there from Shabir, saying that subtle batsman out there in the other end, his job is to pick the single and gives the strikes to Safwan. And Safwan is now back on strike. 22 for the loss of 3 wicket in the over number 4 is in progress. Rauf bowling away from us. Right arm over the wicket bounce. Batsman drives that one. Again, just a single. The good line maintained there by Rauf in the negation. Not really let the batsman to get any kind of big shots. Team Matrix knows that they're playing against BS Falcons and they need to restrict the runs. BS Falcons played a very good game of cricket in the morning against their neighbouring team, Kudrol Young Boys. This time straight to the hands of short mid-on. One more wicket is back into pavilion. This time Shabir wanted to clear the infield, but the ball went straight to the hands of the fielder at short mid-on. A little bit outside the line of off-end batsman, almost tried to play across the line to get the placement over the top of that mid-on fielder. But unfortunately, that ball went to the hands of short mid-on. One more wicket is back into pavilion. It's a 23 for the loss of 4 wicket in the over number 4 in progress. Shahrukh is a new batter in. The Shahrukh is a left-hand batter, is a very good stylish player, and wait and see how he'll going to contribute from the bat. He came as a number 5 batter, having Safwan in the other end, but Rauf has got a 2 valuable breakthrough for Team Matrix. When the things are going very nicely for BS Falcons, this man really putting some pulley stop for the flow of the runs. This time tries that one. Shahrukh firmly down to widish long on region. The protection has been given in the deep, but still both the batters are quite comfortably completed a couple of runs. With that couple of runs, Koban moves on to 23 for the loss of 4 wicket in the over number 4 is in progress. Outstanding cricket tournament is organized here by Team Fortune in the name of Yuvaratna Trophy 2023 season 2 in fact. And Rauf again. So far it's a quiet over to Shahrukh. Shahrukh chipped that one over the head of Taslim down at short extra cover before he's run back towards the deep extra cover region. Ample time for the batter to complete that couple of runs. With that couple of runs, Koban moves on to 27 for the loss of 4 wicket. Very good over. Comes in and off. It's a wicket taking over. And 4 completed, it's 27 for the loss of 4 wicket. Innings defeat. So news from Vidarbha Stadium, Nagpur. The first test match going between India versus Australia. Australia struggling in the second innings, 87 for the loss of 8 wickets. Still struggling to get trailed by 136 runs of the first innings of India. And once again, Ashwin picking up a 5 wickets hold. Ravichandran Ashwin picks up 5. And Ravindra Jadeja picks up 2 wickets. This time they're going for the run, mix up, opportunity of run out, and the fielder missing the stumps.
And absolutely golden opportunity missed out there by Taslim. Is trying to shy at the stumps. A little bit hesitation for the run. And it's going to be a disaster if the fielder will going to hit the stump. The wicket of Safwan is going to be a very important breakthrough for Team Matrix. But Safwan survives. Nizam bowling from the far end. Down the wicket delivers. Shahrukh drives at a nice looking drive towards a deep long off region. And Shahrukh hitting the ball very nicely here to get some rotation of strike. 29 for the loss of 4 wicket. Last a few deliveries left in their innings. This is the 5th over is in progress. The Nizam is the bowler bowling from the far end. Right arm over the wicket to Safwan. Safwan this time left the ball. He thought it might be a wide, but that ball is just inside the line. Good piece of bowling there by the bowler. With the pace, Nizam is just keeping that line very well. It's not so easy to bowl that very close to that wide line outside the line of off time. This time drives that one Safwan, but fielder is there in the deep long off. They're going for the second. Oh my goodness! Shahrukh started for the second run. Immediately is going back. And Safwan thought that Shahrukh will going to come back for the second. So he also starts. We're immediately seeing that his partner is going back. Look at that one. And he's just survived from that run out. A good throw, a good return coming from the fielder in the deep long on. So that batsman have to settle for the single. 30 for the loss of 4 wicket. Nizam bowling with a short run up. Right arm around the wicket. Delivers. Going for the drive. Not getting that much of timing in that stroke. But no problem whatsoever as far as getting a single for that stroke for his team. Shahrukh picked up a single. 31 for the loss of 4 wicket. And good comeback here by Team Matrix. After that expensive 2 overs. Then they bowled very well. They came back very strongly. Especially the second over is a highly expensive 3rd over. This time the catch, it is a call. Wicket keeper behind the stump. At last managed to take the catch. But it looks like a total misunderstanding between 3 fielders. One is a wicket keeper, one is the fielder from cover point, and one fielder from the backward point. But at last the wicket keeper is the one who completes the catch. And Safwan's innings comes to an end. Nizam has got a very important breakthrough. It's a 31 for the loss of 5 wickets. Mazim is a new batter, is walking towards the middle, and it's a good innings of Safwan. It comes to an end. Last over remaining of the innings of FS Falcons. Bandar. Ajay brought into attack in the previous match is a little bit expensive, but we bounced back very well after that shackling start, and wait and see how he will go into ball in that last over, the final over. And final over of the innings of Falcons Bandar. Shahrukh is a striker. First ball, right on the money, right on the target. Just a little bit getting deviation after the ball pitched outside the line of off time, going away from the left-hand batter. And dot and delivery. 5 balls remaining. Batsman chip that one. Ball is in there. And oh my goodness, he drops the catch.
Taslim charging in from the deep extra coverage and a good throw coming from the fielder and he's gone. Even Taslim has dropped the catch but is able to send the batsman by returning the ball very quickly to the hands of wicketkeeper. Just look at that effort that from the fielder. Outstanding effort. While the time of his diving to his front, ball just slipping out of the hands. But I think he's just did a great job. Even he's lost his balance, but he's not lost his confidence of getting the man out in the form of run out. So one more wicket is back into pavilion. 32 for the loss of 6 wicket. Zunaid is a new batter. Is walking towards the middle, being the captain of the side. Zunaid. Wait and see how he will going to contribute in remaining 4 deliveries. Zunaid takes a fresh guard from umpire. Zunaid will go into face his first delivery. Ajay. Right above the wicket, beautifully balled. The wicketkeeper behind the stump asking for this time again. Ball hits the stumps. But umpire says not out. No, one delivery. There is 2 attempts for the run out. And umpire says not out. But Team Matrix, the fielders just asking for the umpire to get the third umpire decision. And umpire will go into take. Second attempt run out. First attempt. Stamping. Well, it is going to be automatically done or not. That's what umpire want to see. It's a very interesting to see that whether the ball deflected from the body of wicket keepers then fell into the stump. That time whether the batsman is safe or not, that's what umpire want to see here. And tomorrow going to be a final day of this cricket tournament, decider day of cricket tournament, and we're talking about some the very good teams will go in to take part in this prestigious cricket tournament, Yuvaratna Trophy 2023. And in this particular season, we are not witnessing any big tournament. This is the first big tournament. This is the first big tournament, the cash prize of 1 lakh. Thanks to Team Fortune organizing this wonderful cricket tournament. After that, UFC trophy, the World Cup of Underarm cricket, RRP Memorial Trophy, one of the prestigious tournament. After that, we were into the season. It's a too late start for the season, especially in the UCC cricket ground. We're not having any big competition. Now it looks like umpire, after getting a lot of examination, it's a stump out. And the ball, which is after hitting the wicket keeper, then ball is automatically hits the stumps, and that time batsman is out of a crease. So thanks to the responsible person for getting that
result. Special thanks to third umpire Roland Pinto, and even for the field umpires, after having a doubt in the mind, they're asking for the third umpire to get the result. And the technicians of Bedra Media, after getting some angles and leading from the front, Irfan of Bedra Media, getting some good angles to get the best result of this appeal of the stump out. So one more wicket is back into pavilion. It's a 32 for the loss of 32 for the loss of 7 wickets. Ajay bowling 4 times in this over. Right arm over the wicket to Ansar. Ansar drives that one upishly but quite safely down to deep long on region just for a single. The 2 deliveries remaining in the innings. And 2 deliveries is going to be very important here for Falcons to get some good score. Nazim is there in the middle. Mazim will go into face the remaining deliveries of this over. Ajay will go into ball 5th time in this over. Right arm over the wicket to Mazim. It's a very young, talented player for the side of Bandar Falcons. This time reaching for the delivery, getting the single down to gully region. Good piece of fielding there by the fielder. Just a single. They're sacrificing a wicket. And of course, it looks like Ansar is going back to pavilion. He wanted to give strike to Mazim for the final delivery of their innings, and scoreboard is 34 for the loss of 8 wicket. Team Matrix are looking very good after that that expensive second over. Then he really bounced back by picking a wicket of Safwan. Is one of the very good run getter in this tournament, in this particular tournament. Naushir is a new batter, is an outsider Zen. But Mazim will go into face the last delivery. Can he able to get the one big shot here? And so that Bandar will go to get some competitive total. Right arm over the wicket bounce. Going for the drive. Misses the line completely. Fantastic delivery. Caught behind the wicket. Mazim walking towards the pavilion. And a good finish for the over. And maybe umpire Mohan Ayadi telling the bowler the appeal which is so important, celebration which is not important, but you need to appeal for the caught behind. And that's what umpire Mohan Ayadi may be asking for. How can you give the caught behind if you are not going to appeal for the wicket? 34 for the loss of 9 wicket, and 35 going to be a target for Team Matrix. And outstanding comeback here by Team Matrix bowler, especially Ajay bowled a fantastic last over. Then Rauf is the one, is bowled well, and at the same time it's a bowler Taslim is bowled fantastically. So far he's got a fantastic tournament from the ball and bat and even in the field. That's the summary here of Team Matrix, little correction of BS Falcons, and 34 for the loss of 9 wickets. 35 going to be a target. It's going to be more interesting to see that how well the team will going to defend this total. But in this under pressure, under hot condition, the competition definitely going to be more hot, because it's going to be a competitive total. Before the next over going to start, it's the time for Gopi to take over the microphone in our national language Hindi. Thank you.
शुक्रिया सतीश। तो यहाँ पर 35 रनों का लक्ष्य टीम मैट्रिक्स के सामने इस वक्त रखा है बीएस फॉल्कॉन्स के बल्लेबाजों ने, और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होते हुए एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन देते हुए टीम मैट्रिक्स के गेंदबाजों ने सिर्फ 34 रनों पर रोक कर रखा बीएस फॉल्कॉन्स की सशक्त बल्लेबाजी के लाइनअप का। उनकी पारी की शुरुआत होती हुई पहले गेंद एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थे और गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर उछालना चाहा, चूंकि गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए और गेंद को विकेट कीपर ने विकेटों के पीछे फील्ड कर लिया, रन बल्लेबाज को नहीं मिला। तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 0 पर और गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। शबीर गेंदबाज दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे और आखिरकार गेंद को विकेट कीपर ने अपने दूसरे प्रयत्न में आगे की ओर आकर फील्ड कर लिया। स्कोर नहीं मिलेगा, तो स्कोर रुक चुका है इस वक्त 0 पर और अपनी ओर की तीसरी गेंद लेकर शबीर इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, गेंद उनके पैरों के बीच से निकली, थर्ड मैन विकेट कीपर के हाथों में, रन एक बार फिर से बल्लेबाज को नहीं मिला। तो 3 बेहतर गेंदें इस ओवर में शबीर फेंक चुके हैं और एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन इस पहले ओवर में वो जारी रखते हुए। और स्ट्राइक इस वक्त मुन्ना जो कि 3 डॉट गेंदें इस वक्त खेल चुके हैं। नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद मोहसिन और शबीर एक बार फिर से गेंदबाजी में कुछ हद तक गेंदबाजी करने के लिए तैयार, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपनी ओर के अगली गेंद दाहिना तो बढ़ता विकेट, ये गेंद इस बार उछालना चाहा, चूंकि गेंद विकेट कीपर भी चूंकि गेंद शॉर्ट स्कोर लेग की दिशा में पहुंची, जब तक वहां पर गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 1 रनों पर। रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है, 1 रन बिना किसी नुकसान के पहला ओवर यहाँ पर शुरू हो चुका है। मोहसिन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर करते हुए पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर, और ये जानते हुए कि मोहसिन एक आक्रामक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं, यहाँ पर कुछ हद तक फील्डिंग में बदलाव लाते हुए बीएस फॉल्कॉन्स बंदर के कप्तान और इस बीच कुछ हद तक फील्डिंग में जमावट करने के बाद शबीर गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए मोहसिन के लिए अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार बैकफुट पर गए, गेंद को खेला, जगह नहीं बना पाए, आफ्टर फर्स्ट बाउंस गेंद को इस वक्त फील्ड कर लिया गया फील्डर द्वारा एक्स्ट्रा कवर पर और रन बल्लेबाज को नहीं मिला। तो स्कोर रुक चुका है 1 रन बिना किसी नुकसान के पहला ओवर यहाँ पर प्रगति पर। फिर से एक बार शबीर एक गेंदबाजी करने के लिए तैयार, तैनात ओवर द विकेट, ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को बोलना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, फाइन निकल चुकी है, फाइन लेग सी मारेगा क्या, दीवार पर गेंद टकरा चुकी है 4 रनों के लिए। It's off the bat. I think he's got an inside edge on that, bottom edge on that at the last moment. The ball went fine between a fine leg and a third man, and it's crossed over the fence for a boundary. Innings and 132. तो यहाँ पर 4 रन प्राप्त कर चुके हैं, 5 रन। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो टेस्ट मैच चल रहा है, उस टेस्ट मैच में भारत ने एक शानदार विजय दर्ज की है, एक पारी और 132 रनों से। इनिंग्स एंड 132 रन विक्ट्री, कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री, बिग विक्ट्री फॉर टीम इंडिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। इन द सेकंड इनिंग्स ऑस्ट्रेलिया वर बोल्ड आउट, बंडल्ड आउट फॉर जस्ट 91 runs and they lost the match by innings and 132 runs. So great achievement from India. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त इस श्रृंखला का, गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए हमसे दूर वाले छोर से नौशीर इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, और दूसरा ओवर शुरू होता हुआ इस वक्त टीम मैट्रिक्स के पारी में 35 रन 6 ओवर में बनाने हैं। पहले ओवर के बाद 5 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। एक बेहतर ओवर समाप्त हो चुका है शबीर का, और नौशीर एक नया ओवर यहाँ पर प्रारंभ करते हुए अपनी ओवर की
पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 6 रनों पर बिना किसी नुकसान के, 6 विदाउट लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर। और नौशीर फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट। यह गेंद इस बार गेंद को खेल दिया, लेकिन प्लेसमेंट कुछ खास सही नहीं, डीप इन विकेट पर गेंद पहुंची। जब तक गेंद को वहां पर फील्डर फील्ड करके लौटाए, शायद शब्बीर वहां पर फील्डर थे। 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर, सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस, 7 विदाउट लॉस और रन्स अभी भी सिंगल्स के रूप में बनते हुए। और जहां तक का सवाल है अगली गेंद का, तो नौशीर अगली गेंद लेकर तैयार, जबकि मोहसिन स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए। दूसरा पावर प्ले ओवर इस वक्त जारी, दाहिना तो ओवर द विकेट। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए विकेट कीपर चूके और गेंद इस वक्त फाइन लेग सीमा रेखा को इस वक्त पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। That was an absolutely sloppy fielding performance shown by the short fine leg fielder. गेंद से अंतिम क्षण में हड़बड़ाहट पे अपनी नजरें हटा ली और गेंद उनको वंचित करते हुए सीधे फाइन लेग सीमा रेखा को पार कर गई 4 रनों के लिए। 5 रन, 1 + 4, 5 रन नाउ एडेड टू द टोटल। और उन 5 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 11 रनों पर बिना किसी नुकसान के, जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर 12 रन बन चुके हैं। दूसरा ओवर उनकी पारी का प्रगति पर। यह गेंद इस बार बेहतर, एब्सोल्युटली परफेक्ट इन कटर डिलीवरी एंड ही गॉट द रीड ऑफ द बैट्समैन। गेंद को ड्राइव करना चाहता, गेंद और बल्ले के बीच में अंतर और उस अंतर को चीरती हुई सीधे गेंद टकराई इस वक्त मिडल ऑफ स्टंप पर और इसी के साथ गिलिया बिल्स उड़कर गिरते हुए पहला विकेट खो चुका है 12 रनों के ऊपर। और इस वक्त मोहसिन की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है। तो 12 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट and the team Matrix lost their first wicket in the face of Mohsin for 12 runs. Just a second over in progress in their innings. 35 the target in 6 overs for them, set by BS Falcons. Bandar batted for the man to score 34 runs in 6 overs, and in reply team Matrix are now lose their first wicket just short while ago in the face of Mohsin when their total is 12 runs on the board. और नए बल्लेबाज का आगमन यहाँ पर हो चुका है 0-1 नंबर की जर्सी पहने हुए और वो इस वक्त सामना करेंगे गेंदबाज नौशीर की गेंदों का। इस्माइल इस वक्त नए बल्लेबाज सामना करते हुए। ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर और वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 13 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। अपनी सही लेंथ और लाइन को अभी भी तराशते हुए गेंदबाज और एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट। ये गेंद परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद है, लेकिन एक बार फिर से लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 14 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। 21 रनों की और जरूरत है विजय के लिए और जहां तक 34 रनों के स्कोर के अंदर रोक कर रखने का सवाल है, तो इस वक्त बीएस फॉल्कॉन्स के गेंदबाजों को एक बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करनी होगी। और इस बीच गेंदबाज दाहिना तो ओवर द विकेट। ये गेंद बेहतर गेंद थी, गेंद को रिवर्स शॉट खेलना चाहा, नॉट क्वाइट मिड विकेट द लास्ट मोमेंट। और इस बीच 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ कुल रन संख्या इस वक्त बढ़कर अब पहुंच चुका है 15 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। और इस बार दूसरे रन के लिए बल्लेबाज तो 1 और रन उनके खाते में जुड़ चुका है और 1 रन के साथ तो 17 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर और दूसरा ओवर सिर्फ उनके पारी का प्रगति पर। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट, लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा अंपायर का
और वाइड के इस रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर। 18 रन एक विकेट के नुकसान पर 18 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। जस्ट अ सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस एंड गुड प्रोग्रेस अगेन नाउ फॉर टीम मैट्रिक्स। और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ऑफ स्टंप से बाहर। एक बार फिर से वाइड का इशारा। द स्कोर बोर्ड इज नाउ मूविंग अप टू 19 नाउ विद दैट सिंगल रन। और सिर्फ दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर। तो इस वक्त काफी वाइड गेंदे इस ओवर में फेंक चुके गेंदबाज नौशीर। अपनी ओर की अगली गेंद इस बार टॉप एज जब मौका हो सकता है पॉइंट फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और इसी के साथ इस कैच को लपकने में सफल। विड्थ थी लेकिन इस विड्थ पर नियंत्रण प्राप्त करने में असफल। और स्ट्रोक को खेला जरूर लेकिन हवा में मिड ऑफ बैट कनेक्शन नहीं। और यहां पर विकेट गिर चुका है। दूसरा विकेट गिर चुका है 19 रनों के योग पर। इट्स 19 for 2। दो गेंदे अभी भी बाकी हैं इस ओवर में नौशीर के और काफी वाइड गेंदे इस ओवर में वो फेंक चुके हैं। फलस्वरूप इस वक्त एक सुस्थिति में नजर आता हुआ टीम मैट्रिक्स। और अपनी अगली गेंद लेकर नौशीर तैयार जबकि नए बल्लेबाज का यहां पर आगमन हो चुका है। न्यू बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडिल। रमीज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार नौशीर की गेंदों का। और नौशीर गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार खेला खूबसूरती के साथ इनटू द गैप। वन बाउंस इनटू द फेंस एंड अ परफेक्ट स्ट्रोक केम फ्रॉम द बैट ऑफ द राइट हैंडेड बैट्समैन रमीज। इस बार गेंद को इस तरह से डिस्पैच किया था कि गेंद लगभग गोली की रफ्तार में निकली। हालांकि वाइड स्लंगों पर फील्डर मौजूद थे लेकिन रोकने का कोई मौका नहीं और गेंद सीधे सीमा रेखा के सीढ़ियों पर टकराती हुई बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त रमीज के बल्ले से लग चुका है। 23 रन बन चुके 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर। बेहतरीन प्रगति करता हुआ टीम मैट्रिक्स। अगली गेंद ये गेंद इस बार एक बार फिर से लेकिन इस बार क्लीन कलेक्शन लॉन्ग ऑफ पर स्ट्राइटर वर्शन पर गेंद को उछाला था और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 24 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। सो फैंटास्टिक रिप्लाई given by the batsmen of team Matrix. They managed to score 24 runs on the board after completion of 2 overs, chasing the victory target of 35 in 6 overs. And now just 11 runs required for them for victory in remaining 4 overs. And the required run rate coming down to exactly 2.75 runs per over at this situation for team Matrix. इमरान द बॉलर स्टार्ट्स द फ्रेश प्रोसीडिंग्स फ्रॉम द कमेंटेटर बॉक्स एंड और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज रमीज के लिए जो कि व्यक्तिगत 5 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त तैयार इमरान की गेंदों का सामना करने के लिए। और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद इमरान गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए और 2 ओवर के खेल के बाद फील्ड के प्रतिबंध यहाँ पर हट चुके हैं। बबल प्ले समाप्त हो चुका है। फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके। केवल 4 मात्र खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद। अपनी ओर के अगले गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार चिप किया गेंद को जगह बनाते हुए और गेंद जब तक पहुंची लॉन्ग ऑफ पर 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 25 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। तो इस वक्त गेंदबाज इमरान गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए
ये गेंद इस बार गेंद को स्कूप किया है, लेकिन मिड विकेट पर फील्डर मौजूद और गेंद उनके हाथों पर जाकर पहुंच चुकी है। इस बार गेंद को काफी ऊंचा उछाला था और ऐसा कहना पड़ेगा स्ट्रोक में ज्यादा दम नहीं, और डीप मिड विकेट पर जो फील्डर खड़े हुए थे आखिरकार उन्होंने कोई गलती यहां पर नहीं की। 25 रनों पर तीसरा विकेट गिर चुका है। इस्माइल की पारी समाप्त हो चुकी है। सिर्फ 10 मात्र रन अब चाहिए विजय के लिए। जस्ट 10 more runs now they have to score for victory in remaining 3+ overs, and at this situation the equation seems to be much easier for them. तस्लीम का आगमन यहाँ पर होता हुआ। तस्लीम जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन दिया था इस मैच में और पिछले मैच में भी, और अच्छी खासी बल्लेबाजी भी की थी। 9 रन विजित बनाए थे पिछले मैच में, और यहाँ पर उनका आगमन हो चुका है और वो इस वक्त देखते हैं किस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर अपनाते हैं। और दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद स्वीप किया इस वक्त। गेंद पहुंचते हुए शॉट फाइन लेग की दिशा में 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 26 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 26 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इमरान रमीज के लिए। इस बार गेंद को स्वीप करना चाहा, फुल टॉस गेंद थी, बल्ले का बाहरी किनारा टकराने के बाद गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन फिर से बल्लेबाज प्राप्त कर चुके हैं। स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका 27 रनों पर। 27 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज दाहिने हाथ अराउंड द विकेट। ये गेंद फुल टॉस ऑफ स्टंप से काफी बाहर, विकेट कीपर चूके शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर के हाथों में गेंद। 1 रन मिलेगा सिर्फ बाई के रूप में, और बाई के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 28 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ता हुआ इस वक्त टीम मैट्रिक्स, और सिर्फ 7 रन और चाहिए विजय के लिए। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, गेंद इस वक्त पहुंच चुकी है शॉर्ट कवर फील्डर के हाथों में, और इसी के साथ यहां पर देखना यह है कि अंपायर इस वक्त आउट घोषित करते हैं। बल्ले का भीतरी किनारा टकराने के बाद गेंद उनके पैरों पर टकराई थी और हवा में उछली, और इस कैच को यहां पर लपक लिया गया, तो विकेट गिर। तो इस बीच अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा, तो बल्लेबाज मेरे ख्याल से बच चुके हैं, तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है। नहीं, 1 रन जोड़ा जाएगा उनके खाते में, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 29 रनों पर। 29 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एंड 3 overs completed, 6 runs now they have to score for victory। सिर्फ 6 रन चाहिए विजय के लिए। एक वक्त ऐसा लगा कि गेंद बल्ले का भीतरी किनारा टकराने के बाद, पैरों पर टकराने के बाद वहां पर लपक ली गई है फील्डर द्वारा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ वहां पर, और इस वजह से बल्लेबाज इस गेंद पर बच चुके हैं। और इस बीच रमीज जो बल्लेबाज थे इस वक्त सामना करने के लिए तैयार नहीं, और की पहले गेंद का, और साई शक्तियान की ओर से पहली गेंद रमीज के लिए ऑफ स्टंप पर आती हुई लेग कटर गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर की ओर गेंद निकलती हुई गेंद के इस वक्त ड्राइव करना चाहा चूके, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथ में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। फिर से एक बार गेंदबाज आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहा, मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित देखा कि गेंद वहां पर पहुंच चुकी है, और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 2 गेंदें इस ओवर में खेल चुके हैं, 16 गेंदें बाकी है, रन से चाहिए 6। और फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद ऑन साइड पर बोड़ना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है लेग बाई के रूप में, और लेग बाई के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 30 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर इस वक्त प्रगति पर। 30 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। जस्ट फाइट टू गेट 4 विक्ट्री नाउ, एंड द इक्वेशन सीम्स टू बी मच इजियर नाउ फॉर टीम मैट्रिक्स। तस्लीम सामना करते हुए इस वक्त रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 31 रनों पर। लेग पाई इशारा हो चुका है अंपायर का, और
एक बार फिर से गेंदबाज माजीम गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद अच्छी गेंद थी, बेहतर गेंद थी, गेंद को ड्राइव करने का प्रयास किया था, जगह नहीं बना पाए और गेंद के पैरों पर टकराने के बाद, बल्ले के भीतरी किनारे पर टकराने के बाद वहीं पर रुक गई और रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। और माजीम एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ गेंद को स्कूप किया इस वक्त, बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा की ओर गेंद बढ़ते हुए, और गेंद को जब तक रोका जाता सीमा रेखा के अंदर काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद बल्लेबाज के पास मौका था इस बीच 3 रन प्राप्त करने का, और इन 3 रनों के साथ विजय के और निकट यहाँ पर हो चुका है। टीम मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ 1 रन चाहिए, रनों की बराबरी यहाँ पर हो चुकी है और 1 रन अब चाहिए विजय के लिए बचे हुए 2 ओवर में। और अब सिर्फ ऐसा कहना पड़ेगा औपचारिकताएं ही इस मैच में बाकी रह गई है, ओनली फॉर्मेलिटी नाउ रिमेनिंग इन दिस मैच। सो जस्ट सिंगल रिक्वायर्ड और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, ओवर की पहली गेंद, स्लिप पॉइंट पर एक फील्डर तैनात था ठीक बल्लेबाज के पास, और ओवर की पहली गेंद ड्राइव किया स्ट्राइक डाउन द ग्राउंड, और गेंद इस वक्त सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। तो इस चौके के साथ टीम मैट्रिक्स आर थ्रू टू द नेक्स्ट राउंड ऑफ दिस कॉम्पिटिशन, डिफीटिंग बीएस फॉल्कॉन बंदर by 7 wickets with 11 balls to spare in their innings, and they are through to the next round of this competition. So the next match, one more good match is now coming up. MSC Chombogude will takes over NFC Urva, and that match starts with just a short while. And till then we are taking a short break, and we'll be back right after the short break with my friend Satish in English when the next match will going to begin right after the short break. And now it's time for break. Thank you. Dhanyavad. It's the time to announce the man of the match once again, the consecutive second time. Taslim of Team Matrix was judged as a man of the match second time, the consecutive 2 times for his outstanding bowling spell. 2 overs, no maiden, 6 runs and 2 wickets. May I request Taslim to please come and collect your man of the match from our chief guest. I request B.S. Falcon Bandar. I request the captain of B.S. Falcon Bandar, please report here to get your
representative for to get your memento for the representation of this cricket tournament. ಬಂದರ್ ಫಾಲ್ಕೋನ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ವಿತರಣೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿತರಣೆಯನ್ನು and Kushi Melodies is one of the most popular singer in Kushi Melodies. So thank you very much, Ganesh. ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಕಾನ್ ಬಂದರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೂದಾನಿಯನ್ನು ಬಂದರ್ ಫಾಲ್ಕಾನ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉದಯ್ ಇವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನೀಡುವಂತಹ ಹೂದಾನಿ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೋಪರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ Yuvaratna Trophy 2023 season 2. The first ball. NFC Urva versus MSC Chembugude. The first ball outside the run of leg stump, going for the big swing of the bat. And short fine leg fielder fields the ball, and there is no chance at all for any run. The good start there from Ranjit. And Sadiq is a very good striker of the ball. Will go into face second delivery of Ranjit from the commentary box end. Right arm over the wicket to Sadiq. Sadiq lofted that one. Ball is in there. Mid-on fielder in fact running towards the mid-on. Completes the catch. It's a huge wicket for NFC Urva. The danger man Sadiq departs. Of course, no doubt at all, Sadiq is a very good striker of the ball, but you need to see that you are facing one of the best bowler in the present cricket, Ranjit, who won the best bowler award in the match, the tournament which is the finished last week. The Bajal YFC Trophy 2023 organized cricket tournament, and the bowler Ranjit, who becomes the man of the series for the best bowler award for his outstanding bowling performance. He is represented for Torpedoes Khana. Now he got the wicket. The second ball itself, he picks up a wicket. The danger man Sadiq departs. Daryl is a new batter in. Ranjit, right arm over the wicket balls. Oh, lovely delivery, beautifully bowled. It looks like ball is almost coming into the batter. It's a sharp incoming delivery in the batsman. Daryl negotiated very well. They played it one defensively and not for runs. Score remains yet to open the account 0 for 1. Ranjit is on fire. Right arm over the wicket. Lofted, going to be second wicket. Sandeep for the safest pair of hands in the cover point. Making no mistake at all. The second wicket here for Ranjit. 0 for 2. Shackling start here for MSC Chembugude. Really, it was a shackling start. Each and every batter, they wanted to get over Ranjit, but Ranjit not settling the batter. The picking about 2 valuable wickets
in just in a difference of 4 deliveries, he picked up 2 valuable wickets without conceding a single run. That means NF Sirua, after winning the toss, elected to field first. Their plan, the game plan really working out. Ranjit producing is that important breakthrough for his team. Asgar is a new batter in, will go into face. Asgar is on strike now, going for the drive, not quite getting that one from the middle of the bat. What a fantastic over there from Ranjit. He's almost, looks like he will go into ball that made an over. The 5 deliveries, no run, 2 wickets, the last delivery of the over. Asgar will go to take the strike. Ranjit final time in this over. Right up over the wicket balls. It's going to be a maiden. It's a maiden over ball there by Ranjit. Outstanding, isn't it? When you're bowling in the power play over, you can't get better than that. Absolutely fantastic piece of bowling there from Ranjit. He's got a fantastic season from the ball. And without opening the account, MSC Chembugude are looking in a deep trouble. 0 for 2. But 1 over which is completed, and MSC Chembugude can bounce back. There are 5 overs remaining. That means 30 possible deliveries remaining. In that 30 balls, if able to get 35 to 40 runs, they can fight with that total. Just seeing that their performance in the previous match. The Chembugude have to come back in the second over. Satish is experienced campaigner. Will go into ball from the far end. Right arm over the wicket, pass down by Roland Pinto. Drives that one, nice looking cover drive, but protection is there in the deep, so that batsmen have to settle for the single. With the single, Skobana moves on to one of not move for first run, which I am talking about. First run now for Chembugude, MSC Chembugude. They got the first run in the 7th ball of their innings after losing 2 wickets. Satish. Right arm to Asgar. Asgar drives that one down to deep, wideish long on region. Fielder there in the deep long on. You need to run across towards the cow corner before the fielder coming from the deep long on and returns the ball. Ample time for the batter to complete the couple of runs. With that couple of runs, scoreboard now was on to 3. Then Asgar moves on to his individual score. He's opened the account with that couple of runs, keeping deep long on, deep wideish long of almost in extra coverage, and one fielder is in the deep. The 2 fielders outside the circle in the power play. Satish right arm. Over the wicket went for the big shot. Flum, absolutely flum in front of wicket there from Asgar's lovely incoming, sharp incoming delivery. And Asgar tried to play against the line. Once he missed the line, then very difficult for him to survive. The back leg is right in front of the stumps. So 4 loss of 3. MSC Chembugude are looking in a more trouble. Lost their 3 wickets for just 3 runs. Ranjit picked up 2, Satish picked up 1. And NF Sirwa are looking in commanding position. Three for the loss of 3 wickets, and Satish once again back to his bowling mark. Pass umpire to Kalandar. Kalandar in the previous matches contributed well from his bat. This time we wanted to play the reverse wave. Good change of pace, good change of line from Satish. Seeing that batsman going for the reverse wave, he's ball outside the line of leg stump.
Once you ball that line, it's very difficult for the batter one who trying for the reverse sweep. It's a very good thinking from the bowler's point of view. Satish again back to his bowling mark. Right arm over the wicket. Looking for the improvisation. Wicket number 4. It's a competition between run and a wicket. It's a 3 for the loss of 4 wicket. And quite unusual, unhealthy scoreboard here. 3 for the loss of 4 wicket. NFC Urva, the bowlers really dismantling the batting department of MSC Chimbugude. Are looking in a trouble. 3 for loss of 4 wickets. So new batsman slowly walking towards the middle, thinking about how to get the runs, how to get the partnership. The jersey number 35, the left-hand batter, always going to be a benefit for the batting team if you're having 1 or 2 left-hand batsmen in your batting department. And the Mustaka, wait and see how he will going to get the partnership for his team. But the first priority of this man is to just get in and get some partnership which is badly required for his team. Satish, just like Ranjit, he picked up 2 wickets. Now here is Satish also picked up 2 valuable wickets by conceding just 3 runs. This time again going for the big swing of the bat against the line. Fantastic over, 1 more good over. After completion of over number 2, MSC Chimbugude are looking in a more trouble. Not only they didn't got any wicket, didn't got runs enough. At the same time, they lost 4 valuable wickets back into pavilion. It's a 3 for the loss of 4 wickets. The bowling change, Ranjit, no change in bowling. Ranjit will going to continue. So being the captain of the side, Ranjit is really playing a captain's role. Not so easy to come and bowl in the power play overs. He bowled a very good power play over. Ranjit, can he continue that same performance in this 3rd over? Fielding restriction is off after that power play. So many fielders out there in the deep. Went for the reverse sweep, but looks like it's going to be a leg bye. So with that leg bye, score numbers on to 4. 4 for the loss of 4 wicket in the over number 3 in progress. Ranjit now get ready to bowling to Mustaq, the left-hand batter we are talking about. Wait and see how Ranjit will go into ball. He's just changing his angle, seeing that the left-hand batsman is on strike. Now he wanted to come around the wicket. This time going to be a boundary here. The wide call by umpire. 1 plus 4 is a 5. So 5 wides, gifted runs. So it's really helping our team Chimbugude to get some runs. Disappointment for the fielding team. Even it's very difficult to get the runs from the bat. The runs are which is conceded from the wide. Going for the drive, missing it completely. Good comeback this time. And Ashit behind the stump wanted to become too smart. But the result will not go into going in his favor. I request Team Matrix, all the players, please come here to sign the official chart. Team Matrix ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Team Matrix. Nine for the loss of 4 wicket. Oh, that might be a very close to the stump. Something has happened.
Something has happened. By call by umpire. Well, the ball hits the stumps. I want to see that because seeing that disappointment from the wicketkeeper and the bowler, maybe the ball which is kisses the stumps, the bails are not off. There's something looks like it's going to be very close to the stumps, but something has happened. The batsman survived. 10 for the loss of 4 wicket in the over number 3 in progress. Ranjit again. Bowling away from us. Right arm over the wicket. Deliver single-handed sweep shot beautifully down to deep back of score leg boundary. And what a stop there by the fielder. Outstanding stop. Excellent stop there from the fielder. What could be a certain boundary? This is the second time watching the 1-6 which is saved brilliantly in the morning match. And now here is what could be a certain boundary. The well stopped by the fielder. Rakesh down at mid-wicket. After he's stopping the ball, he's almost couldn't manage to control his speed. He's just climbing to that spectators gallery, and he able to push the ball inside the playing area, inside the boundary line. The first productive over for MSC Chimbukude comes to an end. Once there are 3 for the loss of 4 wicket. Now it's a 13 for the loss of 4 wicket. That means the valuable 10 runs which is came from that over. And that's only because of extras which is conceded in that over. And before the next over, we're going to start a change in commentary box as well. It's over to Gopi for the further explanation of the match in our national language, Hindi. Thank you. धन्यवाद सतीश. तो यहाँ पर स्ट्रगलिंग टाइम कंटिन्यू हियर फॉर द बैट्समैन ऑफ MSC Chumbukude. The man scored just 13 runs on the board for losing 4 wicket after completion of 3 overs. और बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला इस वक्त जारी रखते हुए गेंदबाज NFC उरुवा के किरण ना गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए इस्माइल सामना करने के लिए तैयार. हालांकि इस्माइल आरंभिक बल्लेबाज के तौर पर मैदान पर उतरे थे. अभी तक क्रीज पर डटे हुए हैं और जो 4 विकेट उनके सामने गिर चुके हैं, उन 4 विकेट के पतन के गवाह हैं. वो दूर से छोड़ पर खड़े होकर उन 4 विकेटों के पतन को देखते रहे. इस बार गेंद को खेलना चाहता, बल्ले का भीतरी किनारा गेंद टकराया और इससे पहले कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा. शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद को फील्ड कर दिया गया. 14 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर. रन्स आर हार्ड टू कम बाय फॉर MSC Chumbukude. और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर जारी रखते हुए NFC उरुवा के गेंदबाज. और अपनी अगली गेंद लेकर किरण इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज मुश्ताक. ये गेंद हल्के से शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में खेला और 1 रन के साथ छोड़ बदल चुके. नो बॉल का इशारा. तो शायद यहाँ पर गेंदबाजी करते समय गेंदबाज का हाथ विकेटों पर लगा था और विकेट उखड़कर पैर उनका लगा था, तो इस वजह से विकेट वहां पर गिर चुका है और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है. 16 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर. जबकि चौथा ओवर उनके पारी का प्रगति पर. किरण नो बॉल का इशारा हो चुका है, तो फ्री हिट इस वक्त बल्लेबाज के लिए. तो देखना ये कि इस फ्री हिट गेंद का वो किस तरह फायदा उठाते हैं. ये गेंद लेग स्टंप से बाहर और रन के लिए दौड़ पड़े. निशाना स्टंप से ऊपर टकराया और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है. तो यहां पर आउट का इशारा हो चुका है. तो 5वां विकेट गिर चुका है 16 रनों के योग पर. 16 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट. So 16 for the loss of 5 wicket, and this is the 4th over in progress. Still the struggling time is now continuing here for the batsmen of MSC Chumbukude. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त नए बल्लेबाज का, तो नंबर 7 बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर उतरते हुए. और निस्संदेह का जहाँ तक पार्टनरशिप साझेदारी का सवाल है, इस वक्त एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप की उन्हें सख्त ज़रूरत. नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद. नंबर 66 की जर्सी यहाँ पर पहने हुए.
अशफाक जो कि कप्तान है एमएससी चेंबुगुड्डे के इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और किरण ये गेंद इस बार बैक टू द बॉलर की दिशा में सीधे विकेट कीपर के हाथों में गेंद यहां पर पहुंच चुकी है और एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। छठा विकेट गिर चुका है 16 रनों के ऊपर। विकेटों के ऊपर विकेटें यहां पर गिरते हुए और हर विकेट के पतन के साथ दबाव इस वक्त बढ़ता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर। एमएससी चेंबुगुड्डे इस वक्त काफी संकट की स्थिति में यहां पर नजर आता हुआ। 16 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस फॉर एमएससी। तो यहाँ पर नौशद केरेबैल का आगमन हो चुका है 77 नंबर की जर्सी पहने हुए। जहाँ तक नौशद का सवाल है, उल्लाल मीडिया जो कि आजकल जिनके बोलबाले बहुत चल रहे हैं, काफ़ी बोलबाले चल रहे हैं, तो एक मशहूर मीडिया के रूप में इस वक्त आज के दिनों में जाना जा रहा है। उसके मुख्य सूत्रधार नौशद उल्लाल मीडिया के इस वक्त क्रीज पर आ चुके हैं एज अ बैट्समैन और वो इस वक्त खाता खोल चुके हैं पिछले गेंद पर एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को खेलने के बाद और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर। गतकाल के क्रिकेटरों का परिचय वो इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपने चलन में कई क्रिकेटर्स का इंटरव्यू लिया है और ये गेंद इस बार गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा और जहाँ तक का सवाल है रनों का, तो रन इस बीच बल्लेबाज को मिलेगा 1 और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर। 6 विकेट के नुकसान पर। तो अगली गेंद के लिए तैयार। ये गेंद स्वीप किया इस वक्त नौशाद ने। गेंद पहुंची इस वक्त बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में, 1 रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, स्ट्राइकर रन पर थ्रो पहुंचा लेकिन काफी ऊंचा थ्रो विकेट कीपर के पहुंच से बाहर और बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। तो जोखिम भरा रन और यशस्विता में यहाँ पर पूर्ण करते हुए नौशाद और दूसरे बल्लेबाज 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है इस वक्त 20 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 20 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स फॉर MSC Chumbukude. Still the struggling time continuing here for them and still in overall calculation it's going to be 2 overs remaining in their innings. तो प्रज्वित इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से जर्सी नंबर 09 की 9 इस वक्त पहने हुए और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे इस्माइल को, जो कि जहाँ तक इस्माइल का सवाल है 6 विकेटें उनके नज़रों के सामने गिर चुके हैं स्ट्राइकर एंड पर और यहाँ पर वो सामना इस वक्त करने के लिए तैयार आरंभकार के तौर पर मैदान पर उतरे थे, अभी तक क्रीज पर टिके हुए और पहले गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहता चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। आज का छठा मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद पहुंची फॉरवर्ड शॉट लेग की दिशा में, स्क्वायर लेग की दिशा में कहना पड़ेगा, बाई के रूप में ये रन उनके खाते में जुड़ चुका है। 21 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। प्रज्वित गेंदबाजी करेंगे इस वक्त बल्लेबाज नौशाद को, जो कि इस वक्त फील्डिंग का मुआयना यहाँ पर करते हुए और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार हल्की से गेंद को रक्षात्मक तरीके से पुश कर दिया, सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए गेंद की धीमेपन को पहचानते हुए गेंद को रक्षात्मक तरीके से पुश कर दिया इस वक्त और 1 रन के साथ अपना छोड़ यहाँ पर बदल चुके हैं। 22 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 22 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। Still the batsmen of MSC Chumbukude are now searching for the right track और प्रज्वित गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस्माइल के लिए। यह गेंद इस्माइल ने गेंद को उछाला है काफी ऊंचा और गेंद को इस वक्त लंगोन सीमा रेखा के अंदर लपक लिया गया है। सुलेमान जो बल्लेबाज थे
माफ कीजिए सुलेमान बल्लेबाज थे जिन्होंने गेंद को उछाला था काफी ऊंचा, काफी उम्दा और बेहतर कैच, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक कैच टेकन बाय द लॉन्ग ऑन फील्डर। जैसे ही गेंद सीमा रेखा को पार करे अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए इस कैच को उन्होंने लपका और सुलेमान आरंभकार के हैसियत से मैदान पर उतरते उनका विकेट यहाँ पर गिर हुआ। देखिए किस तरीके से हुआ था, उन्होंने अपना बल्ला एक हाथ से खो दिया था स्ट्रोक्स लगाते समय और एक बेहतरीन कैच यहाँ पर लॉन्ग ऑन फील्डर प्लेयर्स गैलरी के पास सीमा रेखा के अंदर लपकते हुए। तो 7वां विकेट गिर चुका है 22 रनों के ऊपर। इट्स 22 for 7। इमरान नए बल्लेबाज के रूप में जिनका आगमन यहाँ पर हो चुका है और वो इस वक्त स्ट्राइक रन की ओर कदम बढ़ाते हुए और सामना करेंगे इस वक्त प्रज्वलित की गेंद का। दोपहर के 3:20 यहाँ पर बचते हुए और धूप का प्रकोप अभी भी मैदान पर कायम और इस बीच प्रज्वलित अपनी ओर की अगली गेंद इस बार चिप किया गेंद को लॉन्ग ऑन पर, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद। जिस तरीके से गेंदबाज ने ताली बजाई उससे अंदाजा लगाया गया कि यहाँ पर कैच को लपक चुके हैं लॉन्ग ऑन के फील्डर और हम देखना चाहेंगे वहां पर किस तरीके से कैच को लपका था। लॉन्ग ऑन पर गेंद को उछाला था और आसानी के साथ इस कैच को लपक लिया गया सीमा रेखा के अंदर, देखिए फील्डर द्वारा। तो विकेट नंबर 8 यहां पर गिर चुका है। 22 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। अंतिम गेंद इस वक्त बाकी, हैट्रिक का मौका इस वक्त प्रज्वलित के सामने और देखना यह कि वे अपना हैट्रिक पूरा कर पाते हैं या नहीं। तो नंबर 10 बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए तो जुनैद का आगमन यहाँ पर होता हुआ नंबर 10 बल्लेबाज की हैसियत से और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार प्रज्वलित की गेंदों का। प्रज्वलित हैट्रिक गेंद लेकर इस वक्त तैयार, बाएं हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका 23 रनों पर 8 विकेट के नुकसान हुआ। 23 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। अगली गेंद, ये गेंद चिप किया काफी ऊंचा, लेकिन इस बार मैं समझता हूं ही हैज गॉट द डिस्टेंस। लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के ऊपर से गेंद सीधे कमेंटेटर बॉक्स के छत पर जाकर टिप्पा खाते हुए और बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त लग चुका है जुनैद के बल्ले से और इस छक्के के साथ स्कोरबोर्ड अब बढ़कर पहुंच चुका है 29 रनों पर। 29 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स एंड 5th ओवर हैज बीन केम्स टू एन एंड। अंतिम ओवर का खेल बाकी और देखना यह है कि इस बचे हुए अंतिम ओवर में बचे हुए 2 विकेटों की मदद से एमएससी चुम्बुगुड्डे के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। लेकिन बेहतरीन स्ट्रोक था, अंतिम स्ट्रोक काफी उम्दा, काफी ऊंचा उछाला था और छक्का वो आखिरकार प्राप्त करते हुए। तो हमसे दूर वाले छोर से साई शक्ति एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज सतीश जो कि गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए और अंतिम ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ एमएससी चुम्बुगुड्डे की पारी में ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार था। ना तो ऊपर द विकेट स्वीप किया इस वक्त खूबसूरती के साथ गेंद पहुंची इस वक्त बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में, 1 रन मिलेगा और तो 30 रन यहाँ पर बन चुके हैं 8 विकेट के नुकसान पर। 5 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में, जस्ट 5 बॉल्स नाउ रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स और जुनैद पिछले ओवर के अंतिम गेंद पर छक्का लगा चुके हैं, इस वक्त सामना करने के लिए तैयार गेंदबाज की ओर की अगली गेंद का दाहिने हाथों पर था विकेट। गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद पैरों पर टकराई, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट स्क्वायर की दिशा में, 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 31 रनों पर। 31 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स इन द ओवर नंबर 6th एंड लास्ट इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। 4 गेंदें अब बाकी उनके पारे में। नौशाद इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं और
गेंदबाज सतीश की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, गेंद को ड्राइव कर दिया। इस वक्त विकेट सटते हुए लंगन के दिशा में 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 32 रन 8 विकेट के नुकसान पर। एक बेहतर ओवर अब तक सतीश का साबित हो चुका है, जिसमें 3 रन वो प्रदान न कर चुके हैं पहले 3 गेंदों में, और कुल मिलाकर 3 गेंदें अब बाकी एमएससी चुम्बुगुड्डे की पारी में। और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाजी इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए सतीश। बाएं हाथ के बल्लेबाज जुनैद इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। यह गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए। विकेट कीपर ने क्यों आकर गेंद को फील्ड कर लिया और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 32 रन 8 विकेट के नुकसान पर। 32 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स इन द ओवर नंबर 6 एंड लास्ट इन प्रोग्रेस फॉर एमएससी चुम्बुगुड्डे। फिर से एक बार गेंदबाज सतीश दाहिना तो ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए स्वीप करना चाहा। विकेट कीपर चूके रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन फील्डर ने विकेटों पर थ्रो करना मुनासिब नहीं समझा और इस बीच 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका। 33 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स एंड द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। अंतिम गेंद लेकर इस वक्त सतीश तैयार, जबकि बल्लेबाज नौशद इस वक्त सामना करते हुए। उनकी पारी की अंतिम गेंद सतीश के द्वारा नौशद को। इस बार गेंद खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला इनटू द गैप एज वेल। इट माइट बीन कंसिडर्ड, इन फैक्ट इट्स गॉन ओवर द फेंस फॉर अ बाउंड्री। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त वाइड इस लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान गेंद को उछाला था खाली क्षेत्र चुनते हुए नौशद ने और चौका यहां पर प्राप्त करते हुए। और इस चौके के साथ द इनिंग्स इज ऑफ देयर स्टिपुलेटेड ओवर्स आर कंप्लीटेड। दे फिनिश्ड विद 37 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। They recovered a little bit after being a shackling start and finished 37 for the loss of 8 wickets, and the target for them, the target for NFC Urva now 38. They have to score for victory in 6 overs, and as far as the required run rate is concerned, exactly 6.34 runs per over they have to score for victory. 38 रन बनाने, 38 the target for them in 6 overs. और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी चंद लम्हों बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब एनएफसी उर्वा की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी। धन्यवाद, थैंक यू।
So signal coming from umpire. The 38 going to be a target. It's really MSC Chimbugude managed to come back with some excellent finish in the over, and especially the Naushad Kiribel is producing some important innings for his team. First ball, nicely plays it down to backward point region. Good piece of fielding there by the fielder. Just some chance of run out. The fantastic work there from Naushad Kiribel. Just we are talking about this man. He's batted well as he came as a number 8 batter and got some runs. And he got a finishing touch for his team and now he's fielding very well. But here is Arshit is off the mark. And the first ball, the batter Arshit is off the mark with a single, one without loss of any wicket. Second time in this over. Right arm over the wicket, Imran. This time improvising quite nicely. Down to deep, fine leg region. Good piece of fielding there by the fielder. In comes a throw from the deep. Oh, batsman struggling, but wicketkeeper fails to collect the throw from the fielder. It might be the close one if the fielder is able to approach the stumps with the ball. But ball just missing his hand. The batsman Darshan this time able to complete that couple of runs. 3 without loss of any wicket. This time Darshan just allowed the ball to coming into his bat. Played some improvising shot down to fine leg region. You know exactly, fine leg and square leg inside the ring. And he wanted to pass that one between that one. Of course he succeeded, but a good piece of fielding there by the fielder. 3 without loss of any wicket. Imran, right arm over the wicket, bounce, went for the reverse sweep, going for the run, a chance of run out, but Ashit is so quick, good judgment of the run. It's from the leg by call by umpire. One more addition to total, scoreboard numbers on to 4 without loss of any wicket. Four without loss of any wicket. Imran bowls, batsman tries and on his follow through, tried to stop the ball but misses it completely. Ashit not missing opportunity to complete the single. With that single, scoreboard moves on to 5 on the board without loss of any wicket in the over number first in progress. Darshan is on strike now. This time off. That ball definitely going to miss the leg stump, and even it's gone from the bat as well. It's not going to be bad, but I think it's going to be a little bit that ball going down the leg stump, being seeing the direction of the ball, which is going little bit down the leg stump. One more addition from the bat for the batter. Darshan got his third run. Scoreboard is 6 on the board without loss of any wicket. Right arm over the wicket. This time ball is in there and ball is landed safely between Sadiq and Naushad at backward point region, the cover point region. First over completed, chasing 38 to win this match. Imran bowled not a bad over, seeing that he's bowling against Ashit, one who scored a fantastic 37 runs in the previous match. It's not so easy keeping this man quiet, but 7 runs, which is quite enough, I think, for NFC Rua to get a good start. Thirty-one more runs required for the victory.
So 38 is the target. Oh, what a shot! What a shot there from Ashit. It's a no chance. Oh, of course, there is opportunity for Sadiq to run back to field the ball. Once it looks like ball when it's traveling, but it's not the shortest part of the ground. It's one of the longest part of the ground as far as the UCG cricket ground is concerned. The ball which is not really traveling quickly in that region. That was in the deep backward point region. But Ashit is looking pretty good. 9 without loss of any wicket. Again, Daryl. Right arm over the wicket bounce. This one drives but on lack of placement. They're going for the quick chance of run out wide throw coming from the field. The batsman survives in the negation from that run out. The batsman hits the ball pretty hard into the hands of the fielder, but the fielder not really able to hit the stump, and batsman survives. It's a 10 without loss of any wicket in the over number 2 in progress. This time again went for the sweep shot, then the batsman complete the single in the form of bye, and with that bye scoreboard numbers on to 11 on the board without loss of any wicket. 27 more runs required for the victory, and in this over Daryl bowling the last over of the power play. He wanted to restrict the runs for the NFC Irva because so important here for MFC Chimbugude to restrict the flow of the runs. Again, that ball just going down the leg stump, but well within the reach of Arshit, and no chance of any run there. And so far, Daryl managed to keep this man very quiet in the second over of the innings of NFC Irva. Daryl again, right arm over the wicket bounce. This time tries lack of placement. Set to the answer fielder. Darshan this time not really going to survive. He's out of the crease, direct hit from that mid-on fielder. And the MSC Chambuguda has got a very important breakthrough after hitting the ball directly to the hands of mid-on. And mid-on fielder making no mistake at all. It's the stumps. Darshan short of his crease. The first wicket is back into pavilion of NFC Irva. So 11 for the loss of 1 wicket. So far, it's a very good over is continuing here from Daryl. It's not so easy to come and bowl in the power play overs, but so far he's able to keep this man very quiet. Arshit. Daryl again. Right arm over the wicket. Bowls again. A quicker one, faster one. Beaten by the pace. Excellent over. Leg by call by umpire. Over number 2 completed. After completion of over number 2, I think the both opening bowlers managed well to keep the batsman quiet, but good runs on the board for NFC Irva. Nothing much worried about the runs what they got. 12 runs they got, and in the remaining overs. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಫೈಟರ್ ಥೋಡರ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದಂಥ ಹಫೀಜ್ ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಫೀಜ್ ಮಾಲಕರು ಹಫೀಜ್ ತೋಡಾರ್ ಮಾಲಕರು ಫೈಟರ್ಸ್ ತೋಡಾರ್ಸ್ ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು
ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 12 for the loss of 1 wicket. 26 more runs required for the victory. And 4 overs remaining. 24 balls and 26 runs required for the victory. The match is evenly poised. Imran to continue, starts with a beautiful delivery again. Arshit fails to make a contact with the bat. Wicketkeeper behind the stump did the rest. Twelve for the loss of 1 wicket. Again the bowler, Daryl balls, right arm over the wicket, going for the drive again, missing it completely. Arshit is little bit, looks like he's struggling in the middle after his explosive knock of 37 runs in the previous match against Friends Kuttar. There again, right arm over the wicket. Ooh, that ball very much close to the stumps, isn't it? He's very lucky indeed. Absolutely lucky. By call by umpire. It's going to be a huge wicket for MSC. And what a fantastic piece of bowling that from Imran. It continues here. And again, Arshit struggling in the middle. 13 for the loss of 1 wicket. And 16, 25 more runs required for the victory. Fantastic bowling performance here from Imran as well as Daryl. Right arm over the wicket. This time captain playing that reverse throat quite beautifully. No chance at all for the fieldsman. Just breaking the shackle. The captain playing his captain stroke. Just really going to release the pressure. That boundary will going to release the pressure. And that will going to relief for the more than the captain Ranjit. I think is going to be a relief for Arshit. Because after playing his dotted deliveries, that boundary will going to release the pressure from Arshit. And 17 for the loss of 1 wicket. Absolutely fantastic improvisation by playing the reverse sweep. Using the pace of the ball and perfect execution down to deep third man boundary for 4 runs. Once again try to repeat that one. Almost looks like it's going to be a one more delivery. What Ranjit can do the same thing, but this time ball just missing his bat. The wicketkeeper behind the stump did the rest. Back to bowler. Daryl, connection Imran, right arm over the wicket. Was Ranjit lofted that one. Opportunities there for the fielder. I don't think any opportunity here. Is a 6 run signal by umpire. The fielder is there, but the fielder is not in the position. That was a straight long on, and batsman choosing that mid wicket and a deep long on. It's a cow corner. Fielder is tried his level best to reach there, but ball just defeating his trying hands, and ball just hitting the spectator gallery. And seeing the frustration there, we can see the fielders asking that fielder why you are not try to pull the ball inside the boundary line. But 6 and a boundary there from Ranjit. Absolutely fantastic knock there from the captain. In 1 hour he picked up a boundary and a 6, and takes his team into right position of winning this match. 23 for the loss of 1 wicket. Another 15 more runs required for the victory. The first ball, and Arshit drives straight to the hands of long off. The struggled innings pieces comes to an end of Arshit. Looking for the massive stroke, not really required after Ranjit just got a boundary and a 6. And it's not really required in this situation now. And losing a wicket means you are losing the momentum of winning this match. But now I think a right time for MSC Chambugude. Maybe they're now thinking about that, the boundary and a 6 in that over. Absolutely
that will going to be a costly here. So a lot of discussion is going on between the fielders, captains. Just talking about Naushad Kirebail is maybe having some game plan. Talking about him, he is the one who started Ulala Media, and in that media his introduction is given for the former cricketers, because in the olden days there is no live telecast, and if the youngsters, the young players, the young generation wanted to know the legend players, he brought some legend players in that Ulala Media by making an interview, and it is really done a great concept of bringing that the former cricketers in that Ulala Media, and that becomes very popular, and especially the interview of Chetan of Reliance cricketers, Iqbal of Gori Young Boys, Pradeep of Young Friends Urva. Again, one more single is added to total. And with that single score, moves on to 25 for the loss of 2 wicket. Rohan of Young Friends Urva, some popular players, has got an interview in that Ulal Media. Again, nicely turns that one to the square leg division, but not more than a single in the negation. Both the batters realizing that no need to panic at all, just rotation of strike which is required. Not only is introduced the players, the former cricketers, but even introduced some the present cricketers in that Ulala Media, and talking with the stars of Underarm cricket with the title, talking with the stars of Underarm cricket, and almost some stars has been introduced. There's a lively pedaling shot there from Ranjit down to deep backward square leg region for a single. With the single score, moves on to 27 for the loss of 2 wicket in the over number 4 in progress. This time catch it is a call, and a catch is taken. Just now we are just thinking about that a boundary and a sixes, how much it becomes costly for MSC Chembugude. But still they got opportunity to back into this game. 4 overs completed, 27 on the board, 2 overs remaining, and 11 runs required for the victory. 12 ball, 11 runs required for the victory. It's a very good comeback here by MSC Chembugude. Never looks like they will going to give that much of fight for NFC Urva. After they got a shackling start, they lost 3 wickets for 4 runs, if you believe me or not. Then they got some runs in the second over of Ranjit's over in the form of extra. Then in the end, Imran, Zunaid has got 1-6, and Naushad Kirebail has got some useful 10 runs in the slog overs, and that's what they are really fighting in that runs. They are really fighting in that runs. 12 balls, 7 runs required for the victory. Ranjit, the captain of the side, NFC Urva, know exactly what kind of batting required. Pradeep is a newcomer, is in non-striker zone. Right arm over the wicket balls. This time, what a shot! This is an outstanding reverse stroke. Unbelievable reverse stroke. Doesn't look like the right-hand batsman hitting the ball. It's all was so easy. It's so easy. Just look at it on a replay. How quickly Ranjit plays it on. Just looks like a left-hand batsman hitting the ball down to deep backward square leg for a huge 6. Whenever looks like MSC will go into bounce back, immediately the Ranjit hitting the boundary, the runs. He released the pressure once when it was asking that is climbing up by hitting 1 boundary and a 6. Now when it's 11 required from 12 balls, he hits 1-6 and takes his team into comfortable position. 6 to get. 5 to get. Lip question. Top edge. Opportunity for the wicketkeeper behind the stump. Oh my goodness.
Not a quick running there from the wicketkeeper behind the stump. Ranjit survives from the wicket. Just a 4 runs required for the victory. Kalandar, right arm over the wicket. Balls wide outside the left leg stump. Going to be a one more extra. Now it looks like it's going to be NFC Urva. They are in a driver's seat. Just 3 runs required for the victory. This time looks like the match is finished in a style. And it's a huge stroke. And Pradeep finished the match in a style with a 6. The 5 minutes break for NFC Urva. After that 5 minutes of break, they will go into play against Team Matrix. And so that I request all the players of NFC Urva, first you need to complete the signatures. Hard luck MSC Chembugude. They really fought hard for that low score. 38 runs, they are not really able to defend that one. But unfortunately, that's a one boundary, that 1-6, which is going to be costly. And that's what the MSC Chembugude couldn't manage to defend that total. But they got a very good fight here. I request the captain of MSC Chembugude, please come here and collect your memento from our chief guest for your representation for this cricket tournament. At the same time, it's a time for announcing the man of the match. It's a Ranjit, the captain of the side, is judged as the man of the match. May I request Ranjit to please come and collect your man of the match for your outstanding all-round performance. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿ NFC ಉರ್ವ ತಂಡದ ರಂಜಿತ್ ರವರು ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ 19 ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ರನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಅವರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ರಜಿತ್ ಇವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. So Ranjit is now receiving the man of the match award from Mr. Rajit because of his all-rounding performance. He scored 19 runs from the bat, and in the bowling department he captured 2 wickets, and because of this all-rounding performance he bagged the man of the match award. So congratulations for him, and best of luck for the rest of the matches of this tournament, Mr. Ranjit of NFC Urva. Thank you. ಅದೇ ರೀತಿ MSC ಚೊಂಬುಗುಡ್ಡೆ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಕರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. MSC ಚೊಂಬುಗುಡ್ಡೆ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಕರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು
MSC Chambugudde, the captain, please to be reported here to receive the memento from the organizer. MSC Chambugudde ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಸಂಘಟಕರಿಂದ. ಅದೇ ರೀತಿ MSC ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆ ತಂಡದ ನಾಯಕ ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಹಫೀಜ್ ಪೈತಡ್ಕ ಇವರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ MSC ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾವು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಅಲ್ಲೇ ಟೀಮ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ NFC ಉರ್ವ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. NFC ಉರ್ವ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಟಾಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ವಿತ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್.
धन्यवाद सतीश। तो यहाँ पर मैच शुरू हो जा रहा है एनएफसी उर्वा और टीम मैट्रिक्स के बीच में। टीम मैट्रिक्स टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय जो उन्होंने लिया, फलस्वरूप दोनों आरंभिक बल्लेबाज इस वक्त एनएफसी उर्वा को क्रीज पर मौजूद। दर्शन और हर्षित और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए तस्लीम। तो दर्शन और हर्षित एक बेहतर साझेदारी पिछले मैचेस में दे चुके हैं और देखना यह है कि इस मैच में वो बेहतर साझेदारी अपनी टीम के लिए देते हैं या नहीं। सलामी बल्लेबाज के तौर पर ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज तस्लीम, गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाता है। पहली गेंद एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पीस ऑफ विकेट कीपिंग मेड बाय विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप्स। और गेंद के इस वक्त मोड़ना चाहता, हड़बड़ाहट में क्रीज से कुछ आगे निकला है और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथ में और विकेट कीपर ने तेजी के साथ विकेट यहाँ पर चटका दिया। तो इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है 0 पर। इट्स नॉट फॉर 1 इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। दिस इज एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पीस ऑफ विकेट कीपिंग मेड बाय विकेट कीपर एट दिस सिचुएशन। तो पहली गेंद पर गोल्डन डक के रूप में दर्शन की पारी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। 0 पर पहला विकेट यहां पर खो चुका है एनएफसी उर्वा। इट्स नॉट फॉर 1 इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए अपने ओवर की माफ कीजिए, नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार तस्लीम की गेंदों का। जहां तक तस्लीम का सवाल है, इस टूर्नामेंट में इस श्रृंखला में बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन उन्होंने दिया है और यहां पर भी इस मैच में भी उस सफलता के सिलसिले को यहां पर आगे बढ़ाते नजर आते हुए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज वैशाख इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को स्विंग किया डीप मिड विकेट पर, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा और एक रन के साथ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ನಜೀರ್ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇವರೇ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಉಚಿತವಾಗಿ ಇವರ ನಮ್ಮ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಕುಂಜತ್ಪೇಲ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸಿ ಹಲವಾರು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಇವರು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ನಜೀರ್ ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ ಸರ್ವ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮಗಿದು ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಶ್ರೀಯುತ ನಜೀರ್ ಅವರೇ, ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಅವರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ पंद्य कड़े ಹೊರಳೋಣ. इस बार गेंद को खेलना चाहता और जहाँ तक सवाल है रनों का तो रन इस बीच नहीं मिलेंगे और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 1 रन बिना किसी नुकसान के। और जहाँ तक सवाल है तस्लीम का, तो तस्लीम एक बेहतर लेंथ लाइन के साथ यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए, और जहाँ तक सवाल है इस वक्त स्ट्राइक का तो हर्षित ने पिछले मैचेस में बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिया था और इस मैच में उस सफलता के सिलसिले को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश में दाहिने हाथों पर विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज तस्लीम की गेंद स्वीप करना चाहा, नॉट क्वाइट मिड विकेट एट द लास्ट मोमेंट, फॉरवर्ड शॉट लेग पर गेंद पहुंची और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और इस 1 रन के साथ 2 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर यहां पर प्रगति पर तस्लीम एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हैं। वैशाख का सामना इस वक्त करने के लिए तैयार। तस्लीम अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर विकेट वैशाख के लिए ये गेंद इस बार चिप किया लॉन्ग ऑफ पर, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और इस बार एक टिप्पे के बाद जब तक गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। ऐसा कहना पड़ेगा नॉट सो क्वाइट गेट दैट वन फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट द लास्ट मोमेंट एंड बिकॉज ऑफ दैट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बेहतरीन ओवर की समाप्ति यहाँ पर तस्लीम की हो चुकी है जिसमें सिर्फ 3 रन उन्होंने प्रदान किए और पहले ओवर की समाप्ति के बाद
एक मिक्स स्टार्ट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इस वक्त कर चुका है एनएफसी उर्वा। 3 रन जोड़ चुका है 1 विकेट के अनुसार पर 3 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर। और जहाँ तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है एनएफसी उर्वा का, तो हर्षित की उपस्थिति उनके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके की बल्लेबाजी हर्षित ने पिछले मैचेस में की है उसे मद्देनजर रखते हुए ये कहना मुनासिब होगा कि हर्षित अगर जितने भी ज़्यादा ओवर यहाँ पर टिकते हैं उतना एनएफसी उर्वा के लिए बेहतर होगा। तो इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए निज़ाम, दूसरा ओवर शुरू होता हुआ और स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार वैशाख का। फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलती हुई दूसरा पावर प्ले ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ और अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार था। इन्हें तो बढ़ता विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, गेंद को इस वक्त छोड़ दिया विकेट कीपर के हाथों में। रन्स बल्लेबाज को नहीं मिलेगा, स्कोर रुक चुका है इस वक्त 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रारंभ हो चुका है, एक बार फिर से गेंदबाज दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार पैरों पर टकराई, ऑफ स्टंप पर आती हुई लेग स्टंप शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद निकलती हुई और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 4 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर, अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी करते हुए निजाम, दाहिने हाथ के बल्लेबाज रक्षित इस वक्त हर्षित इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं और वो सामना करते हुए इस वक्त निजाम की गेंदों का। ये गेंद इस बार मौका था कवर पॉइंट फील्डर के लिए, लेकिन गेंद उनके ऊपर से निकलती हुई इस वक्त डीप कवर पॉइंट पर और आखिरकार 2 रन बल्लेबाज को मिलेगा। स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को इस वक्त स्कूप किया था और कवर पॉइंट फील्डर के पास मौका था, ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए गेंद को लपकने का प्रयास उन्होंने जरूर किया, लेकिन गेंद उनके हाथों को चीरती हुई सीधे डीप कवर पॉइंट सीमा रेखा पर जब तक बैकअप हो बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 6 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। अगली गेंद के लिए तैयार, ये गेंद जब किया स्ट्राइट इनटू द हैंड, ड्रॉप दैट, ही ड्रॉप दैट वन, सेकंड कंसेक्यूटिव लाइफ फॉर हर्षित। और यहां पर भाग्य उनका बार बार साथ देता हुआ, पहले कवर पॉइंट फील्डर ने कैच छोड़ा लेकिन वो मुश्किल, कुछ हद तक मुश्किल सा कैच था, लेकिन यहां पर ये कैच बिल्कुल आसान था। देखिए किस तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच टीवी मॉनिटर पर दिखाया जा रहा है। गेंद को इस वक्त लपकने का प्रयास किया था लेकिन गेंद को लपक नहीं पाया और गेंद उनके हाथों से छूटती हुई और बल्लेबाज जीवदान के साथ साथ 1 रन यहां पर प्राप्त करते हुए सिंगल रन एडेड टू द टोटल 7 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और इस बीच गेंदबाज निजाम गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार पैरों पर टकराई, गेंद इस बीच कुछ हद तक बाहर की ओर निकलती हुई और जहां तक सवाल है तो रनों का, आई थिंक इज गॉट अ बैट ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट और वरना निश्चित रूप से यहाँ पर एक नजदीकी मामला हो सकता था पकबादा के लिए। तो 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 8 for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress। फिर से एक बार गेंदबाज निजाम गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त स्लिम डाउन क्षेत्र पर, फिर से एक बार रन के लिए दौड़ पड़े और यशस्वीतम रन यहाँ पर पूर्ण करते हुए ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति, कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन बच चुके 1 विकेट के नुकसान पर। 9 for the loss of 1 wicket after completion of 2 overs for NFC Urva after being losing the toss and put to bat by Team Metrics in the match number 7 of the day 2 of Yuvaratna Trophy 2023 which proudly organized by Team Fortune Mangalore। और कुल मिलाकर अब उनकी पारी में 4 ओवर का खेल बाकी और देखते हैं इन बचे हुए 4 ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन बटोर पाते हैं। तो हर्षित के लिए 2 जीवदान लगातार 2 गेंदों पर वो प्राप्त कर चुके हैं और अगर रक्षित एक बेहतर पारी यहाँ पर खेलते, एक लंबी पारी अपनी टीम के लिए खेलते हैं तो निस्संदेह ये कैचेस छोड़कर जीवदान देना टीम मैट्रिक्स को काफ़ी भारी पड़ सकता है। तो गेंदबाज साई शक्ति एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए तस्लीम जो कि अपना दूसरा ओवर यहाँ पर प्रारंभ करते हुए और तीसरा ओवर शुरू होता हुआ एनएफसी उर्वा की पारी में फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छाते हुए लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट इस वक्त मौजूद, डीप एक्स्ट्रा कवर और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग इस वक्त तैनात। ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज तस्लीम गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए
दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद स्वीप किया इस वक्त खूबसूरती के साथ डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद पहुंची और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता। बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 2 अंकों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। 10 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर प्रारंभ हो चुका है और इस बीच तस्लीम गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। वैशाख तस्लीम की गेंदों का दाहिने हाथ ओवर द विकेट। तस्लीम इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहा, गेंदपति बैक टू द बॉलर की दिशा में है और इस बार भी भाग्य हर्षित का साथ दे चुका है। निशाना वहां पर चूकता हुआ और बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ यहां पर बदलते हुए, अगर निशाना नॉन स्ट्राइक रन पर सही बैठता तो निस्संदेह हर्षित की पारी पर पर्दा गिर सकता था, लेकिन निशाना चूका और बल्लेबाज क्रीज पर सुरक्षित वापिस लौट चुके हैं। 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर 11 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए तस्लीम दाहिने हाथ ओवर द विकेट हर्षित के लिए अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया, स्क्वायर ऑफ द विकेट खूबसूरती के साथ डीप एक्स्ट्रा कवर पर गेंद पहुंची। जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका है। 12 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर 12 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। लोअर प्रोग्रेसिंग ईयर ना फॉर एनएफसी उर्वा और एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज टीम मैट्रिक्स के तस्लीम अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद इस बार उछाला डीप मिड विकेट पर फील्डर थोड़े से पीछे मौजूद। आफ्टर फर्स्ट बाउंस पहले टिप्पे के बाद गेंद को जब तक फील्ड करे फील्डर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 13 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर। रन से ज्यादातर सिंगल्स के रूप में इस वक्त बनते हुए तो 13 रन इस वक्त बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाज की ओर की अगली गेंद। दाहिने हाथ के बल्लेबाज हर्षित इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद इस बार उछाला लेकिन खाली क्षेत्र ठीक तरह से चुन नहीं पाए और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता लॉन्ग ऑन पर 1 रन का इजाफा हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 14 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। जबकि उनकी पारी का तीसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ तस्लीम इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार। तस्लीम ये गेंद इस बार तेज तरीके की विकेट कीपिंग लेकिन गेंद कुछ ज्यादा हद तक ऑफ स्टंप से लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे। विकेट कीपर ने जब विकेट चटकाया बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद थे तो इस वजह से सब कुछ सुरक्षित उनके लिए। 3 ओवर की समाप्ति 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। द बैट्समैन ऑफ एनएफसी उर्वा सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक। 3 overs completed 14 runs on the board and 3 overs remaining in overall calculation in their innings। और देखते हैं इन बचे हुए 3 ओवर में उनकी पारी में क्या क्या होता है। और इससे पहले कि चौथा ओवर प्रारंभ हो माइक्रोफोन पर अंग्रेजी में अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सतीश को आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए। आइए सतीश, धन्यवाद, थैंक यू। Thank you very much, Gopi. The fantastic performance continues here from the bowlers of Team Matrix. In the first 3 overs, they really managed to keep the batsman quiet, especially Arshit. And of course, now the Vaishak is a new batsman, just came into middle. And wait and see how long they will going to keep this man quiet. But so far, I think Team Matrix, they won their... the first 3 overs belongs to Team Matrix because they restrict the runs of their opposition, NFC Urva. Nizam to continue. Second and last over is caught up. First ball lofted, but fielder is there in the long off. Just I mentioned about wait and see how long they will going to keep this man quiet. But they're not only keep this man quiet, but at the same time sending that player too early into the pavilion. Even though Arshit has got a 1-2 life
in the first and second over, but he couldn't manage to capitalize that one. And he's back into pavilion. Absolutely, it's a big fish in the net here for Team Matrix. The wicket of Ashit. But of course, after getting a wicket of Ashit, nothing much worried about the wicket of Ashit, because the man who really played an excellent and captain knocks in the previous match is now walking towards the middle. Captain of the side, Ranjit. So Ranjit is walking towards the middle, and the perfect captain who can handle the pressure very well. And now I request for the next match, Team Bail Ashok Nagar as well as Zaman Boys Kaladka, two teams captain, all the players please report here immediately to sign the official chart. Ali Team Bail Ashok Nagar ಹಾಗೂ Zaman Boys Kaladka ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಂಜಿತ್ not quite able to play that, able to drive that one properly. Maybe they're just losing the grip over the top end, but he managed to get the single while driving, managed to get the single by driving the ball down to cover point region. 15 for the loss of 2 wickets. Ranjit is off the mark. And Nizam will go into Nizam will go into ball the third ball of this over. He got a big wicket of Arshit in the first ball. Right arm. Over the wicket. Oh, what a shot. This is just a stand and delivered into the commentary box, and ball is hitting the not only the roof, but I think it's hitting the fan. What a shot. What a shot there from Vaishak. Vaishak just shocking everyone. Big with that magnificent straight hit. Straight into the commentary box. 21 for the loss of 2 wickets. This time, chance of catch. Oh, what a catch. What I want to see the umpire decision. It's the umpire says it's not out. I thought it might be the catch, but maybe the ball is just hitting the ground and hitting the pad and ballooning up in the air. And look at the fielder there, Extrakawa, is a little bit going towards the right hand, takes a one-handed catch. Now umpire Roland Pinto having conversation with Mohan Ayad, the squad umpire. And after having a conversation, it's all up to the umpire. Now umpire referring for the third umpire. And Sriraj will be the third umpire, will going to decide will it going to be out or not. But it's something is very difficult. Having a limited technologies, you need to find whether the ball which is hitting the ground or the pad. If it is a bat and pad, then batsman is out. If it is a ball hitting the ground and hitting the pad, means batsman is not out. Sometimes it's very difficult to find because hardness of the ball. Sometimes it's a hardness of the ball. Maybe the ball after hitting the pad, ball is hitting, ball ballooning high up in the air. And just want to see here what really happened. The difficult job for the third umpire and even for the technicians to see whether the bat hitting the ball or it is pad hitting the ball. So very interesting. Bat and pad and pad and bat. Anything will be going to happen. The batsman will be out, but they need to see that before the ball is hitting the pad, whether the ball hits the ground. That's what umpire want to see. It's a very difficult angle for the technicians to get, and difficult for even for the third umpire as well to see. And it's all to the, I think it's going to be the field umpire have to decide, because sometimes it's very difficult, isn't it? Even technology is so much advanced. If you can get that one in international standard matches, the ultra edges and zooming facilities. But of course, the Bedra Media
Irfan definitely will going to give some good angles to get the best result of this decision. Coming back to the next match, once again I mentioned about Zaman Boys Kaladka will going to take Team Bail Ashok Nagar for the next match. I request all the players of both the teams, please report here in the commentary box and under the commentary box for the registration of the player's name and for the signatures. Now here you will going to get the angle. The not out, which is the call from the third umpire, and ball just before ball hitting this leg, ball just landed to ground, and then ball is hitting the boot and ballooning up in the air, and that's what umpire Roland Pinto, rightly so, because that was a very difficult one because it's very close, isn't it? Very close, and the good umpiring, Roland Pinto, and all that we can see that his experiences comes into play. It's not so easy decision, and even Mohan Nayadi also getting that the same view that might be the ball is before hitting the boot, ball is grounded, and 21 for the loss of 3 wicket. 22 for the loss of 3 wicket. Bowler's back drive. Oh my goodness, Vaishak is going for the run. Vaishak is going for the blind run, not really required in this occasion after losing a wicket of Arshit, losing one more wicket and F0 in a deep trouble. But Team Matrix suddenly they are happy to see that they are really controlling the condition, controlling the situation very well with their tidy line and length. Nizam bowls Ranjit again not quite getting that one from the middle of the bat, running hard, looking for the second. In comes the throw. Ranjit is gone. Direct. It is a huge wicket for Team Matrix. Ranjit unnecessarily looking for the second run, even though he's not running towards the danger, and he thought that the fielder will going to try the run out in the non-strikers, and that's why he's not running quickly. It was surprising Ranjit seeing that ball hitting the stumps. That time he's out of the crease. The man who really played a fantastic game of cricket in the previous match, the captain walking towards the pavilion. Four overs completed after completion of over number 4. 23 for the loss of 3 wicket. So Ranjit back into pavilion after scoring 2 valuable runs, but I think it's going to be a fantastic piece of fielding there by the fielder. Good presence of mind, isn't it? Even the opportunity is there in the non-strikers end, but he's just aiming towards Ranjit's wicket. They know exactly it's going to be a huge wicket for Team Matrix. New batsman in is Pradeep. Still, its run rate is under 6 runs per over. That shows the Team Matrix how well they managed to bolt in this last 4 overs. But job which is not yet over. They have to bowl another 2 good overs, and NF0 have to get some acceleration of run rate.
Mustafa is on action from the far end. Right arm to Vaishak. Vaishak drives that one back to deep long on region. A pummel from the fielder, grabbing the opportunity. Pradeep is a very good runner between the wicket. Seeing the opportunity that the fielder is there in the deep long on. Taslim, little bit fumble. And he is calling his partner for the second and responded well by Vaishak because he is the one, he is running towards a safe end. And Pradeep is the one, is running towards a danger end. 25 comes off here for NFC Urva. 25 for the loss of 2 wicket in the over number 5 in progress. Mustafa, right arm round the wicket to Vaishak. Vaishak drives it on straight to the hands of our fielder. And Pradeep is out of the crease for a long way. And it's outstanding fielding performance there by the bowler on his follow through Mustafa. But Vaishak tried to hit the big shot but mistimed that one. Ball went straight to the hands of the bowler and the bowler making no mistake at all to complete the formalities of run out. Pradeep gone without scoring a run, without facing a single delivery. Rakesh is the new batsman in his announced like a Zen. Vaishak will going to face next delivery from Mustafa. He is angling around the wicket. Balsad just tries that one opportunity, one no wicket. Wickets are tumbling here of NFC Urva. Like a house of cards. It's 25 for the loss of 5 wicket. NFC Urva lost one more huge wicket. Vaishak after hits a 6 in the previous over, then he is also coming towards the pavilion, walking towards the pavilion. And now new batsman Sandeep, the most experienced campaigner, walking towards the middle. That needed some sensible batting here for team NFC Urva. The team Matrix, they continue their excellent performance in this match as well. Outstanding performance from Team Matrix so far. Right arm round the wicket, Mustafa. Bowls to Sandeep. Sandeep went for the reverse sweep. Catch it is a call. Sandeep wanted a run, but his partner is not interested. Dotted delivery. Each and every dot ball will going to create the problem for NFC Urva to get some competitive total. It's been outstanding performance continues here from the bowlers of Team Matrix. Mustafa is looking so good in that over. 2 wickets. One in the form of run out, one in the form of catch out. Mustafa bowls. Batsman went for the big shot and again one more wicket is back into pavilion. Short mid wicket fielder, the Sadiq there in the short mid wicket. One who drops the catch of Ashit is now not missing the opportunity to send Sandeep back into pavilion. Sandeep is also out for duck. The wickets are tumbling here of NFC Urva. It's a 25 for the loss of 6 wicket. Last ball remaining. 25 for the loss of 6 wicket. And new batter, Suraj, bowling from the far end. So far it's a great over. The great over for Mustafa. 2 wickets. Altogether 3 wickets. One in the form of run out. The 2 wickets altogether in this over. The Mustafa is doing a fantastic job here for Team Matrix. Suraj is a striker. Mustafa will go into ball the final time in this over. Right arm, round the wicket bounce. This time tries. It's going to be one more wicket. One more wicket.
The third wicket is back into pavilion. It's a 25 for the loss of 7 wicket. Absolutely dramatical collapse. Dramatical collapse here for NFC Urva. The wickets are tumbling in this particular over. 3 wickets. Altogether 4 wickets back into pavilion is in that over. That shows how badly NFC Urva batted here. How badly they batted here. Looking for the big shot. And throwing the wickets. And putting themselves in tremendous pressure. Last over remaining for NFC Urva. After being an outstanding performance from NFC Urva in the last 2 matches against the disciplined bowling performance of Team Matrix, all the batsmen have fails. Now umpire just asking the fielding team to continue quickly. Again going for the quick single chance of round in the second side. It's going to be umpire Roland Pinto given a wide and then asking for the third umpire. Now it's very interesting to see that when the throw is came from the field, when the stumps are uprooted, whether the batsman is safe or not, that's what the third umpire have to see. Sri Raj. A very good piece of fielding continues here from Team Matrix. Batsman thought he is safe. Even the fielding team thought it going to be a 50-50. But the third umpire have to decide whether the batsman is safe or not. But I think the batsman did a great job. He drags the bat, isn't it? When you drag the bat into the line crease, always looks like the batsman will going to be a safe. But I need to see that when he drags the bat, when the bails are uprooted from the stumps, they need to see the batsman whether he is safe or not out. He is safe, not out, and we can see the body language just I mentioned about. Seeing the body language of the batter as well as the fielding team, it looks like the batsman is safe because he drags the bat. Rakshit drags the bat right in a time. Right arm over the wicket balls. Batsman drives that one down to Satish, down to deep extra coverage and looking for the second. But again, the fielding is so good of Team Matrix. It's a 28 for the loss of 7 wickets. Absolutely Team Matrix giving their 100% in the bowling and the fielding. Absolutely commitment. And excellent support from the fielding unit for the bowlers. Going for the big swing of the bat and wide call by umpire. One more addition to total. With the addition of that single score, numbers on to 29 for the loss of 7 wicket. So umpire just showing the watch that you are exceeded the time. You are taken more time, so that penalty. In the sense, you need to keep one extra fielder inside the ring. One fielder you need to keep inside the ring. That means not more than 4 outside the ring. This time top edge. Top edge and ball is travelling and travelling and travelling and into the trees, the branches of trees. 6 coming up here. This is not a cricketing stroke which is fully controlled. It's a top edge. If you believe me or not, it's a top edge there from Rakshit, but ball travelling high up and then ball hitting the branches of tree. Once it looks like the deep backward square leg fielder is going to underneath it, but ball is travelling into the branches of tree, and much required 6 came from the bat of Rakshit. Will it going to be a turning point? Rakesh Lipication, it is going to be a turning point of this match. The 6 in this condition, where it was very hard to combine the runs against the bowling of Team Matrix. And this man has got a fantastic strike. Again, driven firmly down to deep mid-wicket region. They're looking for the second. Oh, my goodness. Satish, his absence of mind.
Satish not to leave the stumps, isn't it? Satish not to leave the stump until his partner reached towards the striker's end. He need not leave the crease. That's what really happening here. Absence of mind. Now, the new batsman in is Prajvit. The very good throw from the fielder in the deep to make the run out of the danger man. Rakesh is back at the pavilion, but it's a small cameo from him. Really getting some runs here. The bowler's back right. Lucky, absolutely lucky. Look at the bowler. He really surprised Rauf. Why the ball is turned in a different way? Where the ball is gone in a different way. That ball is spinning. The ball went straight to the hands of the bowler. And when the bowler is trying to collect the ball is looks like this doesn't want to come into the hands of the bowler, and ball went in a different way. 37 for the loss of 8 wicket. Rauf, right arm over the wicket to Satish. Satish drives again, ball is in the air. Opportunity for the backward point fielder. He caught that very nicely. The one more wicket is back at the pavilion. NFC Urua have lost their 9th wicket. The last delivery of their innings is coming up, and the last wicket of NFC Urua is remaining. One more left-hand batter walking towards the middle. Jersey number 66. It's a right-handed batter. .37 for the loss of 9 wicket. Last wicket and last ball. Kiran, number 11 batsman. Can he able to get one big shot here? Just like what Rakesh did. This time he lofted, ball is in there, opportunity, and fielder not really able to reach there, and here is a batsman coming back for the valuable couple of runs. They're turning out for the 3rd run. Need to see that it's a big match will go into tie. The fall of wickets will go into comes into play. You can't underestimate the wicket. You can't underestimate the wicket because if the match will go into tie, the fall of wickets is going to be will going to take a big role. 39 for the loss of 9 wicket. At last, NFC Urua managed to get fighting total, in the sense it's not a winning total, it's a fighting total, and the fighting total in the sense a bowler have to fight a lot, need to fight a lot if they wanted to defend that total. And wait and see how team matrix will go into, the batsman will go into justify the effort of their bowler. The bowlers did a great job of team matrix to restrict the opposition for just 39 runs, and they set a target of 40 to win the match. It's going to be a more interesting second session of this cricket tournament, and for that I request Mr. Gopi to take over the microphone in our national language Hindi. Thank you.
धन्यवाद सतीश. So exactly 40 the target for team metrics set by NFC Ruwa. They batted first. They managed to score 39 for the loss of 9 wickets in the stipulated 6 overs. And now exactly 40 team metrics have to score for victory, and their innings now going to start. First ball comes off their innings. पहली गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद सफल होते हुए गेंद कौन साइड पर उछालना चाहता, चूंकि लेग स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रही थी गेंद, और सही गेंद घोषित अंपायर द्वारा, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है यहाँ पर 0 पर. इट्स नन फॉर नन इन द फर्स्ट ओवर. और फिर से एक बार रंजीत गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए निजाम इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. ये गेंद इस बार गेंद को ऑन साइड पर उछाला, लेकिन प्लेसमेंट कुछ खास सही नहीं है, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद थे, और 1 रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है. 40 रन बनाने हैं इस वक्त टीम मैट्रिक्स को, और 40 रन बनाने से रोकने हैं इस वक्त NFC रुआ के गेंदबाजों को. और जहाँ तक का सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो रंजीत इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर एक्स्ट्रा की विकेट गेंद थी, ऑन साइड पर उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट, और 1 रन इस बीच बल्लेबाज को मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 3 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. और गेंदबाज रंजीत एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद कौन साइड पर स्विंग करना चाहा स्टंप्स को कवर करने के बाद, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, और गेंद सीधे पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया, और इस बीच रन बल्लेबाज को नहीं मिला. 2 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है. पहला ओवर यहाँ पर प्रगति पर. रंजीत फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार. निजाम ये गेंद पैरों पर टकराई, गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, और इससे पहले के शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद को फील्ड किया जाता. 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यहाँ पर बदल चुके हैं, तो 1 रन उनके खाते में जुड़ चुका है, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के. पहला ओवर प्रगति पर. अब तक एक बेहतर ओवर साबित हो चुका है रंजीत का, और अपनी पहली अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया, नो बॉल का इशारा अंपायर का, और आखिरकार जब तक गेंद को शॉट थर्ड मैन पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का. नो बॉल की बदौलत इस वक्त ओवर स्टेप करते हुए, और नो बॉल की बदौलत इस वक्त फ्री हिट इस वक्त घोषित. और जहाँ तक का सवाल है फ्री हिट गेंद का, तो देखते ही हैं कि इस फ्री हिट गेंद पर बल्लेबाज किस तरीके का स्ट्रोक यहाँ पर खेलते हैं. निजाम इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और गेंदबाज रंजीत अपने ओवर की अगली गेंद फ्री हिट गेंद लेकर दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद इस बार गेंद को उछाला है, लॉन्ग ऑफ पर कैच आउट होगा तो भी बल्लेबाज बच जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि फ्री हिट गेंद है, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का. नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एट द लास्ट मोमेंट. गेंद टॉप पिच पर टकराई थी जरूर, और कैच वहाँ पर लिया गया था, लेकिन नो बॉल और फ्री हिट होने की वजह से यहाँ पर फ्री हिट गेंद होने की वजह से बल्लेबाज बच चुके. 1 रन का इजाफा हो चुका. 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और पहले ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है. तो एक बेहतर ओवर रंजीत का यहाँ पर समाप्त हो चुका है. 6 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के. पहला ओवर यहाँ पर समाप्त हो चुका है. और जहाँ तक लक्ष्य तक पहुँचने का सवाल है टीम मैट्रिक्स का, तो इस वक्त उन्हें चाहिए एक बेहतर आरंभिक साझेदारी अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए. और जहाँ तक सवाल है NFC उर्वा के गेंदबाजों का, तो इस वक्त उन्हें अगर टीम मैट्रिक्स के बल्लेबाजों पर अंकुश लगाना है, तो निस्संदेह एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर देना होगा. और इस बीच साई शक्ति एंड की ओर से गेंदबाज सतीश गेंदबाजी करने के लिए तैयार. और जहाँ तक सतीश का सवाल है, इस श्रृंखला में बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन उन्होंने दिया है, और देखना यह है कि उस सफलता के सिलसिले को क्या इस मैच में वो आगे बढ़ा पाते हैं या नहीं. दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहा, चूंकि गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया, और रन्स बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. 6 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है बिना किसी नुकसान के. सतीश एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, पैरों पर टकराई, कुछ हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, और अपील को अंपायर ने नकार दिया. और इस 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका 7 रनों पर. एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाज सतीश गेंदबाजी करते हुए, बल्लेबाज को कोई रूम या विड्थ इस वक्त प्रदान नहीं कर रहे कि बल्लेबाज खुलकर स्ट्रोक्स खेल सके. और सतीश एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, मोहसिन
इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। सतीश की गेंदों का दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद ऑन साइड पर स्विंग करना चाहा, चूके विकेट कीपर भी चूके और सिर्फ बाई के रूप में एक रन यहाँ पर बल्लेबाज प्राप्त कर चुके हैं। तो रन सिंगल्स में बनते हुए बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहाँ पर जारी रखते हुए गेंदबाज टीम माफ कीजिए एनएफसी उर्वा के, और यहाँ पर सतीश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद निजाम के लिए ऑन साइड पर उछालना चाह चुके। बेहतरीन गेंदबाजी, कुछ ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंद इस वक्त नहीं फेंक रहे हैं, बल्लेबाज को ललचा रहे हैं इस वक्त की वो ऑन साइड पर स्ट्रोक खेले, लेकिन टिप्पा खिलाने के बाद गेंद को इस वक्त नीचे रखने में सफल। आखिरकार इस गेंद पर भी बल्लेबाज को कोई रन नहीं मिला, तो अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज सतीश गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद इस बार उछाला मिड ऑफ पर, फील्डर के सिर के ऊपर से गेंद निकल चुकी है लॉन्ग ऑफ पर। मुश्किल सा मौका था, अपने ऊपर की ओर छलांग लगाई, गेंद को लपकने का प्रयास किया, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद उनके पहुंच से बाहर, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता लॉन्ग ऑफ पर एक रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर उनके पारी का यहाँ पर प्रगति पर, और इस बीच गेंदबाज सतीश अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिना हाथ ओवर द विकेट ये गेंद इस बार उछालना चाहा, हेलीकॉप्टर शॉट के तौर पर खेलना चाहता, नॉट क्वाइट मिडली गेट द लास्ट वन। एक रन मिला और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर, यानी 10 रन बिना किसी नुकसान के। तो इस ओवर में कुल मिलाकर रन बने सिर्फ 4। एक बेहतर ओवर रहा सतीश का। 2 ओवर की समाप्ति के बाद दोनों गेंदबाज रंजीत और सतीश जो पावर प्ले में जो गेंदबाज इस्तेमाल किए गए हैं अपने काबिलियत अपनी क्षमता के अनुसार गेंदबाजी वो कर चुके हैं और सिर्फ 10 रन प्रदान कर चुके हैं। अब 30 रन चाहिए, गेंदें बाकी है 24। 24 balls left and 30 runs more now they have to score for victory with a required run rate of exactly 7.50 runs per over. Still they got all 10 wickets kept intact, all 10 wickets they got in their hand। और देखते हैं इन बचे हुए 4 ओवर में 30 रन बचे हुए बल्लेबाज बना पाते हैं या नहीं। गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से रंजीत अपना दूसरा ओवर लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस बीच गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, चूंकि बेहतरीन गेंदबाजी परिवर्तन के तौर पर कुछ हद तक बाहर की ओर निकलती हुई लेग कटर गेंद थी। इस गेंद पर चकमा खा गए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिले। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज रंजीत अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद इस बार बाउल्ड आउट। बेहतरीन गेंदबाजी और मिडल और लेग स्टंप को चीरती हुई गेंद इस वक्त निकल चुकी है। ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता लेकिन गेंद टिप्पा खाने के बाद लगभग नीचे रहती हुई, और देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था। टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई मिड लेग स्टंप पर जा टकराई, गिल्लिया बिल्स डिस्टर्ब होते हुए और मोहसिन की पारी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। तो मोहसिन की स्ट्रगलिंग पारी पर पर्दा गिर चुका है। 10 रनों के योग पर पहला विकेट खो चुका है यहाँ पर टीम मैट्रिक्स को मिलाकर। ऐसा कहना पड़ेगा एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला इस वक्त जारी रखते हुए गेंदबाज एनएफसी उर्वा के। शाम का वक्त लगभग 5 इस वक्त बजते हुए 4:53 यहाँ पर बज चुके हैं और धूप का प्रकोप इस वक्त मैदान पर कम हो चुका है, लेकिन धूप का अस्तित्व अभी भी मैदान पर मौजूद है। ಅಶೋಕ್ನಗರ್ ಹಾಗೂ ಜಮನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಮನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಅಂಡ್ ಅಶೋಕ್ನಗರ್ टीम बैल अशोकनगर टू प्लीज रिपोर्ट टू द स्टेज इमीडिएटली फॉर टॉस। इस बार बेहतर गेंद थी ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन्स इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है 2 अंकों पर 10 रन एक विकेट के नुकसान पर। और अपनी अगली गेंद लेकर रंजीत इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी उछाल लेती हुई अंतिम क्षण में गेंद की उछाल को पहचानते हुए स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को खेला और जब तक गेंद को वहाँ पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। रन्स अभी भी सिंगल्स के रूप में बनते हुए 11 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर। और निस्संदेह
यहाँ पर बल्लेबाज टीम मैट्रिक्स के इस वक्त बंधनों को तोड़ने की पूरी कोशिश करते हुए, जस्ट ट्राइंग टू ब्रेकिंग द शैकल्स जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। और इस बीच गेंदबाज रंजीत अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए निजाम इस वक्त स्ट्राइक लेते हुए, और ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को डिफ्लेक्ट किया गया, जाती है फाइन इस वक्त फाइन लेग की दिशा में, और जब तक डीप फाइन लेग फील्डर भी गेंद को रोकने में असफल, और गेंद डीप फाइन लेग सीमा लेकर जब बाहर 4 रनों के लिए। शॉर्ट फाइन लेग से फील्डर दौड़े थे, लेकिन वहां से डीप स्क्वायर लेग से फील्डर दौड़ कर आए, शायद वो गेंद को रोक सकते थे, लेकिन अंतिम क्षण में कोशिश करने के बावजूद गेंद को रोक नहीं पाए, और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। 4 जरूरतमंद रन्स इस वक्त जुड़ चुके हैं टीम मैट्रिक्स के खाते में, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर यहां पर प्रगति पर, 3 ओवर्स, थर्ड ओवर का इन प्रोग्रेस, 15 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और एक बार फिर से गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए तैयार रंजीत, गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए निजाम सामना करने के लिए तैयार रंजीत की गेंदों का, और रंजीत दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, इस बार नॉन सेकंड पर खतरा, फील्डर गेंद पहुंचा जरूर, लेकिन इससे पहले कि विकेट कीपर का थ्रो पहुंचे गेंदबाज के हाथों में, बल्लेबाज क्रीज पर वापस लौट चुके थे और खतरे से बाहर हो चुके हैं। 3 ओवर की समाप्ति, और 3 ओवर की समाप्ति के बाद ऐसा कहना पड़ेगा अभी भी द बैट्समैन ऑफ टीम मैट्रिक्स आर स्टिल सर्चिंग फॉर द राइट हैंड। 15 runs scored in the first 3 overs, and still 25 more runs now they have to score for victory in remaining 3 overs. That means in 18 deliveries, and the required run rate is now gone up to exactly 8.34 runs per over. तो 3 ओवर का खेल बाकी है, और देखते हैं उनके इस बचे हुए 3 ओवर में क्या क्या होता है। 25 रन चाहिए 18 गेंदों में, 25 रिक्वायर्ड इन 18 बॉल्स। और इससे पहले कि चौथा ओवर प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अंग्रेजी में आगे का खुदे काल सुनाने के लिए सतीश को। आइए सतीश, धन्यवाद, थैंक यू। $15 for the loss of 1 wicket. 3 overs completed, and 25 more runs required for the victory. And it's going to be an equal battle is on. Nicely plays it down to deep backward point region. Oh my goodness, a little bit under the ball is just dating some part of the ground. Maybe that's a stone there in the ground, stopping the speed of that stroke. And batsman completed a couple of runs. So this kind of the placement and of course rotation of strike is more important for Team Matrix to win the match. At the same time, NF Sirwa doesn't want to give any opportunity to come back here. There's nothing wrong with that fall of wickets for Team Matrix. They lost only 1 wicket, and but question raising here is the remaining deliveries. Can they able to get their remaining runs? 40 is the target. 23 more runs required for the victory in 17 deliveries. Kiran, right arm over the wicket balls. Beautifully balled. Perfect one there from Kiran. Kiran is the one who's got outstanding tournament. The tournament which is played at Bajal. YFC Trophy 2023. Kiran is one who won the Best Bowler Award in the previous tournament, Netravati Trophy. This time, he's got that one right from the middle of the bat. Magnificent struck. And that 6 will go into release the pressure and brought Team Matrix strongly back into this game. Ismail has got a smile in his face after hitting that 6. What a shot. Nothing much wrong with the line of the delivery. Just here mentioning about the Kiran, one who got a fantastic tournament in the YFC Trophy Bajal. He's been punished
by Ismail. It's a 23 for the loss of 1 wicket. And 17 more runs required of victory. Pressure. Oh my goodness. Opportunity of run out. This time, wide call by umpire. What could be a chance of run out? The golden opportunity is missed out by NF Sirwa. And Team Matrix are dealing with some luck. 1 + 1, 2 extras. 25, 15 to get. What a match. Ball to ball run required now. 15 balls remaining. 15 runs required for the victory. Team Matrix just one stroke which is really changing the complexion of this game. Kiran. The bowling from the far end. To the right hand batsman. Nizam tries that one right in the gap again. The ball running towards the deep point. It's long on reach and they're looking for the second. In comes the throw from the deep. Batsmen are so quick in dedication to complete that couple of runs. Everything is going wrong here for NFC Rua, but everything is going right here for Team Matrix. After being settled down in the middle, both the batters started to get some runs here in the right time. 27 for the loss of 1 wicket. 13 to get. This time, Flum in front of wicket. Kiran got a wicket. Nizam is back into pavilion. And after he's got the very good start from the bat. And he got a stand for the wicket number 3. It's a 27 for the loss of 2 wickets. The last delivery remaining. 13 balls remaining. 13 runs required for the victory. The new batsman in. Ramesh. A little bit up and down in the batting order. Ramesh usually is opening batter. Opens innings for Team Matrix. Now he's coming as a number 4 batter. And wait and see. The surgery in the batting department will going to help Team Matrix or not. But Kiran is back. Kiran is back with some 2 good deliveries after that. 6 which is conceded. But job is not yet over. Sensible batting required for Team Matrix. But wicket taking and economical over required for NFC Rua. Kiran. Right arm over the wicket. Went for the reverse sweep. This time by going for the single. Wait for umpire signal. It's a bye. Wicketkeeper behind the stump phase to collect the ball. 1 more run. 12 balls and 12 runs required for the victory for Team Matrix. The water match is going on here. Looks like it's a 12 balls, 12 runs required for the victory. Even 12 balls, 11 runs is enough for Team Matrix to win this match. Because if the scores are level, match going to end in a tie. Then the fall of wickets comes into play. And so far, Team Matrix have lost only 2 wickets. But NFC Rua, they lost 9 wickets. That's what I mentioned earlier. You can't neglect your wickets. You can't throw your wickets. Because one small negligence can sink a big ship. Ismail is a non-striker's end. But in the strikers end, Ramesh will go into face his second delivery and first delivery of Prajwit's over. First ball, umpire called it a dead. The batsman is not ready here. And that's why umpire called it a dead ball. Prajwit is a key player now for NF Sirwa. Needed 1 good over badly for NF Sirwa. But sensible batting which is required for Team Matrix. Left arm. Balls beautifully ball. Perfect one. Now 11 balls, 11 runs, 12 runs required for the victory. 11 balls, 12 runs required for the victory. Prajit balls this time. Tip that one. Ball is in there. Ranjit is the captain. It's the safest pair of the hands. Will going to take the catch. What we are talking about, the surgery in the batting order is really not working out here for Team Matrix. Ramesh
Just tip that one half-hearted stroke, not really getting the timing behind the stroke. Pays the penalty for that. Ranjit down a deep cover point region, waiting for the catch. Completes the catch. Now 12 to get from 10 balls. So one more good match is now coming up. It's going to be anybody's game. Taslim, the key player for the side. Just like Ranjit, Taslim is also the very good all-rounder for the side of Team Matrix. He's got a lot of experience handling the pressure in the similar situation. By representing his home team, many times he takes his team safely home. But here his condition is so different. The Prajvit is looking so good in the first two deliveries. One dotted delivery, the second turn is a wicket-taking delivery. That means in this particular over, Team Matrix yet to get the runs. Taslim has got one fine leg, one at deep backward square leg. Mid wicket is there, deep long on. Short mid wicket to short mid off, short cover point, deep extra cover, deep long off. Prajit balls, went for the reverse save. Ball is served not too far away from the wicket keeper behind the stamp in the delegation. There is no question of any run. 3 consecutive dotted deliveries. 2 dotted and one wicket taking delivery. 12 to get from 9 balls. Pressure is mounting up now for the batter. Taslim. One fielder is kept in the deep third man region because Taslim is a very good reverse sweeper of the ball. And here's the Prajvit balls. Left arm, lofted handsomely. Down to deep long on down boundary for 4 runs. There is no fielder at all. That's the reason what I'm talking about. They kept one fielder in the deep third man for the reverse stroke. That's why they're called that long on fielder into long off fielder into mid off region. And Taslim is just waiting for the opportunity, hitting the ball over the top of the infield. Fantastic thinking, clever batting there from Taslim. Just like I mentioned earlier, who got the potential of handling the pressure. Then only they become the champion. It's absolutely poor thinking there by the captain's point of view. Not keeping the fielder in the deep long off. Again he tried to repeat that one. Wicketkeeper fails to connect the ball. It's absolutely a bad miss. By call by umpire. Again they're trying for the run out. My goodness, can you believe this? 33 for the loss of 3 wickets. What a match is going on here. One of the best matches. 7 balls, 7 runs required for the victory. The man who really changed the complexion of the match by hitting a 6. Ismail is back on strike. Ismail is back on strike, but job which is not yet over. From the bowler and from the batter. Prajit wanted one good over. Left arm. Balls. Went for the reverse sweep. Gets that one down to cover point region. They were not going for the second because Ranjit is a good fielder. Going against his throwing arm is always going to be asking for trouble. So Prajvit completes his over. Even though it's a better over, but one boundary really changing the picture of that over. And just I want to see how many runs conceded in that over by Prajvit. The 6 runs came from that over because of that one boundary. 34 for the loss of 3 wickets. 6 balls and 6 runs required for the victory. Now, the 5 in the 6, I think is enough for Team Matrix to win this match. But if NF0 wanted to win this match, they need to restrict just under 5. That means they're able to restrict 4 runs in this particular over. They can win the match because the target is of 40. The 5 runs will go into tie the match. 6 runs will go into win the match. 5 is enough for the Team Matrix to win the match. But NF0 doesn't want to concede that 5 runs. Altogether 6 required for the victory. Umpire asking to make it past the last over. Quite surprisingly, the different kind of bowler has been introduced. It's a Pradeep, first time. Pradeep has been introduced first time in this tournament. And Pradeep has to justify the captain decision. Why he's been asked for the ball that third for the last over. Ranjit not happy with the field set. They kept one deep long on. The one wrong field set
costing a boundary. If you tell me it's wrong or right, but I think not keeping a longer fielder in the slow overs, it might be the huge mistake as Taslim hit the ball right over the top of the mid-off fielder and got a boundary. Now Pradeep will go into ball. The last over, opportunities for both the teams. Match is going to be anybody's game. First 1 or 2 dotted delivery will going to keep the batsman into bowl him, clean him up. Pradeep is justifying. I already mentioned that the different bowler and the gamble which is played by the captain to bringing this man to bowl that last over. He just look at that one, a leg cutter. It's a leg cutter. The batsman tried to walk that an onside region without reading the turn of the delivery against the line. Ball hitting the off stump. Now 5 balls remaining. 6 runs required for the victory. Team Matrix have lost 4th wicket. Still they are not really bothered about the fall of wickets. The one reason that NF Sirva, they've thrown their 9 wickets. Now NF Sirva may be thinking about why you are thrown their wicket. Because when there is the fall of wickets comes into play, these all are the mistake will going to be tested. These all are the mistake will going to be tested. Why to throw the wicket? Because the Team Matrix still there in a driver's seat, seeing that 5 runs required, 6 runs required from 5 balls, and at the same time 5 which is enough for Team Matrix to win the match. This time lofted, and it's look like he's going to finish the match in a style. Team Matrix through to the next round. Short pitch delivery, again the fielding set, it's not good. Even the effort is also not good. It's going to be a catchable, isn't it? If you have got a presence of mind, it can be taken the catch. Look at that one in replay. It's not too far away from the boundary line. It's not too far away from the boundary line, but the fielder is not in the right position. Deep long on fielder thought that the long on fielder going to come to there. And long on fielder thought that it's long on fielder thought it a long on fielder going to come there. But it was a batsman hitting a 6. Finished the match in a style by Munna. NF Sirva lost the match. And Team Matrix have a magnificent finish for the match. The Team Matrix winning this match against NF Sirva. This is a short pitch delivery actually. Anyone can hit the ball because that much of short ball for the batter. The new batsman Munna just seeing the opportunity, hitting the ball to clearing the fence. 40 for the loss of 4 wickets. Now they got that winning runs. Now it's the time for the short break. After a short break, before the team Bail and Zaman boys will go into play each other. It's a time for a change in commentary box. At the same time, it's a time to announce the man of the match. It's a time to announce the man of the match. Once again, the bowler doing the job here for Team Matrix because they bowled well against the formidable batting department of NF Sirva. The bowler one picked up 3 valuable wickets. 1 over, no maiden, 2 runs and 3 wickets. Mustafa is the man of the match. May I request Mustafa to please come and collect a man of the match for your outstanding bowling figure of 1 over, no maiden, 2 runs and 3 wickets. This time not the Taslim because they already got 2 man of the match. And now it's a different one. And Mustafa will going to get the man of the match award. I may request Mustafa please come here and collect your man of the match award from our chief guest. So here is the good news. After a long break, Urva Friends Cultural Association UFC started their practice in this UCG cricket ground, and if anyone want to participate, it was open to all, and from evening 5:15 to till 6:30 to 7,
anyone interested to practice, they can come and have a practice in this UCGK ground. And there is an announcement from Urva Friends Cultural Association. It's good to see that because olden days, only 3 places having 360 days of practices. One is from in Urva Cricket Ground and one is from BEM High School. Hanuman cricketers having a practice every day. And now Urva Friends Cultural Association getting that opportunity. Now is a presentation of Man of the Match award. Anwar presenting this Man of the Match award for Mustafa for his outstanding performance. 1 hour, 2 runs and 3 wickets. Congratulations Anwar for your the good performance. Recognition for Mustafa, and thank you very much Anwar for presenting this Man of the Match award. I request losing team and NFC Urva captain, please come here and collect your memento of for the representation for this tournament. NFC Urva ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರಂಜಿತ್ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೂದಾನಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಕರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. धन्यवाद सतीश। तो इस वक्त मैच शुरू हो जा रहा है। टीम बेल अशोकनगर और जमन बॉयज का लड़का के बीच और मैच की पहली गेंद लेकर तैयार। ऑफ स्टंप से बाहर की ओर गेंद निकलती हुई वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। 1 रन बिना किसी नुकसान के और जमन बॉयज का लड़का का यहाँ पर हो चुका है। जहाँ तक टॉस का सवाल है तो टीम बेल अशोकनगर ने टॉस से जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। ये गेंद अच्छी गेंद थी, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद को इस वक्त खेलना चाहा लेकिन ठीक तरह से खेल नहीं पाए और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। NFC ಉರ್ವ ತಂಡದ ರಂಜಿತ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. NFC ಉರ್ವ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ರಂಜಿತ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ये गेंद इस बीच बेहतर गेंद थी, अपील लेकिन इस अपील को नकार दिया गया और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 1 रन बिना किसी नुकसान के। और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए हर्षित दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछलना चाहता, चूंकि गेंद लगभग उनके पैरों के बीच से होकर निकली सीधे विकेट कीपर के हाथों में। रन्स बल्लेबाज को नहीं मिलेगा तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 1 रन बिना किसी नुकसान के। फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए हर्षित दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, चूंकि गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में और 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 2 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर फॉर हर्षित गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए और 2 विदाउट लॉस फॉर जमन बॉयज का लड़का रशीद बाबा आक्रामक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिना तो उभरता विकेट, गेंद को उछाला बाबा ने इस वक्त लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा की ओर गेंद जाती हुई और गेंद इस वक्त लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के पार कर चुकी है 6 रनों के लिए। तो रशीद बाबा इस वक्त अपने बाजुओं को धीरे धीरे खोलते हैं और जिस तरीके की बल्लेबाजी के लिए वो जाने जाते हैं उस बल्लेबाजी को कार्यगत यहाँ पर करते हुए गेंद को खूबसूरती के साथ उछाला था इस वक्त लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर 8 विदाउट लॉस। फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को इस वक्त स्कूप करना चाहा, चूंकि और इसी के साथ ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन बन चुके हैं और आजिम और रशीद बाबा आरंभिक बल्लेबाज जो कि 8 रन जोड़ चुके हैं पहले ओवर की समाप्ति के बाद। और इस बीच 5 ओवर का खेल अभी भी बाकी और जहाँ तक का सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का तो हमसे दूर वाले छोर से यहाँ पर गेंदबाजी शुरू करते हुए ಅಲ್ಲಿ NFC ಇರುವ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಂಜಿತ್ ರವರು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು
ಸಂಘಟಕರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ NFC ಯುವ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾವು अर्पिस्ता इದ್ದೇವೆ. तो यहाँ पर 8 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद दूसरा ओवर शुरू होता हुआ और गेंदबाज इस वक्त दूसरा ओवर यहाँ पर शुरू करते हुए. फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलती हुई और अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. तिलक का ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंदबाजी करने के लिए तैयार. ये गेंद इस बार ऑन साइड पर बेहतरीन स्ट्रोक 6 रनों के लिए. आजीम के बल्ले से यह छक्का इस वक्त लग चुका है. ऑफ द टॉस गेंद को खूबसूरती के साथ स्कूप किया था विद द परफेक्ट टाइमिंग्स और गेंद इस वक्त सीमा रेखा को पार कर चुकी है छक्के के लिए. तो इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 14 रनों पर बिना किसी नुकसान के. दूसरा ओवर यहां पर प्रारंभ हो चुका है और तिलक का अपनी पहली गेंद पर छक्का यहां पर प्रदान कर चुके हैं. इस वक्त तिलक को टीम के अन्य खिलाड़ी कुछ समझाते हुए और एक बार फिर से वो अपने गेंदबाजी के मार्ग पर इस वक्त तैयार सामना करते हुए. आजीम और तिलक का गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद दूसरा ओवर पावर प्ले का इस वक्त जारी है. खासकर रशीद बाबा और आजीम का जहाँ तक सवाल है पावर प्ले का फ़ायदा उठाने में माहिर रहे और यहाँ पर गेंद को उछाल कर खेलने में सफल. ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा. गेंद पहुंची शॉर्ट स्क्वायर लेग पर 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 15 रनों पर बिना किसी नुकसान के. दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर. जस्ट सेकेंड ओवर इन प्रोग्रेस. 15 विदाउट लॉस फॉर जमन बॉयज़ का लड़का. दिस इज द सेकेंड ओवर इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स. गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. राशिद बाबा का स्ट्रोक और गेंद गॉन गॉन एंड गॉन मेनी माइल्स. 6 रनों के लिए गेंद इस वक्त सीमा रेखा को पार कर चुकी है और राशिद बाबा इस वक्त काफी आक्रामक रवैया अपनाए हुए. छक्का नंबर 2 उनके बल्ले से लगता हुआ और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 21 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 21 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस एंड दिस इज एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक प्रोग्रेसिंग फॉर देम. ये गेंद बेहतर गेंद थी. ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त उछालना चाहा था चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथ में. रन्स इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. स्कोर रुक चुका है 21 रनों पर. फिर से एक बार गेंदबाज किया. गेंद ऑन साइड पर स्विंग्स इट अवे. दिस टाइम 2 स्क्वायर. 6 नंबर 3 फॉर बाबा और बाबा इस वक्त काफी आक्रामक रवैया यहां पर अपनाए हुए. तीसरा छक्का यहां पर लग चुका है. यह गेंद तकनीकी तौर पर बेहतरीन स्ट्रोक था. गेंद को इस वक्त उछाला था इस वक्त ऑन साइड पर 2 स्क्वायर लेकिन गेंद में इतना पर्याप्त दम था कि वो सीमा रेखा को पार कर सके. 27 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका. दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर. एक बार फिर से गेंदबाज तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट. ये गेंद ड्राइव किया बाबा ने लॉन्ग ऑन पर लेकिन एकमात्र रन इस बीच बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका. 28 रनों पर 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 2 ओवर के बाद जमन बॉयज़ का लड़का एक बेहतरीन स्थिति में यहां पर नजर आता हुआ 28 रन जोड़ चुका है बिना किसी नुकसान के. 28 विदाउट लॉस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर्स फॉर जमन बॉयज़ का लड़का. चेतन गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए. रशीद बाबा सामना करने के लिए तैयार. चेतन की गेंद का और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. दाहिना तो बढ़ता विकेट. बेहतर गेंद थी. लगभग टिप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए और जहां तक सवाल है रन्स का तो रन्स इस वक्त नहीं मिलेंगे. तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 28 रनों पर बिना किसी नुकसान के. तीसरा ओवर उनका यहां पर प्रारंभ हो चुका है. ये गेंद इस बार टॉप एज. मौका नहीं. विकेट कीपर नहीं पहुंच पाएंगे लेकिन जब तक विकेट कीपर पहुंचे बल्लेबाज तेज रनिंग बिटवीन द विकेट द्वारा 1 रन यहां पर प्राप्त कर चुके हैं
और जहाँ तक चेतन की गेंदबाजी का शैली है, जो वो लगभग यंग फ्रेंच रुआ के मैजिशियन गेंदबाज अश्विन से जो कि मिलती जुलती है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर उसी शैली में वो गेंदबाजी करते हैं। रफ कटर और लेग कटर दोनों गेंदें वो फेंकते हैं। बल्लेबाज को दुविधा में डालने में सफल रहे थे। पिछले गेंद पर टॉप एज गेंद हुई थी, लेकिन विकेट कीपर के पहुंच से बाहर। अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाइना तो ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार बेटर, दैट्स द थिंग्स ही हैज टू बॉल फर्स्ट, दैट्स द बॉल। तो यहाँ पर निस्संदेह लगभग अश्विन की भांति वो इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और बल्लेबाज को दुविधा में डालने में सफल रहे हैं इस वक्त। ये गेंद इस बार बेहतर, एब्सोल्युटली परफेक्ट लेग कटर, जस्ट वांटेड टू प्ले रिवर्स शॉट, नॉट सक्सीडेड। और इस बीच रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा, तो चेतन इस वक्त अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए और ये गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर खेलना चाहा, प्लम्ब इन फ्रंट, और इसी के साथ ये विकेट यहां पर प्राप्त कर चुके हैं चेतन। हासिम की पारी समाप्त। काफी हद तक दुविधा में पड़ चुके थे पिछले चंद गेंदों में। इस बार अगेन टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई उनके बैक लेग पर टकराई, उनका बैक लेग बिल्कुल स्टंप्स के सामने रहा और अंपायर को कोई दिक्कत ही महसूस नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में। तो पहला विकेट गिर चुका है 29 रनों के साझेदारी के बाद, और एक बेहतरीन गेंद के जरिए चेतन यहां पर विकेट प्राप्त कर चुके हैं। और अब नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए तो निस्संदेह यहाँ पर चेतन का जहाँ तक सवाल है, बिल्कुल अश्विन की शैली में वो गेंदबाजी करते हैं। खासकर वेरिएशंस काफ़ी है उनमें, कभी कभी गेंद को बाहर की ओर लाते हैं तो कभी कभी अंदर की ओर लाते हैं। तो यहाँ पर निस्संदेह बाहर की ओर निकालते हैं कहना पड़ेगा, और यहाँ पर बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन वो देते हुए। और जुगुल के भूतपूर्व खिलाड़ी जो कि बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक माने जाते थे, अनिल उनके सुपुत्र हैं चेतन, और हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि आने वाले दिनों में उनका भविष्य इस अंडरआर्म क्रिकेट में उज्जवल हो। यह गेंद अच्छी गेंद थी। इस वक्त बैक टू द बॉलर की दिशा में गेंद को खेला, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति, 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 29 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स विद द रिकॉर्ड रन रेट ऑफ एग्जैक्टली 9.67 रन स्कोर्ड बाय द बैट्समैन ऑफ जमन बॉयज का लड़का। और सिर्फ 1 रन इस ओवर में यहाँ पर चेतन ने प्रदान किया। निस्संदेह बेहतरीन गेंदबाजी, और 3 ओवर का खेल बाकी, और 3 ओवर के खेल में देखते हैं उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। चौथा ओवर प्रारंभ होता हुआ और आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए माइक्रोफोन पर अब मैं सतीश को आमंत्रित करना चाहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू। Thank you very much, Gopi, and outstanding comeback from the bowler, especially through Chetan by Ashok Nagar Bail, having some good over. Just a single run he conceded, just like mentioned, the bowling action of Chetan, almost similar to the bowling action of Ashwin Taman, one of the magician of underarm cricket. And of course, Chetan really got a great future by seeing this is a bowling performance. Not this time lofted down to deep long on, 1 bounce, 4 runs, but Baba is unstoppable. He's been out of the strike in the last over, and he back into strike in the next over, very next over. His intention is very clear that Baba will going to continue his explosive batting. Again, that nothing much wrong with the line, and batsman know exactly where the fielder is. Plays it deep long on for 4 runs. There is no chance at all for the fielder. 33 for the loss of 1 wicket. Right arm over wicket. Baba went for the big swing of the bat. Ball which is not close to the, not that much of far away from the stumps. Is very close to the stump. Nitesh is the bowler. After that boundary, he bowled out. Very good incoming delivery. Right arm over wicket again. Incoming delivery. Baba is going for the quick single. Misfield dive by Dilraj down at mid-on region. Charging to the ball, but not quite able to feel the ball, fails to collect the ball, and batsman cross off for a single. 34 for the loss of 1 wicket in the over number 4 is in progress.
Right arm over the wicket. This time top edge opportunity here for the fielder, and it completed that catch. Batsman tried to play the pedal shot in irrigation. Nawaz looking for the improvisation. And they got a top edge, and the bowler Nitesh got a very valuable wicket. So 34 for the loss of 2 wickets. Good comeback as far as bowlers, as far as team for team Bile Ashok Nagar is concerned, after conceding lot of runs in the first 2 overs. That's only because of Rashid Baba going after, and even his partner is hitting 1-6, and that is Azim who picked up 1-6, and but 3 sixes, massive sixes which is came from Rashid Baba, takes his team. Still, it's a very good score for Zaman Boys Kaladka. 34 for the loss of 2 wicket in the over number 4 is in progress. The bowler has got a success. The new batsman in is Imran, and Ritesh right arm over the wicket. Loose stroke, absolutely loose, but ball is going, and ball which is carried to the fielder. Just like I mentioned, it's a loose stroke. He didn't have enough bat onto that, enough power on that. Just look at it on replay, and he's not really getting that one from the middle of the bat. It's not coming from the sweetest part of the bat, but just you can see that the ball is traveling. Still, its ball is traveling towards the deep long off, and Nitesh picked up 1 more wicket. 34 for the loss of 3 wicket. Imtiaz is the new batsman in. Imtiaz usually is a very good player, technical player, but it's not having that much of a good tournament in this tournament for Zaman Boys Kaladka. So wait and see how he will going to contribute. Nitesh is a successful bowler. 2 wickets in that over. Brought team by Ashok Nagar once again back in this game. If we are able to restrict another 2 overs, they can be the favourite of winning this match, because team Mobile has got some good batting department as well. This time went for the safe shot, asking the umpire for it wide, and umpire rightly so, saying that ball is just going down the leg stump further away. Wide signal by umpire Sri Rajan, score numbers on to 35 for the loss of 3 wicket. Nitesh again bowling from the far end. Right arm pause. This time Imtiaz went for the reverse sweep, and the bat which is involved, no problem whatsoever. Over number 4 completed. 1 more good over completed here by the bowlers of team Bile. Now it's a Nitesh after getting inspiration from Chetan, and he bowled 1 more good over after completion of 4 overs. Even they got Baba in other end, but they able to keep other batsmen in other end. Keep quiet, and they picked a wicket as well. It's a team by Ashok Nagar. It's 35 for the loss of 3 wicket. Now 2 overs remaining. Chetan to continue, and now it's going to be a very good contest, because Baba is out of the strike in the previous over of Chetan. Now he is coming to strike, and wait and see how Chetan will go into ball here. Absolutely good contest. One is inexperience and emerging talent of underarm cricket, and in front of him the experience and killer, absolutely silent killer, Rashid Baba is in front of Chetan, and Chetan will go into ball, the first ball. This time appeal for leg before wicket, but ball slightly going to miss the off stump, isn't it? Right call from umpire. Mohan Yadi, because he bowls a leg cutter, and rightly so. The direction, the moment of the delivery, that's definitely going to miss the off stump. But very lucky here, Rashid Baba just survived from that ball. Beautifully bowled by Chetan. Chetan bowls, going for the reverse sweep, extra bounce, missing the wicket keeper's hand, but umpire not missing the opportunity to signal the bag. 2 deliveries, 2 runs. 37 for the loss of 3 wicket. Chetan once again back into attack. Right arm over the wicket balls. Beautifully bowled, almost exposing the stumps. Beautiful delivery. Seeing that Rashid Baba is moving too much towards the off stump, outside the line of off stump. So Chetan quickly thinking that he can't reach the delivery if he bowls outside the leg stump. He bowled brilliantly. Good thinking by the young man.
Three very good deliveries. Chetan again. Right arm over the wicket, slower one, different one, but wicket keeper really missing it completely from the hands. By call by umpire. Frustration for the bowler. One more addition to total. 38 for the loss of 3 wickets. Unbelievable comeback here from the bowler, especially the Chetan has been looking outstanding in his bowling. Chetan, oh, beautiful delivery again. Opportunity again missed out by wicketkeeper behind the stump. Because Imtiaz is really not really understood the delivery. He thought it might be the leg cutter, but he's bowled the wrong one, off cutter. And the leaving delivery for the left-hand batter. The wicketkeeper behind the stump fails to collect the ball. The last ball of this over is coming up. Chetan bowls. This time batsman drives that one, not more than a single. They're looking for the second. Rashid Baba for a second. Oh, Chetan might be too late. Chetan might be too late, and Rashid Baba completed that couple of runs. But outstanding over is comes from Chetan. Really good over, handling the pressure very well. It's not so easy to bowl against Rashid Baba. This is what you call the grabbing the opportunity. Chetan got opportunity to bowl for the destructive batsman like Rashid Baba and bowled very well. And 40 runs on the board now after completion of 5 overs. But still they got 8 runs per over. And wait and see how many runs they will go to score in the last over. Chetan, like his father, is doing a great job. His father is a very good dominator in the 80s and 90s when he was representing for some teams. He's got a record of getting 103 figures, not in UCG cricket ground, but it is on Nanda or upon a Mangalore cricket ground. Unfortunately, not having any record, those who are scored 100. There is no live telecast those days. This time, top edge opportunity for the fielder. And Chetan once again is in a picture, is a busy customer, completes the catch. The Baba's innings comes to an end. And the team by Ashok Nagar strongly they are back. And now they got every chances of restricting the opposition less than 45. If they're able to restrict them less than 45, it's going to be anybody's game. But Baba's innings comes to an end. Baba, after hitting 3 sixes, 3 sixes and a boundary, and scored 25 valuable runs, but he couldn't manage to convert that one for the huge one. But 25, I think, is a very good contribution. Out of 40 runs, he himself scored 25. It's going to be a good contribution. The new batsman in? Habib. Nitesh, one more good bowler, responsible for that comeback overs, just like what Chetan is did, and Nitesh is doing a great job so far from his bowling. Once it was 2 overs, 28 runs. If you believe me or not, one more wicket is going back. One more wicket is going back. Now Habib is the one is sacrificing his wicket because Imtiaz desperately wanted to back in the strike. But the good bowling performance which continues here from Nitesh. 40 for the loss of 5 wickets. 28 for the loss of 28 without loss in 2 overs. Everyone thought it's going to be a high scoring game, and Zaman boys Kalarka will going to dominate and score 50, 60 plus runs. But after that, the bowlers of Ashok Nagar strongly back through Chetan, through this man, Nitesh. This is what the beauty of cricket. Around the wicket, Imtiaz. The striker going for the big one, makes it completely. One more dotted delivery, leg by call by umpire. One more extra 41. Outstanding bowling performance continues here from Nitesh. 2 very youngsters of their side doing the damages. Now, number 7 batsman Anis is on strike.
Nitesh taking his own time to deliver the ball. Needed to be. They need to see the field set and need to bowl as for this field. Again going for the big swing of the bat. Wide call by umpire. This is the big mistake here, and coming back for the second and gone. One more wicket is back into pavilion in the form of run out. And Zaman boys Kalladka may be thinking about the fall of wickets will go into make any impact in the match, but I want to say the fall of wickets will going to make an impact. If the match will going to ended in a tie, then the fall of wickets will going to play a big role here. You can't throw the wickets. 43 for the loss of 6 wickets. The new batsman in. So walking towards the middle for Zaman boys Kalladka. Azhar is in non-strike Azan, but here is a striker. Anis will go to take the strike. Nitesh bows again. Appeal for leg before wicket. Umpire says that is a ball. They are going for the second run. Anis wants the strike. Now the batter leaving the crease. Leg by call by umpire. Just a single run. With the single score moves on to 44. Now last delivery remaining. So one more wicket is back into pavilion. It's a 44 for the loss of 7 wicket. Once is a 28 without loss of any wicket in a 2 overs. And after that one is 16 runs scored. And they lost 7 wickets. This is what you call the cricket. You can't underestimate cricket. Even you got a very good start, you need to convert that start into huge one. But the team by Ashok Nagar, their thought is very different. After conceding a huge runs in the 2 overs of the power play, they came back very strongly. Again going for the big swing of the bat. Wicketkeeper behind the stump collects the ball. That's it. Dotted delivery. Over number 6 completed. 44 for the loss of 7 wicket. 45 going to be a target for NFC Urva. Because for team by Ashok Nagar need to get 45 runs in their stipulated in their 6 overs. It's going to be a very, very interesting match. But outstanding effort here from a team by Ashok Nagar. Just look at the effort of the bowlers. It's the only one. There's a leading from the Fantasy. A Chetan, outstanding. 2 overs, 10 runs, and he picked up 1 wicket. And even Nitesh is looking so good. 10 dots, a little bit correction. He conceded only 3 runs, 2 overs, no maiden, 3 runs and 1 wicket. Outstanding bowling figure for a very young, talented bowler. 3 runs in the 2 overs against the formidable batting department of Zaman boys Kalladka, and even Nitesh is bowled well. And 2 overs, no maiden, 8 runs and picked up 3 valuable wickets. Now 45 runs required from 36 balls. It's going to be anybody's game, and final time today. I would like to invite Mr. Gopi to take over the microphone in Hindi. Thank you. Thank you very much. Before the match will go into start, it's over to Gopi, and lot of best wishes coming from all part of
even in India and outside the India. And of course, Safwan Shah, Bahrain, is sending some best wishes for this fantastic cricket tournament. And Yuvaratna Trophy 2023 is a man who got a record of skydiving from 13,000 feet height, made a skydiving, and he won the heart of Indians and got some appreciation and felicitation for his outstanding stunt, whatever what is did. So thank you very much, Safwan Shah, for your best wishes. All the best for your future. It's over to Gopi. Thank you. धन्यवाद। और यहाँ पर उनकी पारी की शुरुआत होती हुई ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहता, पहली गेंद इस वक्त रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा, नॉन स्ट्राइक रेट पर थ्रो इस वक्त चूक चुका है और पहली गेंद पर बल्लेबाज यहाँ पर बाल बच चुके हैं। तो जोखिम भरा रन यशस्वीतम यहाँ पर पूर्ण करते हुए दोनों बल्लेबाज और इस एक रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। इट्स 1 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। तो इस वक्त 45 रन बनाने निर्धारित 6 ओवर में 45 they have to score for victory in the stipulated 6 overs with the required run rate of exactly 7.50 runs per over. Team by अशोक नगर have to score against Zaman Boys कल्लर का। और जहां तक सवाल है अगली गेंद का, ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला, इस वक्त एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के सीढ़ियों पर गेंद टकरा चुकी है 4 रनों के लिए। विड्थ थी और इस विड्थ को कबूल करते हुए एक्स्ट्रा कवर पर इस वक्त गेंद को खेल दिया, स्क्वायर ऑफ द विकेट, खूबसूरती के साथ गेंद एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के, 5 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। तो एक बेहतर शुरुआत की इस वक्त ज़रूरत टीम बैल अशोक नगर को, अगर उन्हें एक अपने मंजिल तक पहुंचना है तो उछाल कर खेलना चाहा, नॉट क्वाइट मिडलिंग एट द लास्ट मोमेंट। 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 6 रन बिना किसी नुकसान के। शाम के 5:45 यहाँ पर बच चुके हैं और सूरज मैदान की दाईं ओर अपना अस्तित्व का प्रदर्शन करता हुआ समंदर की ओर अपना सफर तय कर चुका है और इस ढलते हुए वक्त के साथ साथ रोशनी मैदान पर कम होती हुई है गेंद, इस बार गेंद को खेल दिया, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट और गेंद जब तक फील्ड हो लॉन्ग ऑन पर 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के, 7 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। एंड अनीस इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ड्राइव किया मिड ऑन की दिशा में, निशाना, लेकिन रन के लिए दौड़ पड़े, स्ट्राइक करंट पर खतरा, थ्रो पहुंचा, लेकिन इससे पहले के थ्रो पहुंचे बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके थे और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 8 रनों पर बिना किसी नुकसान के, जबकि उनकी पारी का पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर। एक बेहतर शुरुआत टीम बैल अशोक नगर यहाँ पर कर चुका है और इस बीच अनीस गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए, हर्षित बाएं हाथ के बल्लेबाज, पावर प्ले इस वक्त जारी और ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त अनीस गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा, गेंद पहुंची शॉट स्क्वायर लेग पर, निशाना चूका इस वक्त और बल्लेबाज बाल एक बार फिर से बच चुके हैं। तो भाग्य बार यहां पर साथ देता हुआ बल्लेबाज का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 9 रनों पर बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहां पर पूर्ण हो चुका है। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड, 9 रन्स ऑन द बोर्ड, 45 द टारगेट, 36 more runs now they have to score for victory in remaining 5 overs. Required run rate for them at this situation is exactly 7.20 runs per over. तो काफ़ी लंबी बातचीत इस वक्त चलती हुई जमन बॉयज कल्लड़का के खिलाड़ियों के बीच में कि अगला ओवर किसको दिया जाए। एक बेहतर शुरुआत इस वक्त दिनराज और हर्षित इस वक्त कर चुके हैं, पहले ओवर में 9 रन जोड़ चुके हैं और यहाँ पर काफ़ी बातचीत के बाद गेंदबाजी का जिम्मा इस वक्त सौंपा जा रहा है गेंदबाज जो कि नया ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए। कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से दूसरा ओवर शुरू होता हुआ इस वक्त टीम बैल अशोक नगर की पारी में और रऊफ
इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज हर्षित इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। धूप का प्रकोप मैदान पर काफ़ी हद तक कम हो चुका है, लेकिन धूप का अस्तित्व ज़रूर मौजूद है। और जहाँ तक का सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो गेंदबाज इस वक्त रऊफ इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 30 गेंदें बाकी है, 36 रन और चाहिए विजय के लिए। 36 मोर रन्स नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 30 डिलीवरीज। और रऊफ फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। यह गेंद बॉल्ड आउट, गेंद को उछालना चाहता चूके और गेंद उनके बल्ले को वंचित करते हुए मिडल ऑफ स्टंप को इस वक्त उखाड़ कर ले गई और इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है। आक्रामक स्ट्रोक इस वक्त खेलना चाहता बल्लेबाज हर्षित ने, लेकिन गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए, बीट हो गए और ऑफ और मिडल स्टंप इस वक्त उखड़ता हुआ और इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है 9 रनों के ऊपर, जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का प्रारंभ हो चुका है। जमन बॉयज का लड़का का जहां तक सवाल है, अगर उन्हें 44 रनों के लक्ष्य के अंदर 44 रनों के स्कोर के अंदर अगर टीम बेल अशोकनगर के बल्लेबाजों को रोक कर रखना है तो निस्संदेह एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर देना होगा। और जहाँ तक सवाल है नए बल्लेबाज का, तो बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद, स्ट्राइकर एंड पर सामना करने के लिए तैयार। रऊफ की गेंदों का रऊफ गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। अपनी ओवर की अगली गेंद, यह गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद तक पहुंचे। गेंद को इस वक्त खेल दिया शॉर्ट कवर की दिशा में और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 10 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर। सेकेंड ओवर स्टार्टेड जस्ट शॉट 1 गो 10 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट फॉर टीम बेल अशोकनगर। दूसरा पावर प्ले ओवर यहाँ पर शुरू हो चुका है। रऊफ गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए और अपनी ओर की अगली गेंद फेंकने के लिए इस वक्त तैयार। तो इस वक्त शायद अपना बल्ला बैट बदलने के लिए इस वक्त बल्लेबाज प्लेयर्स डकआउट की ओर इस वक्त बढ़ते हुए खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। कुल मिलाकर 45 रन उन्हें बनाने थे जब उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत की थी, अब 35 रन और बनाने हैं, जबकि उनकी पारी का 28 गेंदें और फेंके जाने बाकी। तो गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार चिप किया स्ट्राइक डाउन द ग्राउंड और गेंद इस वक्त लंग ऑफ सीमा रेखा को पार कर चुकी है 6 रनों के लिए। दिनराज के बल्ले से ये छक्का लग चुका है। देखिए किस तरीके से यहां पर स्ट्रोक लगाया था। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, एब्सोल्युटली एफर्टलेस प्लेड दैट वन after being got that one right from the middle of the bat and lofted that one onto the long offense for a huge one। और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 16 रनों पर और 29 रन अब और चाहिए विजय के लिए। बचे वे 27 गेंदों पर। 29 more runs now they have to score for victory in remaining 27 deliveries। और रऊफ इस बीच गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, गेंद हवे में, क्लीन कलेक्शन इस वक्त आफ्टर फर्स्ट बाउंस, पहले टिप्पे के बाद गेंद को कलेक्ट किया और इस बीच रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा थर्ड मैन की दिशा में पॉइंट पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 17 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 17 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। तो बराबर का संघर्ष यहाँ पर जारी टीम बेल अशोकनगर और जमन बॉयज का लड़का के बीच। और रऊफ अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा, बैक टू द बॉलर के दिशा में निशाना टकरा चुका है और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। जोखिम भरा रन चुराने का प्रयास किया था, सीधा निशाना दागा, गेंदबाज ने फॉलो थ्रू में गेंद को उठाकर और उनका निशाना बिल्कुल सही बैठता हुआ और इसी के साथ
प्रसन्ना की पारी समाप्त हो चुकी है, दूसरा विकेट यहाँ पर खो चुका है, दूसरा ओवर उनके पारी का यहाँ पर प्रगति पर। ओवर की समाप्ति, 2 overs completed, 17 runs on the board। पहले ओवर में 8 रन बने, जबकि 9 रन बने, जबकि दूसरे ओवर में 8 रन बने। 2 ओवर के बाद 17 रन बन चुके 2 विकेट के नुकसान पर। 45 रनों का लक्ष्य, 28 और रन चाहिए विजय के लिए, और कुल मिलाकर 4 ओवर का खेल बाकी। 28 रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 4 overs, दैट मींस इन 24 डिलीवरीज। स्टिल दे गॉट 8 विकेट्स केप्ट इंटैक्ट। तो गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए साई शक्ति एंड की ओर से, हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाज, और नए बल्लेबाज का यहाँ पर आगमन होता हुआ। तो जहाँ तक मैच का सवाल है, मैच अभी भी बराबरी पर रुक चुका है, और निश्चित रूप से यहाँ पर इस वक्त ये कहना मुश्किल है कि विजय किसके पक्ष में जाएगा। और 24 नंबर जर्सी पहने हुए नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद प्रवीण, और फील्डिंग का मुआयना करने के बाद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, जबकि लॉन्ग ऑफ थोड़ा सा स्क्वायर इस वक्त ना डीप कवर पॉइंट पर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर प्रवीण इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए तैनात ओवर द विकेट। ये गेंद स्वीप किया इस वक्त सीधे गली फील्डर के हाथों में, प्लेसमेंट बिल्कुल गलत था और भुगतान उन्हें यहां पर करना पड़ा। और स्ट्रोक बेहतर था लेकिन प्लेसमेंट सही नहीं, और आसान सा कैच इस वक्त गली फील्डर के हाथों में पहुंचता हुआ, और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है। प्रवीण की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है पहली गेंद पर गोल्डन डक के रूप में, और तीसरा विकेट यहां पर खो चुका है टीम बेल अशोकनगर 17 रनों के ऊपर। यहां पर एक छोड़ पर दिनराज मौजूद है। तो जहां तक सवाल है नए बल्लेबाज का, तो स्ट्राइक रोटेट करना इस वक्त जरूरी बन चुका है। जितना ज्यादा स्ट्राइक दिनराज को मिलेगा उतना उनके टीम के लिए बेहतर होगा। लेकिन यहां पर स्ट्रोक खेलने के प्रयास में विकेटों के ऊपर विकेट देते हुए बल्लेबाज, और हर विकेट के पतन के साथ दबाव यहां पर बढ़ता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर। नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर होता हुआ 28 रन चाहिए, गेंदें बाकी हैं 23। 28 रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 23 डिलीवरीज। फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। लेफ्टी बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल। चेतन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट चलती हुई, लॉन्ग ऑफ एक्स्ट्रा कवर इस वक्त ना डीप बैकवर्ड थर्ड मैन, लॉन्ग ऑन ना डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग इस वक्त मौजूद बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए गेंदबाज। तो गेंदबाज चेतन इस वक्त गेंदबाजी, माफ कीजिए बल्लेबाज चेतन नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर मौजूद। ये गेंद हल्के से गेंद को पुश किया, बेहतर, दैट्स सेंसिबल, लेकिन यहां पर निशाना चूक चुका है। और इसी तरीके का क्रिकेट इस वक्त अपनाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक अगर वो दिनराज को देते हैं तो उनके टीम के लिए बेहतर होगा, क्योंकि दिनराज की नज़रें इस वक्त गेंद पर जम चुकी हैं, और निश्चित रूप से वो इस वक्त करारे स्ट्रोक लगाने की क्षमता रखते हैं। एक चौका और एक छक्का अब तक वो झड़ चुके हैं, और इस बीच अपनी अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। और अनीस एक बार फिर से फील्डिंग में जमावट करते हुए एक्स्ट्रा कवर फील्डर को थोड़ा सा स्क्वायर इस वक्त तैनात किया गया है। दिनराज इस वक्त सामना करते हुए अनीश की गेंदों का। ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई डिफ्लेक्ट किया, इस वक्त गेंद पहुंची, और इस बार गेंद पहुंच चुकी है विकेट कीपर, विकेट को चटका चुके हैं, और अंपायर तीसरे अंपायर के लिए इशारा इस वक्त कर चुके हैं। तो देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जब विकेट चटकाए गए थे, जब बल्लेबाज अपना बल्ला बैट क्रीज पर रख चुके थे या नहीं। So not out is the call from third umpire, और everything seems to be perfect for the batsman. लेग बाय का इशारा, और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस
एक रन के साथ कुल मिलाकर 19 रनों के ओवर पर. It's 19 for the loss of 3 wicket in the over number 3 in progress. Still the equal battle is now continuing here. 26 more runs now they have to score for victory in remaining 21 deliveries. और गेंदबाज अनीस इस वक्त राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज चेतन के लिए इस वक्त तैयार. रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ गेंद को इस वक्त रिवर्स शॉट खेला, लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद रशीद बाबा जिन्होंने गेंद को फील्ड किया, लेकिन एक रन बल्लेबाज को लेने से नहीं रोक पाए और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 20 रनों पर. It's 20 for the loss of 3 wicket in the over number 3 in progress. Still 25 more runs now they have to score for victory in remaining 20 deliveries. और एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त तैयार. ये गेंद इस बार टॉप एज मौका फील्डर के हाथों में और यहाँ पर जरूरतमंद विकेट प्राप्त कर चुके हैं जमन बॉयज कल्लड़का के खिलाड़ी. तो दिनराज ने गेंद को उछाला था लेकिन नॉट क्वाइट पिटली गेंद. देखिए किस तरीके से गेंद को खेला था, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद गई ऑफ साइड पर और मिड ऑफ बीसीएस के दायरे के अंदर इस कैच को लपका. दिनराज का विकेट गिरना निस्संदेह यहाँ पर टीम बेल अशोकनगर के लिए ड्रॉबैक साबित हो सकता है, क्योंकि दिनराज एक वेल सेट बल्लेबाज थे, एक बेहतर पारी अपने टीम के लिए खेल रहे थे और यहाँ पर उनका विकेट गिर जाना कुछ हद तक, कुछ नहीं काफी हद तक परेशानियों में ढकेल सकता है इस वक्त टीम बेल अशोकनगर के बल्लेबाजों को. तो स्कोर है इस वक्त 20 रन 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि इस ओवर में गेंदें बाकी हैं सिर्फ एक. तो इस ओवर में अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. अनीस गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे नए बल्लेबाज भरत जिनका आगमन हो चुका है. नंबर 6 बल्लेबाज की हैसियत से सामना करने के लिए तैयार अनीस की गेंदों का. अनीस इस ओवर में अंतिम बार फॉर द लास्ट टाइम इन दिस ओवर दाहिने हाथों पर विकेट. ये गेंद बेहतर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन एंड फैंटास्टिक डिलीवरी टू एंड द ओवर. 3 ओवर की समाप्ति. स्टिल द प्रॉब्लम्स आर कंटिन्यूइंग हियर फॉर टीम बेल अशोकनगर आफ्टर बीइंग अ गुड स्टार्ट. 20 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट, 25 टू गेट इन रिमेनिंग 3 ओवर्स एंड स्टिल दे गॉट 6 विकेट्स केप्ट इंटैक्ट. और देखते हैं बचे हुए 3 ओवर में उनकी पारी में क्या होता है. और इससे पहले कि चौथा ओवर प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आज अंतिम बार फॉर द लास्ट टाइम इन द डे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश को आगे का खुदे काल सुनाने के लिए. धन्यवाद. थैंक यू. So 20 for the loss of 4 wicket, 3 overs completed, 25 runs required for the victory, 18 balls, 25. And Dilraj wicket definitely going to make a big impact in this match. After he's settled down in the middle, looks like he will going to handle the pressure of taking the match into the target of 45. But after scoring a 13 runs with the help of 1 6 and a boundary is back into pavilion. Bowler brought into attack. Azhar right arm over the wicket to Chetan. Chetan this time wanted to play against the line. Ball is outside. The line is outside the line of off stump. Batsman wanted to get that one on the onside region, missing it completely. Then wicketkeeper behind the stump has got touch in the stumps, not from the ball. So that umpire rightly said it's not out. 20 for the loss of 4 wicket. Each and every dot ball will go in to create the problem for team by Ashoknagar to win this match. 25 required from 17 deliveries. Azhar bowling right arm round over the wicket to Chetan. Chetan drives, nice looking drive towards a deep long off region for a single
Chetan is not only the very good bowler, but he can contribute from the bat as well, just like his father. Anil and during 80s and 90s has been outstanding, and from the bat every bowler's really afraid to bowl to that man, because the kind of hittings has been outstanding, and still it's going to be the memorable days is coming right in front of our eyes. The batting performance of Anil, unfortunately, is not with us, but only the memories of his great batting that remains in the memories of cricket lovers. Outside the flag stump, going to be a wide, one more extra, 22 for the loss of 4 wicket in the over number 4 in progress. These all runs are bonus for team by Ashok Nagar. Azhar bowling with a short run up. Right arm over the wicket to Bharat. Bharat drives that one, bowler's back drive towards a deep long off region for a single. With that single, Skobar moves on to 23 for the loss of 4 wicket in the over number 4 in progress. Of course, maybe there was a little bit difference between the run and ball, but one strokes will going to get the distance little bit down, and that's what's so important for these two batters to carry on the business. Need to rotate the strike each and every ball. Again looking for the big drive, Chetan missing it, complete chance of run out. The bowler tried to shy at the stump, a fumble from the fielder. Chetan coming back for the run, and opportunity of run out. Looks like the batsman is safe, but still umpire asking for the third umpire. So second time Chetan is going for the third umpire to get the run out decision here. The same the position looks like that has got same run out chances in the previous in the fourth over in fact, and here also batsman is safe, not out, which is called from umpire, third umpire Roland Pinto, and 2 valuable runs taken by these batters. 25 for the loss of 4 wicket, another 20 runs required for the victory. Deliveries remaining, and 20 runs required for the victory. Just a 6 runs difference between run and ball, and Chetan knows that, and it need to reduce the difference between run and ball, and for that needed one proper cricketing stroke. Lovely improvisation, but fielder there in the right position. Just a single, but look at the way that he is paddling the ball. Nice technical sweep shot. But unfortunately, he wanted to get that one very fine, isn't it? He wanted to get that one very fine, but because of that, the line is not that much of easy enough to get that one very fine. So he played it down to square leg region for a single. 26 for the loss of 4 wicket. 19 to get. 13 to go. Bharat is on strike. This is going to be a very important delivery for both the teams. Chetan Bharat will going to take the strike. Drives that one, attempt to wide reach long on region, fielder there in the deep long on. Can they come back for the second? No, doesn't. And he won the little bit fumble from the bowler to collect the throw from the deep. But still, it's a single. It's a good over. A very good over there from Azhar after completion of over number 4, chasing 45 to reach to the next round, semi-final. It's a 27 for the loss of 4 wicket. Now 12 balls, 18 runs required for the victory. 9 runs per over is the required run rate. Just coming to the fall of wickets, and fall of wickets. Just we can see that Zaman Boys Kalladka have lost 7 wickets, and at the same time Ashok Nagar Team Bile have lost 4 wickets. That means even 17 without losing a wicket, they can win the match in 12 balls. It's not necessary to get the 18 runs in 12 balls, even without losing a wicket, because the fall of wickets is comparison between these two teams. 7 wickets, Zaman Boys, and just 4 wickets of Team by Ashok Nagar. But still, there is a 2 overs remaining. Who knows the fall of wickets? The team by
definitely doesn't want to lose the wicket. At the same time, they doesn't want to lose the match. But Zaman Boys Kaladka desperately wanted to win this match. Bowler Rauf brought in the attack from the far end. Going for the off drive. Imtiaz celebrating. Why not? Batsman walking. Batsman walking. Bharat without watching the decision of umpire. You know exactly nicked it. Just seeing the excitement behind the stump. Just look at Imtiaz celebrating. And the batsman just bending down and just expressing his disappointment that he got a nick in the occasion. Not only the wickets fallen, but they lost one valuable wickets. Valuable deliveries, in fact. The valuable deliveries. 18 required from 11 balls. Now target looking tougher and stiffer here for Ashok Nagar team. While unless one big shot definitely will going to change the complexion of this match. The new batsman in is a left-hand batsman with the jersey number 30. Mithun. The left-hand batsman always known as they are not very powerful compared to the right-hand batters. And wait and see how the left-hand batsman will going to get one big shot here. 18 required from 11 balls. Azhar again from the far end. Correction off. Right arm balls. Going for the sweep shot. Missing it completely. Imtiaz direct it. But I think the batsman certainly will going to be happy to see that he's a safe. But umpires are just asking for the third umpire to get the decision. Because it's a direct hit. Whenever the direct hit, umpire always asking for the third umpire because it knows that it's always going to be very close. Even though it's a naked eye, looks like the batsman going to be safe. But very difficult to say because sometimes the bails which is not really uproots from the stumps quickly. And even sometimes the batsman might be short of the crease, but need to see. Chetan, this is the third time Chetan getting that run out decision. Will it going to be safe in the third time? 2 times he is safe when umpire referring for the third umpire. The Chetan just looking towards the commentary box, saying that his face saying that is a safe, but umpire have to see whether the batsman is a safe or not. Umpire Roland Pinto. Taking that much time means it's going to be very close. So no doubt which is a call from umpire. Again the third time Chetan survives. Will it going to be lucky for team bail? Can Chetan will going to capitalize this luck? And wait and see. But Zaman Boys Kaladka still they are a favorite in this position of winning this match. And wait and see. The big cricket is everybody knows is an unpredictable game. And wait and see how unpredictable will going to happen in this match. 17 to get from 10 balls. Even 16 is enough. Just seeing the fall of wickets, number of wickets. This time reverse talk, but protection. Just like I mentioned about the field set is made for Chetan because he's a very good reverse sweeper of the ball. So that is kept one fielder in the deep. Now 16 required from 9 balls. Tomorrow the final day of this cricket tournament. We start with the first match. Tanir Bobby Friends versus Challenge Bowler. KFC Kodikal versus Neha Malamar. The second match. Gori, little correction, KCCR Kadri versus NM Manglore. And Torpedoes Kana versus Young Friends Sirwa. And that was absolutely the mighty competition for the place in the finals.
Yeah. Tomorrow. Ball him, clean him up. We're looking for the blind stroke, missing the line completely. High miss, you miss a hit what the bowler did here, and got a fantastic delivery to pick the wicket off the left-hand batter. The back into pavilion. Mithun without scoring a runs, without disturbing a scoreboard is back into pavilion. 29 for the loss of 6 wicket. Now target is looking tougher in this condition for team by Ashok Nagar. They got only hope of winning this match until they got Dilraj in the middle after hitting a boundary and 6 as he can get 1 or 2 big shots and opportunity for Team Bile to back into this game. But now is a 16 to get from 88 deliveries after being lost 6 wickets. Now the fall of wickets is very close to the opposition team. They lost 7, Team Bile lost 6, and that means run required is a 16 of 8 balls. Rauf so far he's got an outstanding tournament from the ball, bowling in a difficult condition every time. Right arm over the wicket balls. It's going to be a wide, going for the extra run. Chetan knows that this is a bonus run. He need to capitalize. Will it going to be a chance here for Team Bile? Can he be going to open the gate here for Team Bile? Why not? 14 to get, 8 balls remaining. 14 to get, 8 balls remaining. Without losing a wicket, they can if they're able to make 13 runs, they can win the match. The 14 to get, 8 balls remaining. Chetan back on strike. So far he's been there for a long time, having some luck. Rauf changing his angle because left-hand batsman is on strike round the wicket. Again, it's going to be a 1 more wide. It's going to be a 1 more wide. The bonus run continues here for Team Bile Ashok Nagar. Slowly, that the match is turning out. 13 required from 8 balls. What a last match is going on here of this prestigious Yuvaratna Trophy 2023 Season 2. Rauf bowling from the far end, round the wicket to Chetan. Chetan going for the drive, wicket keeper behind the side misses it and misses that one completely. It's got definitely it's got a bat onto that. Going for the square cut. Chetan got a little bit outside edge of the bat. There's a 12 required from 7 balls. Chetan is in non-striker zen. The new batsman Tilak is in striker zen. Number 8 batsman. What number 8 batsman will going to do here? Can he able to get a run here for his team? Rauf wanted to get 1 or 2 good deliveries in this over. Last delivery of this over, in fact. Right arm over the wicket. Bounce. Batsman drives that one down to deep long on region. Nice looking drive. He will going to keep the strike for the next over. The last two over remaining. 11 runs required for the victory for Team Bile Ashok Nagar. 10 for tie without losing a wicket, and I think it's enough for them to win the match. And you can see in the screen that is schedules of tomorrow's match. The final day of cricket tournament. We starts with the Young Challenge Bowler versus the Nirboy Friends. Then the second match KFC Kodigal versus Neha Malamar, and followed by KCCR Kadri versus NM Manglore. Then Torpedoes Khana versus Young Friends Urva. And Torpedoes Khana and the first season they won the YFC Trophy Bajal the last week. They opened their account in the season. But it's all, you can see that even Gori Young Boys also, they won the big title in Mudabidri. And they also wanted to win this big title. Being the runner-up of the previous edition, Gori Young Boys, definitely they coming to this tournament as a favorite. But NM Cricketers Mangalore is a one more team being the favorite of the predictors, cricket predictors. But we cannot underestimate Torpedoes Khana as well. But even Young Friends Urva, they're playing in their home condition. After that successful journey in the UFC trophy, that will go into definitely a lot of confidence for Young Friends Urva as well.
And the news just came here is that their former captain Azmal is arrived, and definitely we can see him in the playing 11s of young friends Urua. So 11 required from last over. And batsman is on strike, is Tilak. Going for the drive, cut shot, but single. Chetan back on strike. There is a golden opportunity for Chetan to become the hero. Can Chetan will going to become the hero here and 10 to get from 5 balls. Everything is possible. Anything is possible in cricket. This is going to be decided delivery because 5 balls, 9 runs. If the team by able to score, they can win the match. But they need not to lose the wickets because their opposition lost 7 wickets. Team Bile have lost 6 wickets. Now 10 to get from 5. Every ball required couple of runs. Every dot ball will going to create the problem. The wickets definitely going to be more trouble. Majid bowling right arm round the wicket. The leg spinner bowls the wide. Bonus run. Extra delivery. 9 to get from 5. Now pressure straight away into the bowler. Yesterday Majid did a great job as far as the leg spin bowling is concerned, picking up some wickets, bowled some good overs for his team. Now Chetan is on strike. The went for the reverse sweep and they're looking for the run out, but the wicket is uprooted. They're going for the extra run. Chance of run out in the strikers, and this time I think Chetan will not going to survive. After that, 3 times he survived from the run out. Chetan diving attempt. It's not quite enough to save his wicket from the run out. Now just a single. Batsman is out. 8 runs required from 4 balls. Now they also lost 7 wickets. Opposition also lost 7 wickets. And that means if they're able to get 7 runs in 4 balls, the match will go into tie. Even the fall of wickets also going to be a tie. Then toss will go to decide the winner. But first priority of Team Bile is that they desperately wanted to get that 8 runs. They doesn't want to go for the tie. At the same time, Zaman Boys ka ladka, after picking a wicket of Chetan, they know exactly they got a big fish in the net. Majid, the experienced campaigner. Bowling with a short run up. Right arm over the leg spinner. The batsman is on strike. Is the new batsman. Nitish, one who bowled brilliantly, picked up 3 valuable wickets for his team. He came into bat. Maybe the day belongs to this man after picking up 3 wickets. Can he able to contribute from the bat? But Majid, a little bit confident after got the wicket. Driven that one down to deep long off. They're running hard. Looking for the second. In comes a throw from the deep. And batsman looks like he's a short of a crease. He's gone. 1 more wicket is back into pavilion. The back-to-back wickets in the form of run out. Okay. So 7 runs required from 3 balls and 1 big shot which is badly required for the team Bile to win this match. The batsman is on strike. Naveen went for the reverse sweep. Ball missing the bat, hitting the leg.
It's going to be a one more single. Leg by call by umpire. And the ball missing everything. Imtiaz fails to collect the ball. Now, 6 required from 2 balls. 5 will going to win the match for Zaman boys. 5 which is not enough. 5 which is not enough for Team Bile to win this match. They desperately required 6 runs in 2 balls. If Team Boys will going to tie this match, if the bowler concedes the 5 runs, still Zaman Boys will going to be the winner. Now this is a decider delivery. This is a decider delivery. Tilak has got a golden opportunity to become the hero. But Majid have to ball 2 good deliveries for his team to finish the match. Drivan down to deep long on. They're running hard. They definitely coming back for the second. Oh, 3 run-outs. Might be the best bowler. The umpire asking for the third umpire, but it's going to be a consecutive 3 run-outs in the striker's end. And looks like batsman struggling, is jumping and diving to save his wicket. But by just seeing the body language, looks like the batsman might be struggling to reach his home. But you need to wait for the umpire decision. If it is a 2 runs and then last ball boundary required. If it is a batsman is out, then 5 required from 1 ball. Boundary will not going to help Team Bile. They needed 6 in the last ball. But we need to see that whether the batsman is safe or not. Whether the batsman safe or not. Excluding wides and no balls, which is the last ball, which is last ball remaining. The batsman is so confident. Look at that. He's changed his bat. This is what you call the confidence. This is what you call the confidence. Without waiting for the third umpire decision, he's changing his bat. He got confidence that I can do the job. Just I want to change the bat. I want to change the bat, but here is umpire have to be confidence. It's not important how confident batsman, but here is how umpire we're going to be confident enough to go to say it's not out. It's always going to be sometimes it's difficult when it's a touch and go, because batsman is driving, and the batsman is driving to save his wicket. Because this is a very crucial decision, isn't it? If it is a out, then 5 required. If it is a not out, it's 6 required. If it is a not out, it's 5 required. So if it is a not out, 4 runs required. If it is out, 5 runs required. It's going to be a very difficult one. Now umpire have to see. Still decision is which is pending. The decision is pending. And sometimes the angle is very difficult to see when the batsmen are diving effort, and when the bails are off. Whether the bat of the batsman is in the air or it is reached the home. That's what the big question raising here. Umpire Rowan Pinto getting some angles to get the result of this run out. So out is a call from umpire. The bat is in the air while he's diving, and absolutely last the good decision coming from third umpire. Now just a single run. That means the last ball
5 required. The 4 will not going to help. The boundary will not going to help Team Bile to win this match because the fall of wickets. And this last wicket is in the middle. And unfortunately, the last batsman is need to bat for the last ball. 5 for the victory, 4 for the tie. But the tie will going to win the match for Zaman Boys Kaladka. That means last ball desperately required 6 runs, excluding wides and no balls. I don't think Majid, the leg spinner, will going to do the mistake. Of course, he bowled one wide delivery in this over. You can't underestimate that. And now Majid will go into the final delivery. 5 required. Last ball. Decided delivery. Here is the last ball. Went for the big shot. Misses completely. And Majid celebrating that one in his own style. And Zaman Boys Kaladka won the match by 4 runs, defeating Team Bile Ashok Nagar. Fantastic performance continues here from Zaman Boys Kaladka. And they're through to the semi-final of this prestigious Yuvaratna Trophy 2023, defeating Team Bile Ashok Nagar. A very good competition given there by Team Bile Ashok Nagar.